time it is. Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. We game cool, make them look like cool. Always play it cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on doing. I've been making loot since like 22. Ask me how I made it right here in the booth. I'm always pursued cause of what I pursue. That's greatness, yeah, I gotta make it, I got things to lose. Boy, you wanna get in my crew, but you can't get in my crew. Me, XL, and Huber way too fireable. When this joint drop, better call the troops. And when you hear the drop, better raise the roof. Better raise the roof. You already know what happens when we link up. Let's go. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. Assalamualaikum. Hey, what's up guys? Welcome back to another amazing watch party of PUBG Mobile PMPL North America. तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे। सुबह की स्ट्रीम में कौन कौन लोग थे यार आज? थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से स्ट्रीम जो है वो बंद थी नहीं, गेम चल ही नहीं थी रही यार। पता नहीं सिस्टम बाद में री किया, उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन उसी दौरान में थोड़ा सा काम आगे पीछे जो है वो हो रहा था। सो आज की जो स्ट्रीम है गाइस, फाइनल डे है हमारा फाइनल डे है PMPL का। और आज के जो है वो कितने 6 मैचेस होंगे और हर मैच के बाद हम इंशाल्लाह एक जो है वो आरपी गिव अवे करेंगे। बट यार मुझे इंस्टा स्टोरी वगैरह लगाने देना, रुक जाओ जरा। ओह भाई साहब, कैसे हो यार सब लोग? Seeing if they can keep that momentum into the final day. So this Miramar game is going to be huge. Playing path straight down middle jukes. Pretty fair for everyone. But we've seen the Miramar circles. Those are a different story. Yeah, you know, these Miramar circles have been pretty brutal. And, you know, Oh, that's a new one. That's a new one. A nice circle all the way to the top. That's going to make things interesting. And, you know, I heard Jason. He said that he expected Alpha 7 to win this tournament. With how they've been playing, it's been pretty insane. So with this zone, though, they got to be pretty pumped up because this one... वालेकुम अस्सलाम। बाबर आफ्ताब कैसे हो? शहरियार कैसे हो? निंजा गेमर ओपी असद वालेकुम अस्सलाम। साजिद वालेकुम अस्सलाम। सल्लू ओपी कैसे हो जानी? वेलकम टू द स्ट्रीम। बाबर आफ्ताब कैसे हो जानी? But the main thing I want to point out, though, Jukes, is Alpha 7 dead center of the circle that popped up, and they are in second place position. Now, Alpha 7, they always play from the edge in. We rarely see them, you know, flourish when they're just dead in the middle. So I think this will be one of the few times we see how they decide. Why I can't see myself? Oh, there we go. Finally. Hey, कह रहा हूँ मुझे अपनी जो है ना वो स्ट्रीम क्यों नहीं नजर आ रही उस्ताद? When it comes to Alpha 7, I think they have to keep playing the game that they've been playing, to be honest with you. That's what's got them here so far. I think aggression is where Alpha 7 really thrives. You know, hunting down squads, taking those fights, those third parties. And I think if they continue to do so, I think we'll see them possibly end up on top. You know, for a lot of the other squads, though, you know, and we talked about Inko, right? Inko had the craziest day in a tournament so far. I think them with Influence Kemen, right? Influence Kemen had the ridiculous day yesterday. But for a squad like Inko, I think it's really down to this game here. I think they need to set the tone straight. Get a good game, big points, and if they could do it here in game number 1,
I think they're in the running for first place. But if they don't do it here in game one, I think it's going to be really tough. Yeah, I think Ingo's got to pull a Influence Kemen, right? Remember Influence Kemen? They weren't even in the top 8, and to remind all the viewers, from 8th to 9th, there was like, what, a 30-plus point drop-off? So Influence Kemen, their names were like barely mentioned coming into yesterday's matches, and oh my god, Jukes, they absolutely crushed it yesterday. And now all of a sudden, it's like they could be number 1. So Inco Gaming, they have a much nicer points, buffer compared to Influence coming into yesterday, so they don't have as much work as they need to do, but they definitely needed to pull off something. यार किसने वोटिंग की है यार? वोटिंग, we need voting bro. जितने भी लोग हो, we need voting in the game for N-Hype Gaming. ऐसा कैसे? वेलकम टू द स्ट्रीम, और इसके बाद को जो भी आ रहा है, वेलकम एवरी सिंगल वन ऑफ यू. A lot of people predicted us. We've had a lot of support to get here, and they proved to why they are one of the top teams in the Americas, and they could steal this tournament very easily. Yeah, it's so close in that top 5. We're going to keep stressing about that all long, unless, of course, we see one team at the top just pop off, and that'll seal the deal early on. But I think we're going to see some different strategies here, Zute. What is some things that come to mind? I did see somebody just kind of disrespecting in the chat. Walaikum salam. Kaise ho bhai? And same goes for all of these teams participating. So we're going to see something different, I think, out of all of the teams. Alpha 7 right now, they're doing a 2-2 split. We see All Glory Gaming. They already do not disrespect, bro. मैं सऊदी अरेबिया मदीना से हूँ. Thank you so much, Nabil Raza. Welcome to the stream, मेरी जान. I'm going to be in a surprise for, and these teams included, there's no VOD review going into this type of circle. That is for sure. But you know what? When it comes to these types of circles, the high ground, I think will. Did I see something like? We can see a ton of squads hunting it down right now. Intense Game's gonna be one of them. Diego all the way up top, at the bird's eye view of all the land, and it looks like they're gonna be creeping up. विनय, आप थोड़ा सा behave कर लो यार विनय. This is not the way of talking. If Diego spots him out, could you imagine being stellar? Just all the way up there thinking, Walaikum assalam. Walaikum assalam, guys, everyone. Love from Afghanistan. Thank you so much, Najib. Even though I don't think Stellar has made visual. Time बहुत हो गया है ना, bro. It's okay. He's pretty aware. हमारी जो PMPL होती है इसी टाइम पे होती है, like North America की जो है. This only came this time, like. Not gonna be here. Like live this time. At least one team's got to be here. Using it. Its vantage point lines into the next zone. So Stellar, he's definitely got to be careful. Other teams still rotating in. अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे? कॉमेडी लेजेंड, मैं ठीक हूँ. आज के नया सुनाओ मैं क्या? समझ नहीं आई. PMWI फेक वोट्स. हाँ, उन्होंने फेक वोट्स लिए हैं यार. 25,000 वोट्स उन्होंने किए. इस वजह से वही मैं देखता, मैं फौरन कह दिया भाई कि 25,000 वोट कैसे हो सकते हैं भाई एकदम. NHP ने यहाँ पे एक नो किया है. What is their plan coming into today? Because like the Chosen, there's zero chance, right? No matter how good they do, they're not going to make it to first place or anywhere near there, right? So what do you think their strategy is? Like, are they going to go for those spoiler roles? Just play the game they have been doing? And Zute, as we look at this to the channel before you answer that, right? Why don't you break it down for us in these rotations? I mean, one team I'm looking at rotation-wise is right here, N-Hyper, the third-place team. They got to come in from the far eastern side. Here's Influence Kemen as well, the fourth-place team. Of course, Alpha 7, they're dead smack in the middle. We don't have to worry about them too much for now. But those two teams, N-Hyper, Influence Kemen, that's number 3 and number 4 on the leaderboards, having a huge rotation that they got to come in on. And Intense Game, they're already kind of close to the center. We saw them earlier. So these rotations are definitely going to be tough, and Hyper's probably going to try and wrap around, I believe, to the western side. Influence Kemen, looking at them, they're taking a similar pathing, so that might be a conflict waiting to happen between those two teams in particular, Jukes. Yeah, it makes a lot of sense. Is, for everybody that doesn't know, when you have these hard shift zones like okay, चलो अनफॉलो कर रहा हूँ. SH व्लॉग किस वजह से और किसको? किस वजह से और किसको? सलाम ब्रो.
वालेकुम सलाम जरिया, आप कैसे हो? that same trend, just trying to find लव फ्रॉम इंडिया ब्रदर, लव यू टू मेरी जान. वेलकम टू द स्ट्रीम एंड कंग्रेचुलेशन सब इंडिया वालों को ऑन द BGMI इज गेटिंग here the zone centering up dead center. अनबैन. ओ भाई 87 वाले क्या कर रहे हैं फुल नीचे आज? Some sort of hard shift. If there was a hard shift, 87 वालों को आज लगता है कुछ और ही चाहिए. right? The fact that you centers up, dead in the middle. I mean, 87 के 147 पॉइंट हैं उस्ताद, इनको पॉइंट बहुत ज्यादा चाहिए 87 वाले को टॉप 1 पे आने के लिए. essentially like cut off from being able to do any more rotational strategies because everything is just blocked. Ooh, nice finish. From overnight. Let's go. The bank here and Hyper's gonna start off with 2 eliminations. That's good for them. You know, उस्ताद कल इनको बैठ के समझाया फुल टाइम ना एन हाइप वालों को कि ऐसे जो है ना पंगे नहीं करने, आराम से खेलना आज. when it comes to end game tournaments, right? We've seen plenty of times where N Hyper is dominating the leaderboard, always on top, and in the last day just not be able Okay, to get their hands on that trophy. But heck, starting off with 2 eliminations. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम. फ्लेक्स डाइनो कैसे हो? वेलकम टू द स्ट्रीम जानी. Hopefully they can clutch it up. Yeah, I hope so. I mean, starting off with 2 points, that's a confidence booster that they need. You got the Chosen and Dope crashing up on each other. Quick little 2v2 skirmish about to pop out here. 11 मंथ से वेट कर रहा हूँ BGMI का. 9 मंथ से हो गया. अस्सलाम वालेकुम अलादीन भाई, क्या हाल है? Far down on the ठीक-ठाक, आप leaderboards, सहमत भाई? despite अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. बड़े सोने लग रहे हैं, आज नहा धो के बैठे हुए हैं स्ट्रीम पे आप तो. that is. अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू अलादीन भाई. It's also a big ये बस आपकी नजर है अलादीन भाई. party, right? And pick up all those points. बस कैमरे का भी कुछ कमाल है. मैं कैमरा वही, मैं लाइटें भी ऑफ कर देता हूँ, आपको सेम ही दिखेगा. उस्ताद क्या कह रहे हो? Just finish off Hayuya. That nade, not a real worry for now. And so the Chosen gonna pick up nice little squad wipe onto Dope Slayers. And you know one thing that's always एक बंदा गवा दिया उन्होंने TC वालों ने अपना, लेकिन 4 किल उठा लिए, 4 पॉइंट. since they have nothing to lose, all their nerves are gone. And we've वो seen it. बहुत गलत Teams at the bottom just क्या कर रोटेशन कर रहे हैं. and that could really हाँ आई थिंक वो यार आप सब लोगों से अब यही है कि वोट मैक्सिमम चाहिए. on the leaderboards. लाइक वी कैन डू इट, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वोटिंग हमें चाहिए मैक्सिमम जितनी हो सकती है. Bottom can play spoiler, even if it's not intentional, right? It's not like they're मुझे लगता है कि YouTube पे ना वीडियो बना के डालनी पड़ेगी उस्ताद वोटिंग की ना. They're near the bottom on the last मैं भी day. यही सोच रहा था. You said it perfectly. They have no more fear, no more pressure, and they just play loose. And sometimes that's what they needed all along as we head into the next circle shift. So look, influence and hyper on the northeastern side. If it goes anywhere away from that position, Done. the northeast, that is मैं 13 डे down towards. से आया हूँ. हसन क्या मतलब? Ooh, speaking of यार 9 मंथ्स की आपकी बंद हुई है कि 11 मंथ्स हो गए BGMI को? superstar really put themselves out there and possibly get आई थिंक 9 मंथ्स हुए हैं, 11 मंथ्स तो नहीं हुए. some lone players राइट? looking to make some plays and BGMI कल आएगी, कल आप लोगों की कल आएगी आई थिंक that's going to make tomorrow. this is a really good zone for these teams. Yeah, that's a really good. Not the teams on the southern side, of course, but for everyone else, which is a huge number of teams who are on that एक north मिनट. side of the shift. You're going to be able to get a nice rotation. This And is hyper- गकुमी अगर आपका दोबारा इस तरह का कोई मैसेज आए ना तो जानी आपको मैं जो है ना the creative fields hunt. बड़ी वाली आपको दवाई दूंगा, टीका दूंगा, शायद आपको उससे थोड़ा ना आराम आ जाएगा आई गेस. Starting to heat up now, Jukes. चैट देख ले, मैं देख रहा हूँ चैट. Go everybody. First game of the last day of the PUBG Mobile. वोट ओनली फॉर I8 जानी I8 साउथ एशिया वाली साइड से, मैं नॉर्थ अमेरिका वाली साइड से आप लोगों से पूछ रहा हूँ. Kinda have the they would hope to have the same day they had yesterday. If they do, Cause they are my team, bro. but it's hard Like, to have repeat performance. I'm their content creator from North America Team do really and well hype. one day and struggle the next. So hopefully Please take my name. break that curse right here, right now. It's not me, Ayan. It's not me, Ayan. Ooh, उस्ताद क्या निकले? Getting an elimination क्या बचा उस्ताद? Oh, एंड गोलियां लग गई हैं. over, but I don't think he's gonna अगर ये पकड़ा गया एन हाइप से तो सीधा अंदर बाहर है. there already in the center zone. पूरी कोशिश waiting. कर रहे हैं उसके पीछे जाने की. Overnight's not नहीं ये दूसरी से down to 2 man. अच्छी रोटेशन है, Team has बहुत अच्छी रोटेशन है. off since day number 1, and it looks हाइपर बोलो, नॉट हाइप. एन हाइप यार, हाइपर है ना, एन हाइप जो शॉर्ट नेम है वो एन हाइप ही बोलूंगा. The zone really locks
focus on them, Master and they of can get it YouTube, done. subscribe to the So channel. Master of YouTube यानी thank you so much for subscribing. especially when that zone doesn't favor them, they really seem to struggle. Hopefully, But you are Pakistan. use the rest of this हम tournament. पाकिस्तानी ब्रो। यार देखो लाइफ के अंदर दो चीजें होती हैं। देखो पहली चीज होती है आप किस टीम का पार्ट हो, किस टीम का हिस्सा हो, ठीक है, एक वो चीज होती है। दूसरी होती है कि आप किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। बीइंग अ पाकिस्तानी आई डू सपोर्ट। आपने अगर नहीं आपको पता होगा 2 साल पहले 2.5 साल पहले आप पीछे जाके चेक करो मेरी वीडियोस के अंदर मैंने बोला था आई8 को भाई वोट करो। तब की बात है, तब जब बाबा भी उसमें खेलता था, जब ब्लैक भी उसमें खेलता था, ठीक है। फिर टीम ब्लैक ब्लैक को टीम ब्लैक एफएस को उसके बाद आई8 की बारी आई तो आई8 में जब हसीब था, क्रिप्टो में हसीब की बात कर रहा, हसीब था, ठीक है। तो अब देखो हसीब किसी और टीम में खेल रहा है तो हसीब तो आई8 को नहीं ना सपोर्ट करेगा, वो अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। इसी तरह मैं कंटेंट क्रिएटर हूं एंड हाइपर का, ठीक है। तो मैं अब उनको सपोर्ट करूंगा, मेरी सपोर्टिंग उनको होगी, ठीक है। मैं उनको ही रिप्रेजेंट करूंगा। दैट्स माय रिप्रेजेंटेशन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Only having 80 points on the board. They're one of those squads that needs to literally win every game today if they want to get first place. So not a lot to lose. Everything to gain. Do you see Diego with some nice? उस्ताद नेड़े चल रहे हैं यहाँ पे। जोन के बाहर कोई खेल रहा है, कोई जोन से अंदर खेल रहा है। ये तो वो तो किट्टे लगा रहे हैं लेफ्ट साइड पे। That's going to be really tough. शॉटगन से भाई यू YKG कर क्या रहे हैं उस्ताद? It's a 1v1 now. Fierce versus, I think that is Cielo. He's behind the wall. ओ वो अपने बंदे को वो कर रहा है भाई। Revive though, Jukes, and he's got the TPP advantage. Some pre-fires force that player off. ओ And intense game showing us why they are in first place still right now with a इन्होंने थ्रो clean कर दिया, finish. पता है ओ भाई साहब Uh-oh. YJ वालों ने। गंदा हाँ I don't think they're making. They can उनकी get the full पोजीशन reset. थी पोजीशन थी, होल्ड कर लेता, हाँ होल्ड कर लेता, पीछे चला जाता। They have the zone too. Well, it's going to be huge if they get at least 4 points, right? That's going to help them out. बस सही है कि जोन भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो तो डिपेंड देखते हैं कितनी देर तक वो होल्ड। अबे क्या नेडिंग है, आराम से नेडिंग करो बे। वो बेचारा नीचे जो है ना लेट गया, सारे नेड्स आया कर दिए। 8 स्मोक उस्ताद पकड़ के बैठा हुआ है, एक मोली है। ओए अगर लेफ्ट साइड पे होता ये जाता, लेफ्ट साइड पे होता ये जाता। एन हाई वाले आज उस्ताद बड़ा प्यार से खेल रहे हैं, 3 किल निकाली हैं अभी तक जो है ना, चारों के चारों बंदे अलाइव हैं। ये देखना पड़ेगा एंड पे जाके क्या बनता है। चैट भी मेरा चैट भी नहीं था। खालिद असल किसी की टीम के साथ नहीं है। कि कौन टॉप पे? ये तीसरे नंबर पे ना अभी, वो देखे ना इंटेंस गेमिंग और अल्फा सैमन के साथ। अल्फा सैमन अभी वो होगी ना, नहीं अल्फा सैमन के चारों बंदे अलाइव हैं। 2 किल हैं उस्ताद। That third party is always there in this tournament, and intense game is going to suffer from that same. ये गए इंटेंस गेम गए, इंटेंस गेम गए। That would have been crazy to watch if they hit that. That would have been nuts. But we got to watch Inco. इंटेंस के साथ गंदी हुई है। एक तो वो सर्कल के एज पे थे, Jump on you if they get the opportunity. And you could थोड़े see से them पॉइंट trying सेकंड to मिल hunt गए down हाँ। Jaguars only 2. नहीं 0 पॉइंट है यार, नहीं Very close together. One nade. 4 किल। अच्छा 4 किल है, अच्छा 4 किल है। मैं दूसरा देख रहा हूँ। It's going to get a knock onto Becker. That's going to shut down that push. पाकिस्तान नेक्स्ट विजिट नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जानी। Oh, almost getting another one onto Vitali. He's got to be careful. Heal that right up. That's last first aid kit. मैंने आपको वो दिया था, वार्निंग दी थी, सही है ना। That are being pounded into these players. तो मेरा कुछ छुट्टी कर, शाबाश, पहले फुर्सत में छुट्टी करो। Because you're eating away at their armor, their meds, the util, and you know. कहीं और जाके गो कमूमी के क्या जो भी तुम्हारा नाम है, कहीं और जाके अपने पेज खोलो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ओके। जब इस तरह के काम करोगे तो यू विल बी गेट बैंड फ्रॉम माय स्ट्रीम, ओके। ओह पैंथर भी गंदा खेला। पैंथर ने कल जो चिकन निकाला उस्ताद, बहुत अच्छा चिकन निकाला है। चुमिया, वाह चुमिया, मेरी गेम नहीं ऑन वरना चुमिया आपको करवा के दिखा देता। That leaves Alpha 7 out of the zone, so they're gonna have to make their push in. And Hyper, man, just getting that circle. They are getting blessed right now.
आज गिव अवे है हम पे। यस यस, हर स्ट्रीम के हर गेम के बाद। Like you mentioned, they're gonna have one heck of a run. कमेंट देख मेरा एल्सा, क्या आपने कमेंट किया? Yeah, Alpha 7, they've trained for this, right? They thrive on having क्या कमेंट किया था? मुझे नहीं आपका कमेंट नजर आ रहा ऊपर। Nico, all in ओ गए load up, the गए Eagles on fire, they hop out. वो It गए explodes. उस्ताद। They are just getting pieced up. उस्ताद A7 वालों ने क्या किल निकाला है। Hyper as well. Yeah. इजी किल And है। Hyper एन हाइपर ने एक किल चोरी किया, It's looking that एक elimination लूपस ने चोरी। अबे उस्ताद ये तो चोरी हो रहे, मारा किसी और ने, उठा किसी और ने लिए किल। rounds right now in this final अपने circle. बंदों ने ही It is उठाया। अबे एन हाइप वाले बहुत प्यारी लोकेशन पे हैं आज, बहुत प्यारी टॉप पे चढ़े हुए हैं, बहुत प्यारी लोकेशन पे है। Does have सर्कल ने इनका साथ दे दिया ना, चिकन है उस्ताद इनका एन हाइप का। the team I'm gonna predict to win this game. आज भाई का मूड थोड़ा खराब है। नहीं नहीं, मेरा मूड ठीक है, ठीक है। असल में वो गालियां गलत लफ्ज लिख रहा था, गालियां से भी गलत अल्फाज लिख रहा They था। don't really need high ground, Zute. I'll tell you गालियों that की right गाली now. लिख रहा है। अपनी अम्मा के बॉडी पार्ट्स लिख रहा था वो ना, इस वजह से। M4s. अब आप समझ जाओ। You gotta watch out for. definitely so. The one problem with that high ground, अहमद भाई, players get knocked. That is going to be a tough revive. अहमद भाई स्ट्रीम छोड़ दी यार, वो गेम ही नहीं थी चल रही। सिस्टम इतना वो खाली सिस्टम भी नहीं, माउस से हिल ही नहीं था, लाइक सिस्टम फुल लैग हो रहा था। Tickle the toes. Oh, got him twice. सिस्टम री करना, मैंने सिस्टम री करके उसके बाद मैंने किया था। उस्ताद किल है एन हाइप वाला, अगर ये तूने किल मिस किया ना, Man, all core games शाणे, had a किल नहीं मिस करना आज। right? They've had some really nice तुझे पता है ये इधर है, ये निकलेगा इधर से, just seem to नहीं नेट करेगा वो अपने आप पे। constantly पड़ी उसको, पड़ी पड़ी पड़ी, ट्राई कर, दोबारा ट्राई कर। trying to hold लो है, for his team. पकड़ उसको। One up for him, but I अबे जून से मर जाएगा। here most likely. Well, he gets the first aid off. I think दरख्त है ना QZZ ये। is thinking दरख्त है लेकिन पकड़ सकता है उस्ताद। point. बगियां जाया कर रहा है इनकी। कर रहा है बैठो। अबे Team to focus on, especially if you want. उसके पास स्मोक वगैरह नहीं थे। Seven still with 4 up, but their vehicles are looking a little bit beat up right now. Yeah, definitely. उस्ताद बहुत प्यारी लोकेशन है एन हाइप वालों के पास। On the hunt for loops. किल्स भी Mafioso, निकल आ he's सकते got हैं that तो हम्म। range तो round, अच्छी he's है। got those angles. Especially He's got to be so careful though. Yeah, he does. Especially for he knows that there's a player up on top of him too, so that's making him a little bit nervous. He's also the anchor point for the team. He's the one furthest into the zone. ओ एलिमिनेट हो गई है एक टीम। So if he does make his presence And hype 6 kill. worth it. It can't just be a knock. It has to be at least अबे वो बंदा जो उनका बैठा हुआ था नहीं निकाल पाया किल, the risk of shooting And hype वाला। letting his position be known to QZZ. वो दरख्त के पीछे था ना। हाँ लेकिन वो निकला नहीं ना, हील करके उसने बस होल्डिंग की है ना। This is going to be a huge circle, especially for a team like Hyper. They do not want to have to give up that high ground. अच्छा हम अगर खेलते हैं ना कॉम्पिटिटिव, हाँ। हमें होता है यार किसी तरह पहुंच जाए, बेशक हाँ। देना है तो दे for दे। them. ये Here, लोग look नहीं at that. देते। Rolls of No. power. Getting some- ओ उस्ताद ये चीज एन हाइप ने एक किल कंफर्म किया। Player above him, and QZZ finally spotted him. A7 वालों में The rest of कर Alpha 7 did manage to make it in though, so now they have 3 people right underneath this hilltop. The circle does center up, giving in Hyper Alpha 7 the zone. उस्ताद चिकन है एन हाइप वाला को, अगर ये आराम से खेलेंगे तो। I believe 4 up, yeah. बैक क्लियर है, बैक क्लियर है उस्ताद, सामने देख कोई नहीं है इधर, इधर ये लूपस वालों को पकड़। Pound over there. You gotta also give it up. और गंदे वाला सर्कल है उस्ताद, चेक कर नीचे 29 बंदे और नीचे कंपाउंड्स में। You know, it's so crazy to see how well they cover for their teammates in those situations. You see Rolls of War here, pretty insignificant on the leaderboards, just looking to... ऑफिशियल था। अरे ताऊ भैया कैसे हैं? 4 आवर लेफ्ट ऑफ विजय में, लेट्स गो। आपके किस टाइम आ रही है? लाइक 7 AM पे आ रही है कि 11 AM पे आ रही है ताऊ भाई? In day 2, they still got some work to do if they I want will do the live stream also for the BGMI. As far as the momentum meter is concerned, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ भाई। today with the most momentum out of any of the teams. Their क्या glow हाल है? yesterday was फ्लेक्स डाइनो phenomenal. कैसे हो जानी? वेलकम टू द स्ट्रीम। 7 AM पे लेट्स गो। आपके लोगों के 7 हमारे 7:30 The Panthers are in the zone as well. 7:30 PM, आप लोगों के 7 AM होंगे। Just yet. लेट्स गो। इसका मतलब है जिस टाइम पे हमारी वर्क है उसका नाम है, ये मैं स्ट्रीम ऑफ करूंगा, साथ ही फिर दूसरी हम कर सकते हैं। सर्वर बैक ऑनलाइन किस टाइम हो रहे हैं? shake that one off, though. You know, he learned that stop drop. Ramu next year, maybe. Early on in his PUBG Mobile career. And Band-Aid up here. You can see loops on the side of the ओए हाइप तो ट्रॉप है जो सीन है बहुत प्यारा, इसके पास रीजा ऊपर टॉप वाली। Nade it here. Like if you एक wanna, और if इसने someone knock दिया। nades you, नो की हो रहे हैं ना, लेकिन फिनिश नहीं ना अभी तक हुआ। on top of you, फिनिश चाहिए इसको। otherwise it's going right over your head. And A7 वाला फंसा हुआ है, looks like Alpha 7. ना इधर का Get ना those उधर down. का। Yeah, if anyone can manage to land hard nades to do. लेकिन मसला ये 3 के 3 बंदे इसके अलाइव हैं। उठा पाएगा ये किल? Not a point
point confirmation though, but definitely, you know, making अच्छी मोली है, अगर गई तो अच्छी मोली होगी। also wants a thing. Throw out things. Went down the mountaintop, and they find an angle. Chief is knocked. Oh, Chief. उस्ताद नीचे गिरना नहीं है, Side though. नीचे गिरना नहीं है। ए सामने वाले फंसे हुए हैं इस टाइम पे फुल टाइम। 17 right now. They can. That's the time to do it. Nice and early. Force their यार नेड अगर मारे ना, नेड मारे, इसके पास नेड नहीं है ना, मोली है लेकिन वो मोली जाया नहीं करना चाह रहा। They know that they're going to get picked away slowly. अगर NSG भाई आपकी भी नींद उड़ी पड़ी है। Expert programmer subscribe to the अरे हर्ष भाई कैसे हैं, वेलकम टू द स्ट्रीम। Absolutely shredding Alpha 7. It's really only Senatex. एक मिनट सब्र करो जरा, Just stuck between a rock and a hard मुझे लग रहा है हर्ष भाई आज सो नहीं रहे। हर्ष भाई भी लाइक सबसे पहले क्रेट ओपनिंग तेरा भाई करेगा, समझ रहे हैं ना। And loops, they are damaging both of these teams with barely any return fire. Up to 8 eliminations now. Ren finds the last player of Alpha 7 out in 8th place with only 4 elimination points. And Hyper now looking at Loops. Looks like Loops know this is a losing battle, so they're going to try and wrap around to the north side, and Circle is about to shift here. And Hyper हर्ष भाई ये BGM वाला आपका अकाउंट है ना right now. Picking यूट्यूब का। monster points from this position. हर्ष भाई ये BGM वाला है क्या दूसरा ग्लोबल वाला है ये वाला अकाउंट? Now out of their way. Influence Kemen. Definitely a squad to watch though, as this next zone does pop. Sute centers right on up. Influence doesn't have to move a muscle. Yeah, now the Panthers are forced to push the Influence team. The Panthers with किल निकालने पड़ेंगे इनको ना ज्यादा से ज्यादा एन हाइप वालों को, उसके बाद ये नीचे आने आएंगे तो इजी सीन हो जाएगा। rotating in. Aton, this could help out the ओ ओ ओ ओ ओ ओ Aton, एक भी नहीं लगी उस्ताद। other side, Influence Kemen. The only team they have to worry about is 20 सेकंड। Meanwhile, N-Hyper एन वाले किधर है? move into zone. N-Hyper has the high ground, but it's not in the next circle shift. Same for Loops. जोन शिफ्ट हो गया, जोन शिफ्ट हुआ है लेकिन किधर है वो, उन पे कैमरा ही नहीं दिखा रहे। वो ऊपर ही है, ऊपर ही है। लूप्स वाले तो निकल आए उस्ताद, क्या बचाया इन्होंने अपने आप को। गए, उन्होंने Rotation हो गई, right to overnight. गंदा सीन हो गया लूप्स वालों के साथ। Hanging out ओ भाई and getting absolutely नॉक फिनिश उस्ताद। immediately. So अबे इतना गंदा इन्होंने पुश करके ले लिया भाई। right from their noses. Yeah, that was a huge चार early बंदे आए। व्हाट, 4 आए हैं पूरे उस्ताद। They managed to find a way out. Here comes उनके the दो टाइगर वाला गया बहुत ओपन में। It was a 2v4 for or एन हाइप वाले किधर हैं उस्ताद? They're getting cut down. Aton बहुत गंदी जगह है ये वाली कसम से। Yeah, just stuck in a really terrible spot here. It's just Quan up left for his team, and Choco's got eyes locked right on him. That's gonna do it there for the Panthers. फाइट हो रही है कहीं पीछे जो, ओए एन हाइप वाले की गाड़ी रोटेशन से। अबे यार लूप्स ने उठाया किल, गंदा अबे। Fifth place going into this match, and they are literally tied right now with एन हाइप का एक 9 किल। big battle here. सलाम फारूक भाई, वालेकुम अस्सलाम। lose one player on rotation. बीजीएम वाला है ये, ओके ओके। And honestly, rotating down. दूसरे से मैसेज करें जरा, दूसरे से ऑनलाइन आके मुझे मैसेज करें एक दफा चैट में। Influence coming already with one knocked, and you can see Aton getting the angles. Can they find the second opening here? Choco with the M16, single tapping his way, trying to get the गंदा नेड भाई एनएक्स की तरफ से। ski. That's gonna shut down the push onto Zohan. Choco only with the M16, but his teammates are right there on point. But so's Kaiowski. Trades going back and forth. किल चोरी उस्ताद चेक कर रहे हो And shuts down लूप्स वालों की तरफ से। Sports Loops. अबे क्या गंदा खेल रहे हैं भाई, बहुत गंदा खेल रहे हैं लूप्स वाले। इन्होंने तीन दफा थर्ड पार्टी करके उठा लिए हैं, Completely wiped out there, but now they'll keep किल उठाए। हाँ किल उठाए हैं। battle ensues, though. We got the Titans लोकेशन बहुत प्यारी है हाइप वाले की, in ऊपर क्लियर है उस्ताद, and Loops सारे बंदे नीचे हैं। ये बंदा खतरनाक है। मिडमैन का बैक हाँ क्लियर है पूरा। हाँ hang out over there on that eastern side. New एक circle तो हाइट shift, ऊपर से बैक definitely क्लियर है not in मेन। favor of Influence Kemen. They सर्कल में कौन सी टीम है? ये वाली टीम सर्कल में है। आईएनएफसी सर्कल में है, You have their हाइप का पता नहीं है सर्कल में है कि नहीं। आई थिंक दे आर इन द सर्कल टू, या दे आर इन द सर्कल टू। in similar directions here. You can see QZZ trying to open up a name. Ooh. He knows that he has that blue zone to his advantage. So using those grenades are just going to help stop that push. Second, अबे पीक करना, पीक करके करेगा वो आ जाएगी उसमें। he's trying to thread the needle, and he does with some nice shots. 4v3 Royals of War. and 4v4 and 3 Oh yeah, very 8 kill। aggressive. They're just looking to take the spoils of war. अबे गोलियां ना जाया करो उसको भाई। 276 गोलियां इसने उठाई हुई हैं शाने ने, लूप्स वाले ने। 3 एक नेड है, 3 स्मोक, 2 मॉली।
इसने तो हमारे वाली लूट की हुई है, नॉर्मल मैचेस वाली। I mean, we're going into stage 9. Classic हाँ, क्लासिक वाली लूट की हुई है इसने। Four-way fight. And Hyper, डॉन वाइटी सम गिव अवे जीत everything's सकते in on them, which जो could work कल out भी for जीते था। shots. जी जी जीत सकते हैं, वो रैंडम नेम आएगा, मेरी तरफ से नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की तरफ से है ना। स्पैम नहीं करो जनी, स्पैम नहीं करो, किसी दूसरे का मैसेज भी पढ़ने दो। उस्ताद नहीं जाता मोरी से मौली, मौली ऐसे समझ रहे हैं ना, ऊपर से फेंकनी पड़ती है, मौली जाया कर दी शाने। ओ उस्ताद क्या कह रहे हो, पीसी का गुस्सा कहीं एनएचपी वालों पे तो नहीं निकाल दिया? क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ पीसी का गुस्सा कहीं एनएचपी वालों को तो नहीं निकाल दिया? मैं ऐसा ही कर रहा हूँ उस्ताद, निकाल दिया इन पे, जो 2 घंटे दरमियान में लिया ना टाइम, 3 घंटे गुस्सा ही निकाला है ना उस्ताद। उस्ताद क्या कह रहे हो, जीतोगे तो स्पॉन्सर मिलेगा? उस्ताद वैसे भी नहीं भी मेरे को जीतेंगे तो स्पॉन्सर तो है ही है। दे आर माई टीम यार शारिक भाई, दे आर माई टीम, नॉट इन अ सेंस ऑफ स्पॉन्सर बट इन अ सेंस ऑफ ऐसा इधर नॉर्थ अमेरिका में नहीं होता है अलादीन शाने। Circle is closing. Royals have to make their first move. ओ Hyper can and Hyper hold the defense. So many points everywhere to be had. Kindness not even sure where अबे to क्या look. पोजीशन है लौंडे The की। second he peeked up, लूप्स गए, लूप्स गए, little boy ये चाहिए, focused on loops. वो Everyone गंदा खेल। ओ single squad, but Loops is in big trouble. Little boy trying to get these confirmations. It's just उस्ताद क्या कह रहे हो, नेट से तीनों उठा गए एंड हाइप का एक नॉक हुआ। अब एक गंदा नॉक हुआ ये, लूप इज ऑल डेड, And that's it for हाइप का एक नॉक है। little boy. This is Last one out. up. Is it a 1v1v1? It's a 1v1v1. ओ And Oh, the Hyper's getting first that chicken revive dinner. though. And Hyper's gonna get this revive. And if they stall long enough, they can get the third one. Royals of War, they need a push. Little boy, no revives to be had. He's got to do it all on his own, Jukes. Circle is still closing. ओके एंड हाइप के 2 हो गए, वो सारे 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 रिवाइव दे रहे हैं, सारे अपने 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 को रिवाइव दे रहे हैं। 3v2 की फाइट होगी। So slowly, it's allowing for these resets to happen. Royals of सलार थैंक यू फॉर 1 month membership। that container. One nade will do it, but by now, एक मिनट, वालेकुम all their utility, and that's exactly what happened. Rin's throwing a nice वालेकुम offensive smoke there to अस्सलाम। shut down that angle. And gonna अहमद focus भाई on one माँ team at कसम a ऐसी time. कड़क लॉबी And लगी Hyper, थी ना। oh, stuck in a really bad spot. Little boy's gonna have the angles. That knock on the kindness Zone and के बाहर thirst is हमारे gonna आप be सोच रहे हैं। devastating for Hyper. Now it's down to a Look at Kid, 2v3v2. Circle closing नहीं in. It's नहीं gonna अबे go all रंगल the way था। down to center. Run Little boy बहुत with the निकाला सामने DBS वाले through the को। smokes. Doesn't find the shots. Gets it on QZZ. Rolls उस्ताद War on the other DBS side. And लेके Hyper घुस is गए out. मेरा No, मार। it is Rolls of War. Floris's influence came in, and it's about to go down. Federal, last one up. Shot through the smoke, Jukes. Royals of And War. एनएफ गई। Royals of War, yeah. Finding the नहीं, spoils NF नहीं of गई। war. अहमद भाई की आवाज ही नहीं आ रही। Chicken dinner. वो हेडफोन पा रहा होगा ना। ये इनकी टीम का क्या हुआ शारिक भाई? अबे एनएफ जीत गई। One of the last हाँ, इनको घंटा पर। teams, right? Coming off the rip. इनकी with a टीम का अहमद क्या भाई की बना टीम है है? ना? and it 1 was HP like 3 or नहीं 4 ना? eliminations. एनएचपी हाँ जीती वही है। जीती है, एनएचपी जीती अच्छा है। एनएचपी नहीं, जीती है। हाँ हाँ नहीं, एनएचपी नहीं। जीती है। In PMPL Royals of War अच्छा, जीते हैं। eliminated, Nice little badge of eliminated। honor right there. न, लेकिन नंबर सेकंड I नंबर don't पे even know है। if they're gonna get I first place guess. if they win all फिर 5 तो Yes. ठीक है but पोजीशन। still, right? You जी, gotta be जी। hype about a win. गाइस A win's a लाइक win. करो, A win is a win, 250 they लाइक्स say. पे गिव अवे होगा। Yeah, wins a win. More importantly, चलो, the चलो, teams that जल्दी से। finished in second, यार third, कोई and assignment बना दो also इस we stream पे had कोई यार। Influence came in second बताओ place उस्ताद, finish. कभी बना We देते हैं। had in Hyper huge third place ये finish for क्या them बात? because you know they picked up a lot सब of कुछ कर देंगे eliminations डेल्फिन भाई। all the way throughout, and then the fourth place was Loops, I believe. So man, all of these यार points कॉफन भाई gunning कब for that डिस्कॉर्ड top one. की पिक्चर Intense चेंज game. करना है? Went out extremely early, and that was the first place team. So that number crunch for first place just got a little bit tighter for everyone. Yes, sir, it did. Guys, we got a lot more action here. Don't go anywhere. We'll be right back after this break. उस्ताद इसने यूएमपी से तो गंदा नॉक निकाल दिया, दूर फिनिश में मार दिया। गाइस तुम लोग करो ना, हैशटैग करो ताकि दूसरे भी करें। गिव अवे स्टार्ट हो गया, हैशटैग एनएचपी करो। क्या पता 25-30 हजार यूसी का गिव अवे हो जाए। तुम लोगों ने बस कर दिया गेम पे?
किल हाँ बस कर दिया। अहमद भाई ने खाना मंगाया आज। Royals of War being cool, calm, and collected there. Actually, timing the push perfectly here up against N Hyper with the help of Lil Boy to close things out and get themselves a chicken dinner. But honestly, with IG going out early, we have seen probably the leaderboards change. Maybe in favor of N Hyper, maybe in favor of another team. We'll find out in just a little bit of time here. But that was a crazy match, actually. I mean, N Hyper, I know, Cameron, you were like regretting, I should have went N Hyper because of the high ground they had. But Influence Kemen still placing higher than they did. I did, yeah. So, I mean, I picked Influence Kemen because I was playing for third place to get the guaranteed 1 point. It's really hard to pick for first place. But, I mean, hey, look, they get first anyway because of the number of eliminations. Royals of War only coming वर्षा कल तेरी आईडी पर रैंक करके मैंने फ्री हो But Influence Kemen, that spot, I'm actually अगर surprised खेलेगा about the अपनी elimination आईडी points से that they किधर did. खेलेगा Because इधर once we hit that late game position and it's centered up around that whole industrial area, they were just playing really, really defensive. And that's what you want to do in that zone because it's incredibly hard to keep all the teams out. We saw 5 teams all shoved in that little area. And so it really just comes out of being able to handle the pressure with the blue at their back, with Loops on one side, Royals of War on the other, and then N Hyper, who had come all the way from that high ground on the ridge line to press the rest of the lobby, are now trying to gain control of the final zone there. Loops. I'm impressed by Loops, actually, especially with what Mythic was able to do because he was able to sneak up on Alpha 7, even though N Hyper had visual on them. That was quite impressive. And with Intense Game, man, I gotta feel for them because they decided to take a fight that they definitely didn't even have to take with YKG. शारिक भाई कुल्फी खाओगे? I mean आइसक्रीम। नहीं नहीं हमें तो हम फुल हैं? रात के टाइम पे क्या खा रहा है शाने? नहीं नहीं मैंने कहा मैं खा के आया था ना शराबी ने बुलाया था क्या लपेट क्या मालिक तुम तो शादी पे गए थे मुफ्ते का लपेटने अबे मुफ्ते का नहीं था भाई अनुलग देख के आएंगे क्या बात ये क्या बात है हमें क्या पता खाली इनवेलप दे के आया होगा नाम शाम एक्स्ट्रा नहीं लिखा कि बस वही फोल्ड करके जल्दी से जेब में डाल दो लिख दिया फ्रॉम बादशाह उस्ताद क्या कह रहे हो इन्फ्लुएंस दूसरे नंबर पे आके ज्यादा पॉइंट लेगी 16.10 किल के रॉयल ने चिकन निकाला और 5 सिर्फ उनके किल थे गंदा भाई 15 पॉइंट जो है वो एन हाइप लेगी है चिकन यार मिस हो गया है असल में इनको वो पीछे से जो है ना उधर से इनको कवर नहीं था ऊपर रहते ना ऊपर से बहुत अच्छा खेल सकते थे वो टैंकर के ऊपर जो था अपना माइक थोड़ा सा कम करें बहुत तेज आवाज है अब उठाइए हेलो टेस्टिंग हेलो सही है चलो यार बॉयज 1 मिनट फाइनल पॉइंट देखने दो भाई लाइक्स कितने हुए हैं यार आज कोई लाइक शेक का गोल नहीं रखना 65 चलो यार लाइक गोल 69 अमेजिंग वीडियो जानिए अगर चैट में अंदर बैठे हुए तो अपनी आईडी जल्दी से लिख देना ताकि आपको यूसी आज जो है ना जल्दी सेंड हो जाए आज लास्ट डे राइट यस लास्ट डे फाइनल आज होगा जो भी होगा नेक्स्ट मैच सैनहॉक में देखो क्या करते हैं एक भी चिकन है अभी तक निकाला सैनहॉक में एन हाइप ने एक ही चिकन निकाला अभी तक वैसे इन टोटल the entire match and they just weren't able to really finalize that final segment. That damage really just comes from the fact that they were on end game name क्या है Amazing Gaming and you can't guarantee the confirm on all those knocks that you get जो भी लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे थे गिवे में गिवे कंटिन्यू होगा दोबारा से नेक्स्ट मैच के बाद हर मैच के बाद एक गिव अवे जो है वो होगा तो मेक श्योर stay रहो स्ट्रीम के ऊपर 298091 the Overwatch position he had. He was looking straight towards Influence Kemen and was locking down the position if they actually moved up, which they had to. So that one knock, I think, changed the complete tide of the game. And the timing of that, too, because Kindness decided to just pop off, like pretty much crouch when he thought the Influence Kemen player was still going to be up. And then as soon as he... Amazing video. अपनी मुझे इन गेम नेम बताना इन गेम नेम क्या है आपका जैसे आपका इन गेम नेम आ जाएगा मैं आपको जो है वो यूसेज ट्रांसफर कर देता हूँ
यार फाइनल पॉइंट क्यों नहीं दिखाते? ईसा गेमिंग, ओके ईसा गेमिंग आपका यहाँ पे ईसा गेमिंग एंड आपके मेल के अंदर 600 यूसी पबजी की तरफ से आगे हैं, आप जाके उनको कोलेक्ट कर लीजिएगा। और ट्विटर पे टैग कर दीजिए। वाह, ट्विटर पे टैग कर देना। क्या ये क्या बात है यार, मैंने 2 क्लिप निकाले और दोनों क्लिप पर नॉक करने को गालियां दे रहा हूं क्या एनिमीज? जो बात है, कभी कभी गुस्सा चढ़ा था। पीटीसीएल कैसा है जानी? वेलकम टू द स्ट्रीम। लगता है अगले महीने का मुझे पीटीसीएल का बिल नहीं देना पड़ेगा, ऐसा है क्या? ये जवाब आपको 2 महीने बाद मिलेगा पीटीसीएल की तरफ से। 100K सब्सक्राइबर विद ओनली शॉर्ट्स, जो बात है मालिक। मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर देखे विद ओनली शॉर्ट्स। उस्ताद क्या कह रहे हो? हाइप वाले दूसरे नंबर पे 162 पॉइंट सिर्फ चाहिए हाइप वाले को पहले नंबर पे आने के लिए। अबे पॉइंट ज्यादा तो टॉप 4 की सही टसल है, बल्कि टॉप 5 की सही टसल है। टॉप 5 की टसल है, टॉप 3 की मैं कह सकता, टॉप 3 टॉप 4 की टसल है। 5 जरा थोड़ा सा नीचे जा रहा है। लूपस को जो गंदी पड़ी है ना, एलिमिनेट हुए। लूपस अगर ये अच्छा खेलते हैं ना, एक भी चिकन निकला ये दोबारा टॉप पे आ जाएंगे। चिकन चाहिए भाई, वो क्या इसका नाम है, हाइप वालों को चिकन चाहिए। चिकन के सही पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। इमेजिन अगले गेम में 25 पॉइंट निकाले, 20 प्लस अगर पॉइंट निकले। टॉप 1 आते तो ये किधर जाएंगे? PMWI सऊदी अरब में जो हो रहा है इस समर में, एंड समर जो हो रहा है फाइनल, जिसका PMC होता है इसका PMWI इस तरफ हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप। बैग में डाल के ले जाओ मुझे। बैग में डाल के, हाँ मैं कहीं और पे बांध के ना ले जाऊं शारिक भाई। DARIUS 18X सब्सक्राइब टू द इतना वजन चैनल। उठा लेंगे आप? भारी हो जाएंगे हम भाई। डिपेंड करता है, वजन तो और भी बड़ा बड़ा उठाया हुआ है। ऐसे क्यों अलादीन बात कर रहे हो? जी जी हाँ अहमद भाई, कंधों पे बहुत वजन है। कंधों को नहीं, हाथों में ऐसे, आई मीन ऐसे ऐसे कंधों पे किसी हम लोग चलते हैं एल्सा और रामू को बातें करने देते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। मैं तो चैट देख ही नहीं रहा भाई। रामू भाई कटेगा, सबका कटेगा। रामू भाई को नहीं बोलना, समझ रहे हो ना? भाई एनर्जी हर्ष है। यस हर्ष भाई, मैं आ रहा हूँ जानी, मेरी आईडी BGM। यार हर्ष भाई लंबी ना करो, ये देखो हर्ष भाई, किधर गए हो? आ रही नजर? भाई फोन का ये BGM ऑलरेडी है, मैंने डिलीट की नहीं थी उस्ताद। क्या कह रहे हो? डिलीट की नहीं थी। अहमद भाई ये नया फोन नहीं है आपका? नहीं ये दूसरे में ना, नहीं ये दूसरे में है। अच्छा वो जो जिसमें BGMI इंस्टॉल थी उस्ताद, ये वो वाला है। उस्ताद क्या कह रहे हो? वही 2-2 3-3 फोन जो मस्तियां, ये कह रहा है उस्ताद। स्ट्रीम के बाद अहमद भाई हर रोज 2 घंटा प्रैक्टिस जो किए ना, कम बैक के लिए। मुकुंद शर्मा सब्सक्राइब टू द चैनल। कहने की जरूरत है। आयुष भाई दूसरे अकाउंट से आए ना, वो ग्लोबल वाले अकाउंट से। अहमद भाई सपोर्ट कर दो यार। ओके सपोर्ट है यार, दिल से सपोर्ट मेरी जान, आपको दिल से सपोर्ट। अब नहीं करो गाइज, अब नहीं करो। हैशटैग अब नहीं लिखो, हैशटैग गोना बी चेंज। मैं पहले बता रहा हूँ, अभी गिव अवे इस मैच के बाद, हर मैच के बाद गिव अवे होगा। आकाश मैच के बाद गिव अवे होगा, एंड सादिक मैच के बाद गिव अवे होगा। मैच के बाद स्टार्ट करते हैं दोबारा। आ रही, ओके। एल्सा इसका नाम है डेल्फिन वाइटी। किसका भाई? भाई तुम्हारा वो नाम पूछ रही थी, मैंने कहा डेल्फिन। कौन? हेलो एल्सा पूछ रही थी तुम्हारा नाम। एल्सा यू कैन कॉल मी माइन। भाई आप इसको टुड्डा कराएंगे, मैं कराऊं? यार शारिक भाई एक बात बताओ,
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको ये चुटकी को चुटकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यार इसको क्या कहते हैं, मुझे भूल गया। Alphan is my bro. Astaghfirullah. डेल्फिन फिर तो मैं बड़ा भाई इसको क्या बोलते हैं? ओ अहमद भाई खुद ही बता दे, नहीं पता उस बेचारे को। अबे उसको नहीं, मैं चैट में पूछ रहा हूँ, मैं चैट में पूछ रहा हूँ। हर्ष भाई कैसे? वेलकम। स्नैप, हाँ भेजो भेजो भेज दो स्नैप जितनी भी पड़ी हुई। लंबी हो गई थोड़ी अहमद भाई, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया ना, वैसे टाइम लग गया ना ट्रांसलेशन में, असल में time जो बात है टेंशन नहीं लेनी। फटाफट लेट्स गो। अबे शैडो अभी नहीं हैशटैग अभी नहीं चला, इस मैच के बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे हैशटैग, सही है ना? चलो भाई स्टार्ट करो भाई, लंबी क्यों कर रहे हैं यार ये इतनी? मुझे लगता है आप Pixel, what you trying to say bro? What you trying to say? पिछली स्ट्रीम का मैसेज मुझे तो लग रहा है 12। वही तो लग रहा है वाकई पिछले पीएमसीओ का या पीएमपीएल का मैसेज अब आया। ये मोटा कौन है यार? तुम इसको नहीं जानते यार। ये ब्रिजेश मोटा भाई। What is this behavior यार? Let's go। अली फैज कैसे हो? वेलकम टू द सीम। हॉट जूक्स है इसका नाम यार। रामू ये कंटेंट क्रिएटर भी है और ये कास्टर है। ये दूसरा जूटे है दूसरे का नाम। वालेकुम अस्सलाम अरहम भाई, यू आर स्टिल अलाइव? ओके अल्हम्दुलिल्लाह A1 जबरदस्त में। ओके अबे अरम वो पता है पूरी लॉबी उनकी थी, हाई फाइव प्लीज। नीचे वाला स्क्वाड भी उनका था। हाई हाई फाइव। क्या क्या खा के आए हो? ओह कीमिया। एन हाइपर वाले किधर जा रहे हैं उस्ताद? लेट मी सी। ओह डाउन इन दिस एरिया। अभी ओवरऑल में कहाँ पे खड़े हैं मतलब? सेकंड नंबर पे आ गए हैं, एक पॉइंट से फर्स्ट। ये देखो ना, फर्स्ट वालों के 162 हैं, हाइप के 160 हैं और अल्फा के 158 हैं। यानी 2-2 पॉइंट से, सारे 2-2 पॉइंट से। टॉप 4 वाले 2-2 पॉइंट से आगे पीछे जी। फर्स्ट पे कोई और एलिमिनेट हो गया। अपनी काली जुबान अपने पास से रखो। वो जिस जगह पे उतने हैं करीब करीब कोई भी नहीं है, और वो सर्कल के भी करीब है। सर्कल बना ही नहीं। हाँ बन गया क्या सर्कल है? आईजी वालों के पास क्या सर्कल है? मालिक मैं बता दूं आपको, ये जो ब्रिज कैंपिंग होगी ना, अगर ये सर्कल उधर का गया तो बहुत गंदे ब्रिज पे मरने वाले हैं, बहुत गंदे मरने वाले हैं। वाईके ने अच्छा एक बंदा उनका ना क्रॉस चला गया था। इनको गेमिंग का ऑलरेडी एक हो गया। अब आए ना, अब आए फाइट पे। उस्ताद नोक फिनिश। बचा लिया बे अपने बंदे को। ये भाग क्यों रहा पीछे? इनको का लास्ट रहेगा, वो भाग रहा पीछे उस्ताद। सबर करो, मुझे भी लाइव पे वो। अबे इनको का लास्ट बचा बे, इनको को जाना चाहिए उस्ताद। इनको भी कंपीटिंग में बैठे हुए हैं। क्या रिफ्लेक्स मारा बे इनको वाले ने, बचा लिया अपने आप को। I was just gonna say AK Iron Sight. It's probably one of the most satisfying weapons to get a knock with at distance, right? You can barely see anything with that Iron Sight, but you just laser. कहाँ से हो भाई आप? मैं कैलगरी कनाडा से हूँ सादिक। कमेंट्रीज ओपी बॉस।
उस्ताद सैनहॉक के अंदर थर्ड पार्टियां ना चले। अबे हाइप वाले फौरन से मूव करना शुरू कर दिया इन्होंने ब्रिज के करीब। रोटेट मार रहे हैं उस्ताद, फुल टाइम रोटेट मार रहे हैं हाइप वाले। अगर इन्होंने ये वाला घर ले लिया राइट साइड पे टॉप वाले, उस्ताद ये काफी किल निकालेंगे। चिकन का नहीं, मैं कसर लेकर किल निकालेंगे। इंटेंस वालों का देखना पड़ेगा। इंटेंस वालों को इस गेम में पॉइंट अगर ज्यादा निकले तो उनका ज्यादा अच्छा चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी 2 पे वो उस्ताद क्या कह रहे हो? ये बुलेट रजिस्ट्रेशन है क्या? ये शॉट ले गया था भाई। ये रिप्ले था, बस ले गया ये गंदा। लूपस वाले भी उस्ताद ब्रिज होल्ड करके बैठ गए हैं। ये कर क्या रहे हैं लूपस वाले? एन हाइप वालों ने कर क्या रहे हैं? एन हाइप वाले घूम ही रहे हैं अभी तक उस्ताद। रुक गए कंपाउंड पे रुक गए। लूप्स वाला जाएगा, लूप्स वाला एक जाएगा। लूप्स वाले को अगर यहाँ पे पकड़ा दे विल डन। लूप्स वालों के लिए गंदा सीन हो गया यहाँ पे। यार उधर लेके जाओ उस्ताद। Try to make his little pathway into this next zone. Every single team has already left their area and have full sent it in this direction. One team in particular that is still doesn't have anybody even close, right? It's Alpha. निकल गए वे लूपस वाले। They're like in the blue by now. All the way अच्छा हाइप वाले ऊपर हैं टॉप पे। एक इनका शाना पीछे है। The top 4, the other teams out of the top 5, I mean, they're all on the northwestern island already. Intense game in hyper loops. Influence Kemen, they've all made a successful rotation. पकड़ सकता है, तू पकड़ सकता है इनको। अच्छा ब्रिज कैंप कर रहे हैं, लूप्स वाले ब्रिज कैंप कर रहे हैं। In this direction, and they've executed it really well so far. They got a lot of high ground, but they got to watch out for teams circling on in. QZZ on that off angle is gonna probably head over to his squad because All Glory Gaming is mighty close, circling, trying to find a spot where to go, but they're getting pinched big time. Actually, this might be a vehicle explosion. One shot left. Ooh, barely make it out alive. Wow. Yeah, they were pinched between loops and in hyper. उस्ताद गाड़ी फटने वाली हो बंदे की, ये मुझे बताओ पहले गाड़ी फटेगी या पहले बंदे की फटेगी? Making good rotation in. That just makes things a lot more hairier and sticky for the teams around the center zone in hyper. BGMI IND नहीं स्पैम नहीं करो जानी। It is the finals. The last day, they're in second place. नहीं ये नॉर्थ अमेरिकन टीम है ना, इसमें सारी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन और ब्राजील की टीम है इसमें। ब्राजील की टीम है। स्पैम नहीं करो यार जानी, स्पैम नहीं करो। It's a double-edged sword. Sometimes it works out beautifully, and other times it's just devastating for their squad. So Z Pro Gamer, what's up, bro? Welcome to the stream. What I'm thinking is, N-Hype ने एक किल निकाली, आराम से खेलें, यहाँ पे किल निकलेंगे इनके। N-Hype का कौन सा नॉक हुआ है? अकेले वाला नॉक हुआ है या जो? अबे इनको मूव करना पड़ेगा हाइप वालों को। Intense game right above and hyper. This is why we talk about this so much, right? This is their zone. This is their map. यार इधर इनको आना चाहिए था हाइप वालों को। They don't get knocked and they should be able to steal points like crazy. Yeah. This new circle shift, by the way, huge. It doesn't look like a big change, but it is actually a huge shift in my opinion. Immediately, the western side of that northwestern island, not much in play. So you see these wild rotations. No. अब भाई। They realize there's a good chance it's going to end around the east. तो समझ भाई कैसे हैं? Intense game, so they're making this wild. माइक तंग कर रहा है मतलब मैं तो ठीक हूँ। Why? वो USB उसको गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लिया? दिली हो गई ना। ओह अच्छा। अच्छा। समझ गया ना मैं भाई, बहुत दिली हो गई। वही तो
इफ यू नो यू नो। उसामा इसको थोड़ा पिंच करो ना, सही हो जाएगी। यार मैं ना अहमद भाई, लेकिन आगे जो पोर्ट है वो भी जरा हकीम से राब्ता करो, सेट हो जाएगा काम। पहुंच गया अबे। वो नेड उसने बड़ा गलत किया। ये आई नेड मारते हैं क्या यहाँ? हाँ सारे 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 आई नेड मारते हैं यार। एन हाइप वालों ने बहुत गंदी लोकेशन ली, बहुत गंदी लोकेशन है ये वाली। सैनहॉक की मैं कहूंगा सबसे गंदी लोकेशन जो इन्होंने ली है ना वो है, क्योंकि उस पे टॉप पे रिच पे अगर एक भी टीम आ गई तो ये गए, इनसे निकलना मुश्किल है, इनसे निकला ही नहीं जाएगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? फरूक भाई लव यू, अरे लव यू टू। कब होगा PMWI? आई थिंक जुलाई में है, जून के एंड जुलाई में है। लूपस वाले भैंस क्या बड़े होल्ड करके, पूरा होल्ड करके। एन हाइप का फिर एक नॉक। गंदी लोकेशन है यार, उनको मूव करना पड़ेगा। 2v2 का खेल रहे हैं लेकिन गंदा लोकेशन। पैंथर को अंदर बाहर कर दिया फ्लमिंगो वालों ने। लेट्स सी। ये मैं बात कर रहा हूं ना, अब ऊपर टॉप पे जितने भी हैं, अब ऊपर जो है आईजी वाले वो भी ऊपर से उधर से पैंथर वाले हैं, ये भी, ये अब नीचे इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सारा का सारा हाइप वालों के लिए। अब ये इधर भी है इनके पास, आईजी वालों के पास इधर से भी ये प्रॉपर व्यू है इनका, और हाई ग्राउंड है, इधर भी हाई ग्राउंड है, और राइट साइड पे उधर एन हाइप वालों के ऊपर भी हाई ग्राउंड है। वो गंदी ऊपर वाली रीच है यार। ये लास्ट सनहॉक वाली अगर स्ट्रेटेजी अपना लेते ना, टॉप पे रह जाते, इट कुड बी रियली गुड। अबे एन हाइप इस तरफ बहुत अच्छा था यार, बैक साइड पे चले जाते। ये जिस साइड पे आप गए, 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5 स्क्वाडों के दरमियान में है उस्ताद ये। अरहम की बात कहीं सच ना हो जाए भैंस के, क्योंकि सर्कल में आ गए, सर्कल में आ गए, लेकिन 5 स्क्वाड है भाई, 5 स्क्वाड है। अबे मूव नहीं करो, उधर ही रहो यार, मूव नहीं करो। गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे, वही तो देखो यार। Yeah, they're way in the zone. Are they going to commit to fights right now? Just go for the points. That's my question. Let me ask you this though. Back to what you were saying about intense game taking the Panthers position right now. Should they take it now or should they wait, gatekeep squads on their way in and then take it later? बहुत गंदा लूपस वाले खेल रहे हैं यार। 2 टीमें ये लड़ रही हैं। अभी ये थर्ड पार्टी करके किल निकाल से, लेकिन वो दरमियान में रीच है। अब इनसे कॉल पे बात कर रहे हैं क्या? हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो आज नहीं, वो कल, आज मैच स्टार्ट होने से पहले इनसे की थी। इनको मैंने बोला था कि ध्यान से जरा खेलना, आज ना चिकन निकालना है, लेकिन ये फिर चिकन पे नहीं जा रहे उस्ताद। सबके 1-2 1-2 अभी तक जो है ना, वो नीचे वाली टीम्स के अगर देखे 2 3 3 3 गए, 2-2 गए। लूपस फिनिश मार लूपस वाले को। गया नाइस बे, लूपस वाले आउट। तो उसकी पेटी के ऊपर गोलियां चला रहा है बे। 87 वाला है ना? हाँ इनकी टसल है, इनकी टसल है उस्ताद। पानी के अंदर इधर तो चल रहा है। 87 वाले गए, जोन में नहीं आने देंगे बेटा तुझे, गलती कर दी तूने। उठा लेगा अपने बंदे को, आई थिंक उठा लेगा। नीचे रहे, कवर है, उठाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी उस्ताद। इनको कोई बताता नहीं, HDR में करोगे तो आपको दिखेगा। पानी के अंदर बंदा गए, आई नीड उस्ताद। गया मैंने बोला था ना, गया ये।
अबे क्या गंदा इस बंदे ने पुश करके निकाला बे। नॉक है, नॉक। क्या अपने बंदे को बचा पाएंगे? जोन के बाहर चल जोन से गया नहीं, एक को उठा लिया, एक जोन से गया, बचा लिया बे अपने बंदे को। अबे भाई क्या स्प्रे मारा है 87 वाले ने। अबे ये बहुत गंदी जगह ये वाली, बाहुबली वाली, ये बाहुबली वाली रिजी इनको हम बोलते होते हैं। बहुत गंदी रिजीज है ये वाली। विच टीम यू आर सपोर्टिंग? एन हाइप गेमिंग। Right now, Jukes, there is more landmass on the eastern side of the zone than the western side now. The Alpha 7 is screaming tears of joy right now. Because they're going to farm all the people coming in. They're going to farm everybody. I mean, Alpha 7 fans unite. You couldn't have dreamed of a better hardship. अबे आज तो पेटियों के ऊपर मार रहे हैं गोलियां भाई। It's technically on boot camp, Sute. वो दोनों की पेटियों पे मार। हाँ दोनों की, उसने नॉक फिनिश में है दे दिया ना, वो पेटियों पे मार रहे हैं उस्ताद। आज सीन ही कुछ और चल रहा है। अगली दफा नहीं खेलेंगे अहमद भाई जिस तरह। इनकी डिवाइस अच्छी हैं उस्ताद, उनकी डिवाइस छोड़ो, उनके इंटरनेट सब कुछ अच्छा है। अबे गंदा सर्कल बना बे, पानी के उधर और पानी के उधर। मुझे क्या लग रहा है कि लास्ट सर्कल पानी में, अबे लास्ट सर्कल पानी में बन गया, बहुत मजा आएगा। इन्वेंटरी वीडियो कब आएगी यार? इन्वेंटरी आप देखना चाह रहे हो, बना देंगे। बहुत टाइम लगता है यार इन्वेंटरी की वीडियो बनाने में, और हर चीज को कवर करना मुश्किल हो जाता है। It's going to make things really difficult for them. Look at Alpha 7. They're just giggling right now. Oh, yeah. ओए You have to be careful, though. If they're not रॉ वाले गए। 100% on point, एन हाइप ने यहाँ पे एक किल अपने नाम पे किया। thumb bit in the back. There's a lot of swimmers लूपस वाले भी आउट है ना? looking like लूपस वाले 5वें नंबर पे हैं इस टाइम पे। be fine. So, and Hyper's still in this zone, right? Alpha जिंदा है 7 लूपस वाले, मर तो गए थे। लूपस वाले मर गए ना, मैं उनका देख रहा। 5वें नंबर पे वो आ गए नहीं टोटल। they're swimming on the Alpha 7 side of things. हाँ लूपस वाले डेड है 0 पॉइंट के साथ। I cannot believe this happened. I mean, this is crazy. मैन दिस इज क्रेजी सर्कल। इमेजिन लास्ट सर्कल पानी में बन जाए। Everybody, get some hype in the chat right here. All Glory Gaming looking to continue a good उस्ताद क्या कह रहे हो? elimination so far. बग्गियां ऊपर से नीचे गिराई जा रही हैं। But they have to defend against a tense game. एलिमिनेट होगी, YKG भी एलिमिनेट होगी। Zone, and this one's starting to hurt. Ooh! That's why I wish they took in that hill earlier. They would have had more time to work the zone, but now it's the blue zone cutting them out. 0 elimination points. Why ओ भाई साहब Cover for Intense Gaming to the worst zone ever. बच जाएगा। Intense Gaming. Intense game. गया उस्ताद। ओ सर्कल से क्या फ्री का किल दे दिया भैंस की आंख में। फ्री का किल दे दिया। ओए व्हाट नाइस कमबैक, लेकिन अपन बंदा गवा दिया बे तुम लोगों ने। I'm still in shock with this zone. And Hyper, they've had the most. इंटेंस गेमिंग भी गया। Now they're forced to get the elimination points. व्हाट नेट से नॉक दिया। नहीं शॉटगन से। He needs this knockback. व्हाट नाइस। Such crazy range. GK first with the most clutch shots. He's got to hit this one against straight. He does, but ओह नाइस। बंदे को अपने को बचा, बंदे को बचा। for in hyper, but that's going to hurt big time. That's a win in my book. Usually in Hyper, I feel like you see them lose those more often than not, but they are in another form right now. Great job for them. Alpha 7 has secured the उठा पाएगा अपने बंदे को कि नहीं उठा पाएगा? Flamingo and Alpha 7. Flamingo. लग रहा है इसका, लग रहा है उस्ताद। इसने उठा लिया। अबे उठा के ले जा उसको, शाने बचा लेगा अभी। ये कर क्या रहा है? स्मोक कर रहा है शायद। नहीं स्मोक कर दिया लेकिन कुछ कर रहा है। गाड़ी ला रहा है सर्कल में। और नहीं रिवाइव नहीं किया उसने, रिवाइव नहीं किया। तोड़ गया।
अबे उसको नेड तो कर देता ना, नेड कर देता उसको। अबे यार A7 वालों की तरफ से हो गया है। Alpha 7, they curve bullets, Jukes. Oh, they do want Yeah. They curve Shit. already taking a bunch of points. अबे सीधा आगे वाले पत्थर के साथ आके लगा लेता, बड़ी वाले पत्थर के साथ। Why not? ओ भाई साहब, We don't need to landmass in the fight. नंबर 1 पे आ गए उस्ताद इस टाइम पे, 171 पॉइंट के साथ इस टाइम पे किल अच्छे निकाल लिए। shifting away where Alpha अबे A7 वाले चोदू क्या कर रहे हैं भैंस की आंख पे, इन्होंने दूसरी साइड पे ले लिया ना। Crazy. It's Alpha 7's game. It is Alpha 7's game. चारों के चारों अलावे मालिक 4v4 की फाइट है, FLA एंड A7। Predicted Alpha 7 to win this game. क्या लगता है A7 और FLA? चैट के अंदर बताओ A7 और FLA। When I was telestrating at the very beginning I will say A7 match, I was like, क्योंकि वो सर्कल में वही है, ये लोग सर्कल में नहीं है, station to make, and ये लोग सर्कल में नहीं है। A7 का चिकन है बे, circle gods are like, you know what? उनको किल नहीं देने चाहिए यार, उनको किल नहीं देने चाहिए। 5 किल है इनके A7 के, Let's just give it to them this one. ज्यादा पॉइंट नहीं देने चाहिए उनको। Tough fight to telestrate right here, huh? A7 यस, पानी के अंदर उसने नहीं, किल नहीं दो, किल नहीं दो, किल नहीं दो, किल नहीं दो उस्ताद, किल नहीं दो। Crazy shots. Flamengo, what do you do here? You drive off the mountain, right into the water. Oh, नो नो ब्रो, वाई किल क्यों दे रहे हैं ये चोदू? 4 points to Alpha 7. दो Oh, knock it's हो just गए। too easy. They do get one knock back, but it's going to be easy revive, and Flamingo down to 2 players. I don't think they could get the revive on that third. And, oh, 2 knocks, though. That gives them some space to work with, but not much. Gigante. Oh, उस्ताद पानी के अंदर ही swan dive. I give that one a 7 out of 10. Zute. Form was pretty good. नाइस नाइस नोक वे FLA की तरफ से। Could. इमेजिन करके अगर FLA वाले ये चिकन निकाल जाए। Go now. Do it. Can they get it done? They have the knocks. They have the Yeah, it's a 2v3. I don't think Center Texas is going to get picked up here. Flamingo is going as aggressive as possible right now. Carrillo forced to back off. Uh-oh. He's on fire. Flamengo. Fire. Forged in it right now. As 2v3 की फाइट है, क्या अपने बंदे को उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? आई डोंट थिंक सो ये उठाएंगे। push this. I mean, they have some pretty decent shots on as Gigante sneaking up on the ridge line here with a उठा लिया 4v2 की फाइट है। Alpha 7, yeah, they're just like, okay, A7 let's get off forward. वो सर्कल में वो भी आ गए उस्ताद, यू नेवर नो। Looks like they do have the time to यार वो अपने बंदे को उठा सकता था यार, एंड हाइप वाला It's gonna उठा के हील लगा के आराम से निकल आते। गाड़ी थी, गाड़ी पीछे थी, उतनी देर में ये लोग इनसे फाइट कर रहे थे, वो दरमियान में उधर से निकल आते, nail in the coffin. थर्ड की पोजीशन के पॉइंट उठा लेते। Revo just decided to take this off लेकिन 6 की लीड ले गए अभी पॉइंट्स में ना। the insurance plan right here. ये दोनों टीमें नीचे हैं, A7 वाले Revo somehow. और फेल्मो 8वें नंबर पे है, और A7 वाले कितने नंबर पे? It's like one in the same place. आई थिंक A7 वाले टॉप 10 में थे कहीं। The audio, right? Those nades blasting off in your ear makes वो A7 वाला भी स्नीक अप कर रहा है पीछे से। the snaking Revo. It's pretty much done because Alpha 7 get the zone again. ये काम खराब करेगा। Each other get spotted. He got spotted and ओह माय गुडनेस उस्ताद हमने So played that Oh, that so nade. well, but then he got That nade okay. does it. Santa Texas said, "Hey, all right, yeah, we'll give you the point. We'll take the chicken dinner, baby." Nice. Match number 2, the last. लेट्स, क्या नेड उसने झोली के अंदर फेंका बे। You know, I think Revo, that was planned. Revo was like, you know, I've been MVP so many times. I'm gonna शीश ब्रो, जी give them some points. I'll sacrifice दो स्नेक them now where they are. Bam, that nade lands right in. Just straight threaded that needle. Beautifully done right there. ओह भाई साहब, दैट वाज क्रेजी, दैट वाज लिटरली क्रेजी। Championships, right? You need to be playing perfect. नो NHP नहीं, आप चेंज करेंगे कोई दूसरा करेंगे। Was it skill and luck in that match for Alpha 7, Zute? What percentage? Be honest. Hashtag. I was like 80% luck. But, you know, like, they deserve it. They
they deserve. Yeah, sure. I mean, that remains to be seen, right? That remains to be seen. But they got it, right? They got it. What more could you really ask for in that kind of situation? The most ridiculous zone shift. Just हेडफोन उतार के बैठा हुआ है. लेट्स गो गाइस. पॉइंट एक दफा देखने देना इस मैच में कितने कितने पॉइंट मिले हैं, उसके बाद फिर गिव अवे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वो नेड आया है, झोली के अंदर नेड फेंका है. इनको थोड़ा सा अपार्ट होना चाहिए था, राइट लेफ्ट पे हो जाना चाहिए था, लेकिन वो दोनों बिल्कुल इकट्ठे हो गए थे. शॉटगन एक उस्ताद फिनिश. आज दस्ती फिनिश किए हैं इन्होंने. जिसने भी मारा दस्ती फिनिश किए हैं. हाँ, बहुत टफ होगी ये तो पोजीशन. ये वाला अच्छा किल उठाया था इसने, 87 वाले ने. एनएचपी का क्या बना? ओ अबे ओपन पोजीशन पे मरी, लेकिन ओवरऑल पे फर्स्ट पे आ गई है. ये गंदा इन्होंने किया, बहुत गंदा पुश इन्होंने किया. बे किल इधर उठा लिए थे, ये रिवर्स में किल उठाया था. बहुत उस्ताद, वो टॉप वाला जो उठाया था ना, वो बहुत प्यारा उठाया था. अबे इसको लेफ्ट पे नहीं होना चाहिए था, उधर ही लेफ्ट पे हो जाता, लेफ्ट पे होता, राइट पे ना होता. पॉइंट्स अभी आते हैं. एनएचपी नहीं है यार, ना फेसिट है ना एनएचपी है. सबर कर लो, अभी गिव स्टार्ट करता, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा. रुक जाओ, अभी जितने भी छाने हैं. And you don't pick Alpha 7 to win. Cameron Davis, that's exactly what you did. Walk me through what was going through your head there. I picked Alpha 7. No, you picked okay. I picked Alpha 7. He picked okay. You picked it. No evidence of it. No team selection confirmed. Take a look at the match training. As you see, yeah, he deleted it. Trying to cover it up. Oh भाई साहब, let's go यार. ओपन गिवअवे कर रहा हूँ for 600 UC. hashtag Farooq in the chat. Let's go. अबूद भाई कैसे हैं? वेलकम टू द स्ट्रीम. ओ भाई साहब, 9 एलिमिनेशन, 19.87 है. फलमैगो ने यहाँ पे 13 पॉइंट्स, 12 पॉइंट जो हैं वो ऑल ग्लोरी AGG, और उसके बाद एन हाइप वालों ने 11.7 एलिमिनेशन के, और 4 यहाँ पे जो है वो पोजीशन के. दैट्स अ गुड वन. अगर ये सेकंड पोजीशन पे आ जाते 6 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर थर्ड पे भी आते 5 पॉइंट, एक और पॉइंट मिल जाता है इनको. बट राइट नाउ दे आर ऑन द टॉप, सो लेट्स गो गाइज. #FAROOQ. लूपस के इस गेम में 0 निकले हैं ना. लूपस के साथ हुई बहुत गंदी है उस्ताद. क्या कह रहे हो उस्ताद? एलिमिनेशन 3-3-1-0 किल निकाले, क्या कह रहे हो? QZZ ने यहाँ पे 4 किल. बहुत प्यारा खेलता है ये QZZ. देहाती शोक कैसे हो जानी? वेलकम टू द स्ट्रीम. अगर आप प्रो लीग खेलते तो अपना क्या नाम है? एनएचपी में डिपेंड करता है अगर किस टीम है, लेकिन फारूक रखता है ना, अपना नाम रखता. आई विल ऑलवेज गो विद माय नेम. या अहमद में भी, फारूक या अहमद दोनों में से एक रखता. आज आपने वो सितारा इम्तियाज नहीं लगाया आगे? निकाल लगा लेते हैं आज सितारा इम्तियाज. पड़े हुए इधर मालिक. क्या सितारा जुर्रत कौन सा है? निशान है. निशान है तो बर्थडे के बाद. सितारा 14 पट्टी. हाँ, सितारा 14 पट्टी. क्या कह रहे हो? नहीं, अब कहाँ से वॉलमार्ट? क्या हुआ? मजे वाला दिखाता हूँ आपको. निशान है इधर जो है वो मरने के बाद मिलता है. आप ये बात आज पता लगी? हाँ, आपको नहीं क्या पता? इस वजह से निशाने हैदर है नहीं है. मर गए अहमद भाई, फिर किधर लगाया? शहादत के उसकी फैमिली को भी दिया जाता है ना.
out of it. तो So फिर which is मैं भी why I'm like really फिर happy क्या about फायदा हाँ, फिर क्या फायदा? about being able to turn अबे कुछ कुछ ये बैचेस कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन ये इस तरह की शर्ट पे लगाने वाले नहीं है। लाइक शर्ट अगर डार्क कलर की हो तो फिर उस पे लगाइए। टी शर्ट है ना ये खरीदे कहाँ से अहमद भाई आपने? बस आज सब कुछ ये ही मैं पता भी है ना स्ट्रीम ढूंढूंगा हो ऐसे रही है बस स्ट्रीम हो रही है कब अबे प्यारे लगते हैं। अल्फा 777 अबे अल्फा 7 नंबर 1 पे अबे। अच्छा वो चिकन निकाल गई है ना, चिकन निकाल गई है ना, चिकन निकाल दिए, चिकन निकाल दिए उस्ताद, चिकन निकाल गए। क्या कह रहे उस्ताद, क्या पॉइंट डिफरेंस हो गया इसके अंदर, 6 पॉइंट का डिफरेंस है। दैट कुड बी रियली नाइस। A7 और NHP एक गेम A7 का खराब हो गया और एक गेम एकर का अच्छा हो गया ना। अबे ये गंदा, इन्होंने बहुत प्यारा चिकन निकाला ये वाला अल्फा ने। इनके किल्स भी अच्छे किल भी अच्छे थे, हाँ किल तो निकाल लिए थे, क्योंकि ये जिस साइड पे ये थे सर्कल उधर शिफ्ट हो गया। अगर सर्कल उस साइड पे शिफ्ट होता तो देर बट भी हाईली चांसेस के उनका होता। ये अमीगो वाला का, अमीगो किधर गए वो? ऑल ग्लोरी कौन थे अमीगो? इन्फ्लुएंस वाला इनकी दो टीमों का इन्होंने बनाया हुआ साथ। हाँ वो एक कंबाइन किया हुआ, एक जस्ट इन्फ्लुएंस, एक कंबाइन किया हुआ है। What the fuck चैट में कोई है डेल्फिन का प्यार? कौन है भाई? आया था कल या पता नहीं कल आई थी, डेल्फिन की बीवी भी आई थी कल। वो नहीं देखी मैंने। प्यार समझ में आता है, बीवी किधर से आएगी भाई? ये तो वो देखा कौन है फेक आईडी से नहीं 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 नहीं, कौन है फेक आईडी से लड़की भी है, तो इधर आओ ना जरा। जो बात है भाई Now with Alpha 7 being in first place in a team that's usually comfortable in that spot, it could be scary. कितने मैच बाकी हैं? मतलब 3 नेक्स्ट मैच नहीं, चार मोर। नेक्स्ट मैप पर एंगल है ना, 6 टोटल 6 मैचेस होते हैं यार। लाइक्स लुक्स का गोल नहीं है, आप वो लोगों ने लाइक नहीं करना। कल हमने पहला हाँ कल मैंने पहला गिव अवे जो था वो 250 लाइक पे किया था। आज दूसरा गिव अवे भी जो है ना वो अभी 300 लाइक नहीं हुआ यार साथ। लेट्स गो फॉर 350 लाइक्स। 350 पे पिक करेंगे या 350 पे पिक करेंगे। I don't want to see N-Hyper move up to first place just yet because I feel like that is a team that can definitely choke. Okay, let's over to our commentators then to get us into our very first. यार ये कल भी बात करें कि एनआई वाले अगर फर्स्ट पे आ गए तो ये चोक करेंगे, लाइक इनके लिए टफ हो जाएगा पोजीशन होल्ड करना। सम टाइम होता है कोई टीमों के फर्स्ट प्लेस में आके उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पोर्ट्स के अंदर ये बहुत बड़ी बात होती है, इस पोजीशन होल्ड करना। उस्ताद मैंने बोला तो दस्ती जो है ना वो 30 किल बढ़ गए हैं यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर? 350 करो। शुरू हो गया रैंक। एक मिनट, नुमान अता, नुमान आपकी डीपी कहीं देखी लगती है यार। नुमान अता, I've seen you somewhere bro. नहीं अंकल ही होंगे, बट मेरा एक क्लास फेलो था उसका नाम नुमान था और उससे इसकी शक्ल मिलती है। ओह लेट्स गो 50 मोर लाइक्स है, उसके बाद मैंने हम पिक कर लेंगे। लेट्स गो गाइस, सबर करो आया। भूख लग रही है यार। The only question is, when it comes to Alpha 7, they've already created a little bit of a gap, right, between first and second. You have to really keep your eye on that because this team can pull out a 20-point game anytime, right? They can do it right here in this game coming up. So I think that you still got to keep an eye on them. What about those teams that are in that 5th, 6th place position? When do you think, Zute, it's time to start seeing them hunt down those top squads? Ooh, hunt down. Yeah, because it's meaning. Oh, I see what you're saying. So yeah, what you're saying is they need to hunt down the squad and get a decent amount of points to get that first place. It's no longer about just getting the win. It's about denying the points. Oh, okay. Probably starting in the next match.
Okay. Because it's so fifth place is like a 20-point gap, meaning you just need a chicken dinner to catch up, and then you're just right there next with them, unless if they get a second place finish, right? But I think at a 20-point gap, you should be looking to just getting a really good game for yourself. Once you're in that fifth place spot, and the gap between fifth and first is like 30 plus points, and you know that first place team, you know, they're a consistent, strong team. Then you got to think about, you know, the anti-strats, potential hunting them down. You know, remember their pathing rotations, set up a trap. I think that's when you need to do it. And I like that you bring it up, Jukes, because this tournament in particular, it's going to be even more important because there's only one qualification spot to the next one. Usually there's 4 to 5, meaning like you don't need to hunt down a team, but this time around, first place is all gets it all. 5 लाख होने में इतना टाइम लगा दिया यार तुम लोगों ने. Just 5 more likes and we'll choose the lucky winner who will get the 600 UC. But courtesy of PUBG Mobile. It could be Inco's time to really do that. I mean, because they're 33 points, 33-point gap. So that's going to be tough to cross, even if you have a good performance here, because with this new point system, 10 points for first place. Let's go. One more like. Slim, right? Getting double digital elimination points is even harder. So ऊपर दिखा रहा है मुझे अहमद भाई. right now you're going to have क्या हुआ? 3 लाख ऊपर दिख रहा है मुझे. it's going to be hard because they're हो गए. कहाँ पे ऊपर हुए हैं? कम हो गए. अब कम हो गए हैं 2 लाख. यार ये क्या बात हुई यार? ये कम किसने किया मुझे ये बताओ जरा. जिसने डिसलाइक किया दोबारा लाइक करो. अबे यार मैं विनर ही नहीं पिक कर रहा. 4 कम हुए, मैं विनर ही नहीं पिक कर रहा भाई. it's ridiculous in my eyes, right? You have to be हो गया एक बंदा शांति कर रहा है, माइनस प्लस कर रहा है, वो देख माइनस कर गया. मैं पिक ही नहीं करूंगा जब 350 नहीं हुए. शानपद ही नहीं करो. गाइस असल मजा है तुम इसको 350 को 300 पे ले जाओ, ये मजा है ना चेस असल. अल्लाह इसको देखे अहमद भाई. ऐसा तो दुश्मन भी नहीं सोचता. हमारा एक दोस्त है उसके ना मतलब एक मिनट किक मारने की ऑप्शन किधर है? किक मारने की ऑप्शन किधर है डिस्कॉर्ड से इधर? ऑल दबा. ये क्या बात है? ऑल दबा करें ना ऑटोमेटिक किक हो जाएंगे आप. शान है. चलो यार क्लोज गिव अवे एनपी का विनर बूटा. अब बोटा कौन है जरा जल्दी से बताओ. ये कौन सी अपनी सेकंड आईडी से आया हुआ बोटा? डाउट है अहमद भाई. बोटा इस बंदे पे डाउट है. ये वही तो नहीं जिसके आपने कल मुझे भेजी थी? नहीं ये रामेज होने का शक है मुझे. मेन आईडी वो भी है. अभी पता चल जाएगा. मैं अलाउ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जितनी देर में 2 मिनट का इसके पास टाइम है. 2 मिनट के बाद अगर ये अपना मैसेज नहीं करता तो हम कोई और विनर पिक कर लेंगे. ठीक है ना? और एंगल हमारा स्टार्ट हो चुका है. लेट्स गो गाइस. You're right. Yeah, the inverse goes for the top teams as well. लेकिन किया है उसने मैसेज हाय हेयर लिखा. Something different and predict a team that could possibly try to cripple them, you know, into this game going forward. So when it comes to Alpha 7, इन गेम नेम बताओ अपना बोटे. it's a really big important. चलो गाइस स्टॉप. आईडी भी बताओ और इन गेम नेम भी बताओ. उसका मैसेज आ गया बॉयज. मैसेज आ गया. If a team is smart enough to try and disrupt A7. अबे गंदा बहुत गंदा सीन है यार इसके अंदर. ये चिकन अगर एन हाइप का निकला ना उस्ताद सीधे 190 प्लस पॉइंट हो जाएंगे. एन हाइप वाले किधर जा रहे हैं? If a team puts them on deck right now and is able to steal a point away or even put some shots on them, it's going to make Alpha 7 so paranoid, and that alone could disrupt their play style going into the rest of this tournament. 100% agree. So this is where immediately the first 2 teams that I know is dropping in their respective positions. Intense game and Alpha. मुझे क्यों लगा एन हाई वाले फॉर्म वाले एरिया में जाएंगे क्योंकि दैट्स देयर प्लेस. एंगल के अंदर वो हमेशा हाँ एंगल के अंदर वो करते ही उधर हैं. सर्कल भी बन गया उस्ताद. इस तरह नहीं लिखो, इकट्ठी आईडी लिखो. इस तरह नहीं समझ आती. इकट्ठी आईडी लिखो, इकट्ठी आईडी लिखो बूटे. वो देखो बेचारा मेरे ख्याल से देख के लिख रहा है. इकट्ठी आईडी लिखो.
to rotate on. आप लिखोगे वो रिलीज हो जाएगी, लेकिन मेरे पास आ जाती, मेरे पास आ जाती। That is indeed. नुमान अता ने कुछ लिखा है मैंने। Inko, you wanted to see them do something different, target Alpha 7. Well, Inko, मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ भाई। maybe in the next match, we'll see them do something crazy and target. मैट्रिक के बाद मैट्रिक के बाद आपने क्या किया था, मुझे ये बताओ। We gotta watch out for इंटर किया हुआ है मुझे। इंटर क्या किया था आपने मैट्रिक के बाद? नुमान, some potential conflicts between. I don't think so. You are the same guy. What I'm thinking, but let's see. I hope we do see it here because you know, for those that don't know, पूरी आईडी लिखो ना बूटे। there becomes वो देखो स्टार अलिस्बा को आते भैंस क्या सारे भाई उसके बोलना शुरू करने, हेलो बहन कैसी हो, है ना, तलाक। and then we'll fight when it all comes down to the end of it. All right, that's why we don't see too many crazy hot drops here because it's just not worth it, right? If you want to be able to get first इंटर किया था hot drops, उन्होंने, मेरा एक दोस्त था, well, उसका नाम भी नुमान था, वो आपकी तरह दिखता था। that agreement has to go out the door, right? It's got to just say, you know what? All right, I get it. It made sense at the start. फिर सिविल इंजीनियरिंग, Right? Because it's नो, all about who's gonna उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उस्ताद। place here. I गलत am तुक्का looking मारा। नहीं आ रही पूरी आईडी, क्यों नहीं आ रही? सेंड करेगा तो आएगी ना, जब तक सेंड नहीं करेगा लिखेगा नहीं तो आएगी कैसे? आएगी नहीं कैसे, मुझे ये बताओ। एक पेपर पे लिख लो So they may be आईडी। looking to knock out Alpha और फिर 7. मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ अहमद भाई का, उस पर सेंड And कर I would देना। be really बस। surprised to see Alpha 7 go down that bridge here. 08 Yeah, इनके नेम क्या है तुम्हारा, ये बताओ। bridge. We're probably gonna wrap over to the east. I mean, Alpha 7, they got 3 bridges to choose from for a fast rotation, right? An intense game. We have seen this team, you know, be able to play in from the edge, so they're not like a tried and true. इन गेम नेम क्या है? इन गेम नेम बताओ मुझे अपना। निंजा So निंजा maybe निंजा निंजा। intense game can decide to play from the edge. कौन सा निंजा ये? Just to camp out and हाँ target यही Alpha नाम बता 7. रहा है ना वो निंजा, We'll see in a इन little गेम bit, नेम। but intense game. They're only like 14 points from Alpha 7. Let's We see. talked about it earlier. It's that 30 ये point आईडी है gap जो इसने where लिख you के kind of got भेजी to है, पता target नहीं ये है that नहीं। team सुबह and बड़ी get a मेहनत big की है win. लदीन For भाई आपने। now, in my opinion, they don't need to target बस। Alpha टाइम 7. आउट भी They मिल just निंजा गेमर तुम कल या परसों भी जीते थे एक, नहीं टाइम आउट तो नहीं मिला। तुम जीते थे ना निंजा, कल या परसों जीते थे एक। I mean, we talked यार about ये how क्या I बात thought है? Inco would be the team that ये should स्ट्रीम have लैब्स देता है आईडी लिखने पे employed टाइम that आउट। strategy. भाई Well, स्ट्रीम लैब्स they को landed टाइम all आउट the दो। way in no निंजा कल या परसों तुम जीते थे ना, जल्दी बताओ। So that is most likely not going to happen. चाहिए And, नहीं बताने का। you know, I think a lot of these teams are going to have different mindsets going into these last few games, right? Some of them निंजा मैसेज ही नहीं कर रहा भाई। should we go गाइस and बस कर दो, really खत्म try हो to चुका है find a फिलहाल। way to ये निंजा भाई, first कोई place, or आपको आपके यूसी आपके अकाउंट में आ गए, वहां पे जाके आप कोलेक्ट कर ले। secure the best we can. गाइस बस अब नहीं, बस अब इस गेम के बाद करेंगे, I think we're going to be really नेक्स्ट विनर इस गेम के बाद। win this फारूक tournament. के साथ लिख रहा है एक गंदे घर हैं उस्ताद, ये बहुत गंदे घर हैं ये वाले। The Panthers. पुश हो गया उस बेचारे We पे, see अकेला these क्या two करे। teams fight a lot. मैं बोल रहा हूँ ये गंदे घर हैं ये वाले। Nesquik goes नॉक फिनिश। Now, the big thing here is the elimination feed. That is info being blared out to the rest of the lobby. The closest team here is in Hyper, but they're still a bit of ways away. I don't know if in Hyper डेल्फिन का पंखा इतनी मेहनत कर रहा है सुबह से। party. But then again, डेल्फिन खुद किधर है? that fourth party is इधर ही हूँ भाई। especially this being the center. शारिक भाई दोगे कि नहीं? वीडियोस देख रहा है। Panthers ले लो securing अहमद that भाई। center ये क्या बात है बे? early, भाई taking पहली no बारी points to मेरी। the bank as well. Panthers, yeah, शाउट only आउट की 14 बात हो रही है plays. दो स्ट्रीमर्स Not से। gonna be able to get anything done leaderboards wise. ये बढ़िया है। But कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ स्टार अलिशवा, आप सुनाओ आप कैसे हो? synergy together. I talked to Nate a little bit this morning. See how he was feeling. Obviously, they're really bummed out with their performance so far, and said लपेटने दो, भूख भूख लगेगा। is what's really struggling. They just don't seem to have it in this tournament. So who knows? अहमद भाई क्या खा रहे हैं? Get it सीरियल। here at the end and hopefully rally them for future tournaments. Yeah, I think the biggest thing. उस्ताद दस्ती यही चीजें ही होती हैं, दस्ती डालो, बॉल के अंदर ऊपर से दूध डालो, आराम से खाओ बैठ के। Getting punished, which is in a way a good thing, right? You don't know When you're you are making married mistakes but you are single. अस्तगफिरुल्लाह। for it. पुलाव पड़ा हुआ है, उसको गर्म करना था। समो भाई आपके वाली बात याद आ रही थी, मैंने कहा छोड़ो यार। दिन वाले हाँ, That we need to fill up. Usually this दो दिन अभी एक दिन ही हुआ है। करने वाली गरम। हाँ, गर्म करने वाली। मैंने कहा अब रखूंगा प्लेट में डालूंगा, फिर गर्म करूँ, लंबा हो जाएगा, आराम से जो है सीरियल डालो। और है भी पोस्टर फ्लेक जानी। मैं पता क्यों नहीं करता, एक दो दफा करके लेके आया ना, तो आके रूम में आया, At the end of the day, मेरे लिए भी कर देते, उसके बाद से मैंने काम ही छोड़ दिया ना। you can look at this in multiple ये बढ़िया है वैसे। look at this as a huge loss. not डबल defeat, डबल but we can बंदा look at it जाके। as that learning experience, right?
just saying, okay. अपने लिए गर्म नहीं होता, किसी दूसरे के लिए भी करना है। first time here, you know, मेरे साथ नहीं होता भाई। Like I can't relate. What did we learn from this? How can we come back even stronger next time? And I think that's definitely the mentality. शारिक नहीं देगी वो। रामू कह रहा सर्फ खा रहे हो। हैं? क्या खा रहा हूँ? सर्फ। Why you think about that? रामू कह रहा है। ओह, दूध की वजह से कह रहा है। नहीं जानी, इधर खालस दूध मिलता है। इधर इस तरह की बकचोदी नहीं होती दूध के अंदर। Who is winning Rolex? Welcome to the stream. And hype is on number second, and the A7 on the number 1 right now. Just with 6 point left, 6 point difference. They have the A7 have 176 point, 177 point, I guess, and NHP has 171 points right now. Ooh, that's spray, bro. Extravagant splits when sometimes Rolex back spray in PMPL American. Let's go. Video is ready. have that brotherhood of squads, and I think that's really important here because we look at a team like Alpha 7 that's If we go back, the last game was intense. 177 per A7 and hype is like 171. And this is like 4 matches left to go. stick together, fix it. There is the chance. There is a chance for N hype. Let's see. Guys, hashtag Rolex OPY in the chat. Let's go. अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हो? I'm good अल्हम्दुलिल्लाह। हबीब भाई, आप सुनाओ, आप कैसे हो? Also really close by. We'll see how deep of a rotation make. Big thing for me though is N Hyper once again. They are center zone right here. You're gonna get their prime picking, but that's a lot of teams they gotta be careful of pushing into them. So इसमें जोन this जल्दी certainly छोटा हो is रहा है या a मुझे crucial लग रहा point है? नहीं, वो इन्होंने जोन की स्पीड बढ़ाई हुई है। right now, especially with there not being too much cover. I think they did two things. One, increase the zone speed, and the second thing is increase the zone damage also. You got get the edge of Gag. So the team doesn't like stay outside of the zone. क्योंकि loot 3 है, 3x loot है। इट्टे उठा के बैठ के बाहर बैठ के लगाते रहे मालिक। Looking, who knows? You might even see Pachiki's up. Panther 1 knock. Fun to see, right? Nice little urban finish to start things off. That'll make things that much more. Zone Pochinki भी shift हो। Doesn't look like one of the players from the Panthers gets उसाद पुचिंकी शिफ्ट हो, बड़ा मजा आएगा। लास्ट सर्कल इन द पुचिंकी। Ooh, it's gonna be sheesh, it's gonna be nice, tough. FLA just one. Okay, TP के दो किल किए, लेकिन एक बंदा भी लूज किया है। I mean, of course, they're rather TC 1 knock finish. with potentially less players, but we'll see how it plays out. रिजिस की गेम बहुत गंदी है यार इधर। research and they really I don't like the Regis game. could be here, right? So they know that YKG is going to be एन हाइप वाले क्या कर रहे हैं उस्ताद? गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं। a lot of success against them. इतना शौक है उस्ताद, मेरा एंगल लगा लो। नॉर्मल क्लासिक में इसके अंदर तुम लोग कर लो। Might be better for us to go. Oh my goodness. TP is done, bro. That could be 100%. Ooh, Dub Slayer's taking shots. saved, bro. He saved. Right now. What a save, man. What a save. Very nice. Back and forth. What a save from the Panthers. Quite a bit. Both of them sacrificing a player to each other. Looking at the map, not seeing any. Do you see the spray? Zero recoil spray, bro. You got N Hyper holding. I also have the same spray. Rolex and me, we did Rolex and me, we did some trainings together. Right, Rolex? That edge. You know, Inko. Hyper only over chance. Yes. Really need to start changing You thinking their the same strategies. Looking thing? like they're just trying to Yes, yes. Obviously, नहीं हमने की हुई है कसम से। zone on that southwest side. Yes, See yes. right here, next circle. It's gonna be a big one. That's the only thing. Rest of the all team is like Latin American or like Brazilian. Like I don't know. They don't even speaks English. Circle shift jukes. Where do you think this one? You know, Rolex. The other day we got really bad luck. The Dino Ground event. The one player we got, he was from I think he speaks Spanish and he doesn't even understand the English a single word. And on the second hand, the other guy he do understand, but he wasn't on like Discord for the 2 games. And then Mushka has some problem with that layout, something like he's
too much loud layout in his headphones. So he got the problem, and I was the only one who was going through, and I was not like the playing on iPad. It was the only for the tournaments I play on iPad, but it was good one. They have some time to work with. Exactly. That Nusai went. Teams on top of the hill create a buffer zone for them. They're kind of using the other teams to their advantage. You know, literally when I saw like on the brief, okay, I'm playing with you. I say, man, this is over. This tournament's over. That's why I messaged you right away. Inko is done. Ooh. Knock, finish, bro. Mounting the push, I believe. No, Panthers defense. And He's dead, bro. oh no, he's got a teammate. DBS is coming through. The Panthers getting cut to shreds by these DBS. Is stellar. He can't find it. Now it's down to the 1v1. To be honest, DBS should be banned in the. DBS should be banned, man. Should be banned. On the first day, Rolex, if like 100 people died, like. Right onto Dope Slayers. Third party could be coming out any second. No, third party's already there, Jukes. It's already there. Ooh. Just like that. You gotta get that fight done quick. QZZ has to be able to clutch this up for his team. It fears with that knock. Oh, it is not looking good for Hyper, and I think they're gonna go ahead and tailor off. Yeah, Kindness is tucking tail. I'm not sure if that was the play. Yeah, I don't know. That was like, I'm happy to see Hyper, you know, flip that aggression. Why you did that and hype? Particular huge question mark for me. Might be the nerves, might be the pressure. Inko down to their last one. And Abete, I think he's all but done. What a bad move, man. What a bad move. So a team that is just kind of hoping for the luck of Alpha 7 doing bad. Yeah, it's going to be a tough bet for them. I think you got to really take that luck into your own hands. Make your own, you know? Try to take them out early and make a play. But The fighting in the open is always sucks. Especially with the DBS. Everybody is holding the DBS. I do remember the... You're dead, bro. From his own molly. Goes out. Burn to a crisp. Inko out. Next circle. The first day, almost 90% of the kills was done by the DBS. And the same thing happening today. Huge favorable shift for Loops now. They got a chance to put on इतनी DBS मिलती कैसे हैं अहमद भाई हर स्क्वाड में हर बंदे 3x loot है ना 3x loot है ना They only pick the DBS or M4 or UMP. You're dead, bro. 87. Nice nade. He's dead. I remember this rage. Rolex, you remember? You just knocked bot Jacob Gaming with the car, right? That was a good watch, man. And he was yelling, Rolex, Rolex, that's Rolex, that's Rolex. Hoppy cocktail. Har kisi ne only DBS. Yeah, everybody's on. Oh, those are re-kill. That's not even in zone, Jukes. This is not even in zone. Alpha 7 just taking points, not even in circle. Taking them to the bank, and now Influence Koski's Alpha 7 playing really crazy and aggressive game. Rolex, you know what I was thinking? Like yesterday, I was saying this doesn't look like the PMPL matches. This look like somebody's hosting a Royal Pass event or Royal Pass match. A custom room for whoever the highest skill gets 690 UC for each teammate. Got the info that this is Alpha 7. Influence Kevin think they have a chance here. Ooh. I think they realize too where they're at on the leaderboards. They need to shut down. A7 need to die, man. A7 need to die. With the side shots, I thought he was gonna get that run over, but now they're in big trouble. Federal actually does go down. The rest of Influence has to clutch this up if they want that first place. They gotta shut down Alpha 7, but Alpha 7 not going out just yet. This is Alpha 7 in their prime right Teams aggressive खेलना start हो गई हैं. बहुत ज्यादा. It's too much aggressiveness. नहीं पहले दिन इतना नहीं था. It wasn't in the first day. Like today is too much aggressive. Points निकालने के. Yeah. Oh my God, Jukes. I think this is the angle. If the A7s are done or not done. And that is ridiculous. Here comes Adrian full sending it with the buggy.
And the rest of intense game, they have to What's going on? This doesn't even look like. they are on a rampage. A7 दो गए. To do just that. So finally, that Alpha 7 heat, that fire, stomped out by intense. Oh, only one left from the Alpha 7. He's just running away for the. Yeah, this Ember could turn ablaze, though. You can't count Alpha 7 out until they're completely out of the lobby. Man, Jukes, this is Brazil. He can be get the position. The Brazilians get it done. We never see this in NA. NA teams, if they're near the top, just play our own game. Not even a third party to be seen. That was wild to see. I mean, NA. These are all Brazilian teams right now. They are. Any opportunity, they will take it. Now intense game up YKG. against YKG. हाइप वाले किधर फिर रहे हैं उस्ताद? वो देखो, वो कोई उधर फिर रहा है, कोई उधर फिर रहा है. They are like भी आग लगी है बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में. So that's a really good start for them here. दो ही बचे हैं वो एक. वही ना. It's intense game. Looking to shut them down here. You also got नहीं, मुड़ गया. keeping an eye, close eye, trying to see if he can pick up some stragglers, some more points for his squad. And make that lead just that much. पोजीशन निकालेगा A7 वाला. It's a really. सबसे अच्छी जगह कहाँ है पता है? ये एन हाइप वालों के पास है बंदा ही, वो जो टनल है ना. टनल के अंदर चले गए ये लोग. हाँ, टनल के अंदर. मैप में तो टनल के अंदर ही दिख रहा है वो रोड. अबे एक और चिकन. What in the hell man? एक और निकाल गया. कौन? A7 वाला एक और किल निकाल गया. Aggressiveness man. अबे कहाँ पे? टनल में नहीं है, रोड के ऊपर है, मिड ऑफ द रोड. टनल है ना भाई, टनल है ना अंदर, वो रोड जो है. नहीं उधर नहीं है, मिड ऑफ द रोड है. उस वाली जगह पे नहीं है, वो जगह तो जोन के भी बाहर है. जो हाँ अच्छी जगह है मतलब, इसको पढ़ेंगे नहीं दोनों तरफ से नीचे से. मैं अकॉर्डिंग टू मी अच्छी जगह. हाँ अच्छी जगह मिडल में. एक किल निकाला एंड हाइप ने. चुराया भाई. Yes, Star H-Bomb from Canada. नॉक है. अच्छा नेट था. उस्ताद ये स्प्लिट होके कैसे खेल रहे हैं? एंगल्स क्या कह रहे हो उस्ताद? 6x स्प्रे हक दिया. वो उस्ताद ये PMPL लगी नहीं. इट्स नॉट अ PMPL. मैं बता रहा हूँ कसम से आप लोगों को. A7 वाले को उस्ताद राइट पे मार. मैच का ये भी हो कि जिसके 8 किल 8 ये बढ़िया था वैसे. 8 एलिमिनेशन कर लिए A7 वालों ने. सोलो सर्वाइव कर रहा है. हाँ पोजीशन निकाल रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर वो 7 पे आ जाता है एक पोजीशन का पॉइंट उसको मिल जाएगा. आई थिंक 6 पे एक पोजीशन. 8 पे वो किल है मालिक. अभी तक तो सबसे ज्यादा है ना. यस. They gotta find the first opening. If one of YKG goes down first, I think it's all but done. Let's see how YKG can time this with 2. शारिक एक चीज तूने चेक किया? देखा आमने सामने बैठे पुश नहीं करते, होल्ड करते हैं अनलेस के जैसी पोजीशन मिले यूटिलिटी देख यूज करते हैं. हमारे यहाँ पे खान जी पुश का अकेले पुश मार देते हैं. आज पहली गेम हाँ आज क्या हुआ, एक पहला गेम खेला खान जी. पता भी है कि खान जी क्या उसका नाम है आपका वो है भाई. इसने क्या किया है? पता है रैंक है, अकेला जाके घुस गया. फिर पीछे कह रहा है मेरे पे बंदे हैं, पूरा वो लेके टीरेक्स लेके आया. आ जाओ YKG, लेट्स गो मैन. 185 पॉइंट भैंस की आंख इस टाइम अल्फा के राइट नाउ. जो थर्ड पे टीम है ये मर चुकी है. इंसेन गेमर है क्या? इंटेंस गेमर. इंटेंस गेमर नंबर 3 पे जो थी. ये भी तो देखो ना A7 को यहाँ पे जाना चाहिए यार. ये you gotta have to go man. It's really bad. It's just like, well, it's still working out for us, right?
if they would have just stayed there, they would have been so fine. So that aggression. ये इनके पास एजीजी वालों के पास भी बहुत प्यारी रीच है, लेकिन इनको अगर पीछे से क्लियर हो गया तो फिर ये ठीक है, लेकिन पीछे से पड़ेगी इनको. Fifth place team, quite a ways away from first place now. They have 151, Alpha 7 with 185. Loops needs to win this one, and they can. उस्ताद इमेजिन करो ये लूपस वाले या A7 वाले या एंगल खेलते होंगे तो सोलो भी स्क्वाड में 20-20 किल निकालते होंगे. जोन से बाहर हीलिंग कर रहा है, हील बैटल कर रहा है. कौन है बंदी? वो A7 वाला गया, A7 वाला जाएगा. नहीं अभी जोन से बाहर ने किट लगा के अंदर आया ना. आई थिंक ये एक आधा किल और निकाल जाएगा. लूपस ऑन ओके. मलिक दस्ती स्मोक 8 स्मोक उठाए हुए, 8 स्मोक. Straight gaming, what's up, bro? This little ember is still burning, Jukes. You need to add me to your retract. Where? Beautiful ornament on his backpack. Send me a message on Discord. I'll do that. Ooh. Star, ये लूपस वाले क्या कर रहे हैं? What's going on with lupus? एक भी नोक हो गया, ये पुश मार देंगे. इन दोनों की फाइट होनी चाहिए हम भाई, दोनों स्क्वाड्स. यार दोनों की स्क्वाड की फाइट दूर की बात है, A7 वाला पीछे से निकालेगा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है. दोस्ती वो दे, A7 वाला ये निकालेगा, उस्ताद 2 किल निकाल जाएगा इधर से. आई थिंक 1 और 2 इसके सामने लेटा हुआ है. नाइस YKG. And Hyper creeping up the leaderboards, but Alpha 7 Mafioso still up with 8 and now collecting placement points. मालिक हाँ ओके. शारी देखा है वो नहीं फायर नहीं कर रहा, होल्डिंग द प्लेस, गोइंग फॉर पोजीशन का अगर 2 पॉइंट भी आ गया ना, 3 पॉइंट भी, तो किधर बात जाएगी. NHP का एक नॉक. शिट. I know they're still alive with 3, but man, should have 4 here, and they should have overnights already taken out. That's 4 elimination points. And उठा लेगा रिवाइव, वो दोनों क्लियर है उनके आगे. putting in some shots, get some shots in, but no knock. लेकिन वो इतना पीछे क्यों चले गए हैं? बहुत पीछे चले गए हैं. 2 minutes ago was the perfect time to do it, and they missed that window. गंदी लग रही है. A7 वाला ये ओके को मारेगा, ओके का जो नीचे पत्थर के साथ लेटा हुआ है. उस्ताद ये क्या कर रहे हैं, गाड़ियां घुमा रहे हैं. गाड़ी से शॉटगन से पेल दिया बंदा. What the hell? What in the hell, bro? वो भी 2-2 है भाई, तीसरा मार रहा है. NHP वालों ने किल चुरा लिया. What the hell? सही जा रहे हैं, दूसरा भी चुरा लिया. होल्ड पे खेलना पड़ेगा इनको. जोन के अंदर नहीं, जोन के अंदर नहीं है, जोन के अंदर नहीं है. हाइप के पास जोन नहीं है ना, सामने है, लेकिन सारे ओपन है, बिल्कुल ओपन है. राइट पे उनके देखो ना, राइट पे रिच पे भी है ना बंदे. फ्लेमो वाले क्या कर रहे हैं ये सारे, गाड़ी घुमा रहे हैं उस्ताद फुल टाइम. गए भाई. A7 देखा, मैंने बोला था ना A7 किल चोरी करेगा. A7 ने किल चोरी किया. 1 more kill for the A7, bro. Saw no finish. वही तो. Yes. A7 वाला still alive man. चौथे नंबर पे 3 पॉइंट, 4 पॉइंट है चौथे नंबर के. अबे ये A7 वाले लेके जाएगा हाइप वाले को, जिस तरह वो सर्कल में उधर है ना, लेटा हुआ है. A7 still alive, man. RJP Adil subscribe to the channel. And it's still inside the zone. More than likely, well, I don't want to say more than likely, but there's a chance Flamingo might lose one.
making it like a 2v1v1 situation. सेकंड पोजीशन भी आती है मतलब तो नॉट बैड. Not bad. Picked up 2 elimination points for Yes. himself as a solo. The amount of placement points he got escaping. लेकिन A7 ने जो किया मालिक बहुत गंदा उसने सर्कल निकाला है. हां अच्छे किल. वो चिकन भी निकाला और जोन भी अच्छा, बहुत अच्छा जोन निकाला है. How this is gonna end up? Who do you think is gonna win this one too? Looking at it right now. अगर A7 जीत गए ना मालिक ये वाला, With that new zone खत्म. Alpha 7? Alpha 7? Yeah, no, he's in a एज ऑफ द जोन. This is ridiculous. जोन में ही है स्टिल वो अहमद भाई. हाँ जोन में वही तो कह रहा हूँ. I think Flamingo NHP के ऊपर जोन नहीं है, दोनों के ऊपर जोन नहीं है. they take down Cardozo. थोड़ा सा ही है, पैदल भी जाएंगे तो ले लेंगे. अबे इसको एक काम करना चाहिए, इसको एक काम करना चाहिए. अपनी जगह पे नेट फेंक के पीछे दरख्त है, दरख्त पे चला जाए. उससे भला क्या होगा, उससे ये होगा कि वो नीचे पीछे चला जाएगा. They're looking at N-Hyper. एनहाइप क्या, Telling you, that is the zone that was gonna win. उसको पता चल गया पीछे है. And he got it. It's crazy. Here goes Loops. All right. वो ए ड्रॉप नीचे चला जाएगा. ए ड्रॉप से वो आराम से वो कर सकता है. क्या उसका नाम है, गंदा नहीं, नेड आएगा इसके ऊपर. On his own. But he has to cross the hill. लूप वाले ने कैंसिल मार दिया उस्ताद. And I mean, it's really Flamengo's game here, actually, and Hypers or Mafiosos or Cardozans win. Like, look, here comes Kindness, catches him at the perfect time. नहीं, किल नहीं चोरी करना, किल नहीं चोरी करना यार. The open? He has to, I guess. Wait, Mafioso? नाइस नाइस, Sightlines on this push. किल कंफर्म किया. Hyper's making? Oh, he's got the MG3, but Mafioso has been chilling this whole time. How has no one even looked in his direction? GK first. A7 वाला गंदी करेगा, A7 वाला गंदी करेगा यार. नो, Watching all this. इनको पता ही नहीं है इनकी पैक पे. Has to. आइडिया है उसको, आइडिया है उसको, आइडिया है. Back? Unless if that's a visual glitch. smart. Oh, he's doing both. Wow. ओ स्टैट चेक कर रहे हैं, बैक पे लेटा हुआ है, अगर पड़ेंगी तो पैन के ऊपर पड़ेंगी. All the info right now. What the hell bro. Okay, first, sneaky. Cardoson, jumpy. यार ये A7 वाला हां भाई ब्लॉन्डे अच्छा खेल गए यार. Okay. A7 वाला Finally, take it out. नहीं अपने वाले. हाँ, अपने वाले भी एक, लेकिन A7 वाले से डर लग रहा है यार. वो देखना गया यार, गया. Moment of truth. Oh, Kindness, he's gotta hit these. Kindness. Oh, and the pressure. Cardoson down to Mafioso. But how does Mafioso secure a top 3 finish? उसने रिफ्लेक्ट मारा. नहीं, ओए ओके, Cardozo and Hyper. 1v1. GK first, he actually got a shot here. This is gonna be huge. GK first has the advantage. He should be able to win this. Who's gonna win it? HP advantage. GK. रिवाइव उठा लॉन्डे. At half HP. नहीं उठ shots सकता. back and forth. नहीं उठ सकता. Let's go, let's go, yes, let's go man, let's go. लेकिन यार थर्ड नंबर पे वो निकाल गया है, थर्ड नंबर पे निकाल गया मालिक. A7 वाले Happened way too fast. crazy man, crazy. Do fumble the bag. Oh goodness man. I was saying like they lost. A7 ने जो थर्ड नंबर पे निकाला है भाई Still got the chicken. पोजीशन. However, with Clutch it up. an asterisk. लास्ट मैच पे आ गए. भाई साहब क्या 37 बंदे अलाइव थे जब क्या उसका नाम है, ये 2 बचे हुए थे. Maybe this works out. दो And बचे Hyper हुए don't थे, take यार. first place. That's what we all want. Or maybe Oh my god, what a hype bro. I mean, it's crazy. Let's go guys. They still got इसी के ऊपर ही ओपन गिव हैशटैग फारूक इन द चैट. लेट्स गो. अबे मेरे कहने से पहले तुम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. लेट्स गो हैशटैग फारूक इन द चैट. या एंड ओए बाय वेट no NHP लेट्स गो. NHP सॉरी NHP चिकन है भाई NHP का. I mean, everything just seems to be working बस out. लोगों in ने their हेडफोन्स favor. उतार All दिए they हैं. gotta do- वाह NHP उस्ताद NHP अलादीन सबसे पहले आते हुए. I don't see any team रुक जाओ NHP ब्रो NHP हैशटैग NHP. no, they tried. They tried. नहीं सुन रहे हैं. लेट्स गो बॉयज फॉर 600 UC. लेट्स गो गाइस. And, hey, in the late game. ओए व्हाट अ गेम यार, मजा आया कसम से इस वाले गेम का. 2 more games, all right? We're gonna crown a champion at the end of this. Don't go anywhere. Nice, nice. उसको रिफ्लेक्स बहुत गंदा पड़ा था A7 वाले को हैपर की तरफ से. मालिक नहीं 50 प्लस बंदे अलाइव थे जब इनके 2 रह गए थे. ये फाइट उसके बाद की है. 56 प्लस बंदे थे
जब ये 2 बचे हुए थे, कहां से चिकन निकाला वे। एंगल में बहुत मुश्किल होता है। इनको ने भी बहुत प्यार, यहां पे गंदा सीन हो गया था ना इनका। तीन पार्टियों ने यहां पे, लेकिन अच्छा के बहुत अच्छा किया था इन्होंने यहां पे निकलने के लिए। ये भी इसने निकाला था किल। ये वाला किल बहुत सेक्सी इसने निकाला था, शॉटगन वाला। क्या कह रहे हो उस्ताद, क्या कह रहे हो। लेट्स गो गाइस, लेट्स आल्सो लाइक, जितने भी लोग अभी चैट के अंदर बैठे हो, मेक श्योर 500 लाइक। वॉच पार्टी, ओ यार अरे हैदर भाई कैसे, वेलकम टू द स्ट्रीम। लेट्स गो गाइस, मेक श्योर हिट लाइक बटन। 500 लाइक जल्दी से करो यार, 500 लाइक करो। विनर हम पहले पिक कर लेते हैं, 500 लाइक्स तो बनते हैं ना यार। Oh my goodness. Daddy, oh yeah, yes, I still don't ha. know how to really break that fully down with whatever all went down. Where do we start? I don't know. I don't know. As you said, it was salvage matches. We thought that like Loops had a really strong position, and to be fair, Cardozo did do some good salvaging on his own, but it was nothing compared to the run that N-Hyper and A7 had. 18 पॉइंट, 7-8 किल के साथ A7 9 पॉइंट और 5 इनके प्लेसमेंट पॉइंट। सही पॉइंट निकाल गए भैंस के। 14 पॉइंट, नॉट बैड। थर्ड वाले 13 पॉइंट, रनर अप लूप्स 12 पॉइंट, नॉट बैड। लूपस सेकंड नंबर पे आके, लेकिन किल्स कम थे। ओह माय गुडनेस मैन, व्हाट अ क्रेजी मैच। बहुत पॉइंट चाहिए अभी भी यार हाइप वाले को। अल्फा अभी भी ऊपर है। हाँ अभी भी ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी 6 पॉइंट थे ना, अभी उनके कितने 2 पॉइंट और ऊपर है। 2 पॉइंट हाँ 2 पॉइंट अभी भी ऊपर है। ओ नेक्स्ट में पता चला यार, इसको मरना चाहिए था यार, इसको प्लेसमेंट पॉइंट नहीं थे मिलने चाहिए। प्लेसमेंट पॉइंट ना मिलते, एक कल भी इसने 2 किल उधर से उठाया, 1 किल उठाया, यानी 6 पॉइंट इसको एक्स्ट्रा मिले हैं। 6 पॉइंट ना होते तो एन हाइप ऊपर आ जानी थी। लेट्स गो, यहाँ पे क्लोज गिव अवे करते हैं यार, लंबी नहीं करते, क्लोज गिव अवे एंड पिक अ विनर। सुफियान उल्लाह, अगर जानी चैट के अंदर बैठे हुए तो एक दफा अपनी आईडी जो है वो लिख देना, या हेलो हाय कुछ भी ले देना। अभी रुक जाओ, एक और जो है वो कहते हैं फौरन से। You know what kind of hurt seeing that YKG performance too, that it was 24K clutching it up for his team as he was able to do previously in NA, in PMPL NA. Oh goodness man, this team comes back. That was the craziest, literally craziest one. 24K, great performances, man. Yeah, 24K has always been the standout player for me. I know Joey is the more dramatic one. Craziest इस हिसाब से कहेंगे कि इतनी जल्दी ये DBS से DBS चल रही, तो बंदे किस तरह मरे। एंड पे जाकर थोड़ा सा क्वाइट हुआ है, जब 2-2 3-3 रहे, उसके बाद गूज़बम्प वाली गेम थी, मालिक उधर से ना पड़ जाए, उधर से ना पड़ जाए, लेकिन कवर कर दिया बहुत प्यारा उसने। लूपस वाले ने बचा लिया है, किल बचा दिया ना एक उसका A7 वाले को किल से, वरना किल उठा लेते कि A7 वाला एक और। Situation, but like 24K, that is the player on YKG that they need to put all of their force behind going forward. Big statements. Obviously, another season PMPL coming up around the corner, so we will be able to have the opportunity to see if they do that. But let's take a look yet again here at our top 2 teams between N-Hyper and Alpha 7 in this last match, and a little bit of a head-to-head here, because this was extremely important. 8 एलिमिनेशन, 9 एलिमिनेशन, 8 असिस्ट। अबे अल्फा 7 के किल भी बहुत चोरी हुए हैं, 8 असिस्ट हैं भाई, इनके 4 असिस्ट हैं। 1600 डैमेज है यहाँ पे, लेकिन 1400 डैमेज। अच्छा डैमेज कम है और किल चोरी भी काफी की है ना A7 वालों ने। बस यार रुक जाओ, सुफियान का मैसेज आएगा, रुक जाओ सुफियान, अपनी मुझे इन गेम आईडी सेंड करना और साथ इन गेम नेम भी। रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, अगला गिव अभी फिर स्टार्ट हो गया थोड़ी देर में। नेक्स्ट मेरा मारा है गैस।
step, like that was just so impressive to me. Next मेरा मार. Honestly, again, and it's the fact that these teams are delivering when we are down to the wire and the pressure is at its greatest. Thank you so much guys जिसने भी अभी सब्सक्राइब किया अभी है ताज़ा. Didn't collapse under that pressure, and then in hyper chasing, they're really good at doing that. They're really good at chasing. They're not giving up under the pressure at all. They know they need to make those final few steps, and at this rate, it is looking like it's going to be a head-to-head between these two teams until the very end. And hyper not having all the more. Yes. Say it. Cameron, you have something you wanted to break down for us? Member What is it? Kareem Sheikh. Honestly, I'm just really Did somebody did the membership giveaway? these teams at the top are going for the massive play. Membership giveaway हुई है क्या सीन हुआ है? At the fight that's, I guess the Did I miss something? whatever you want to call that's happening around here, a little bigger, happening around there between प्रिंस को मेंबरशिप मिली है बे? 7 fighting. किसने मेंबरशिप गिवअवे की है? Yeah, sure. You can criticize A7 for shooting the boxes of influence. Become a sponsor. Kareem Sheikh just become a sponsor. Need to beat. This is high impact elimination points that they're getting because it's points for them and it's less points for their. नहीं करो बे शारिक. Bigger thing is that Yes, yes. प्रिंस को मेंबरशिप मिली है कब? किसने मेंबरशिप की है क्या? but they saw that 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ये कोई पुराने थे जो इन्होंने अबे यार ये कल शानी ने काम खराब किया है इसने intense game on the ऐना ने इसने क्या किया इसे स्ट्रीम लैब को टाइम आउट दे दिया है स्ट्रीम एलिमेंट को दोनों को टाइम आउट दिया है और कल से ये वेird एक्टिविटीज कर रही है he lost a couple of members and they did a really good job. They almost took all of A7 out. It was Mafioso, the lone member, getting away and then pulling his own individual amazing maneuver. शो नहीं पुराना है वो उसका मैं स्ट्रीम लैब का कोई इशू है The idea ये मतलब मेरी स्ट्रीम पे भी लेट शो करा था हाँ मेंबर नहीं वो टाइम आउट दिया टाइम आउट की वजह से ये सीन हुआ है do at the end of a tournament. Let me ask you your opinion, right? Because we actually discussed this in the green room. Punjabi Munda Intense yet game subscribe to and the channel. influence पंजाबी मुंडा थैंक यू सो मच जानी फॉर सब्सक्राइबिंग tried to rotate into Alpha 7. I'm assuming, I don't know if you agree with this, that intense game kind of rotated into that fight, maybe expecting Alpha 7 to be wounded, but they actually weren't wounded. नहीं They आ was a रही है smart player. No one was स्ट्रीम knocked. देख रहा And I think ये बढ़िया था उस्ताद स्ट्रीम देख there रहा that they were able to close those knocks so quickly. So दोपहर during में the- by the way, class. if you saw, Intense Game actually had one player in a vehicle, and it seemed like he was scouting to go east, like you were mentioning. And as soon as Alpha, I noticed Sapubi you are currently traveling outside of Canada. Yes, I know that. you could see them. They all got into vehicles, and they decided to push Ye- it. That whether it was weak or not, whether Alpha 7 was weak or not, it didn't matter to them. They knew that they needed. My to 30th. at least get 3 players. And as I mentioned earlier, Stage paint. kind of helped out. Rough Intense paint. Game. 7 took a little bit Which is longer and decided to shoot those boxes. Yeah, let's take a look at our overalls here really quickly, but I do want to say this. I'm so Today's impressed by Tuesday. Intense Game to make that decision and go. 'Cause I feel like most teams would have been like, oh, okay, well, let them get the limbs. We're still going to play for the late game. We're still going to play for placements. But instead, Intense Game is like, no, we're going to put the future in our own hands, right? Yeah, I think this And is we why. went for the fight. I think this is you will provide the command to the yeah. behind Alpha 7 and Hyper following close. Appreciate your business. Really good at following. Once again, I'm glad to see them there in first place. And Alpha 7 being able, at least Mafioso being able to clutch it up for his team there. Loops Esports being able to move up now from 5th place to 4th place. And this is what I was kind of talking about. The gap is increasing in a big way. If after this match they're not able to get at least 15 to 20 points from Loops Esports, I think 191.87 से गैप कितना बिग हो गया इंटेंस गेम का उस्ताद यार रनर अप नहीं आना चाहिए इनको बहुत गंदा सीन हो जाएगा मुझे पबजी में डोगी या बिल्ली ले दो डोगी या बिल्ली कैसे मिलती है वो तो इवेंट ही खत्म हो गया उस्ताद Loops doesn't have a chance to catch up. इवेंट ही खत्म हो गया Yeah, I mean that's the 191 उस्ताद पॉइंट 123 एलिमिनेशन पॉइंट 68 प्लेसमेंट पॉइंट 30 points. Loops can make 30 points in 3 games, but that's if the 3 teams above them make nothing 3 games in a row. Exactly. Well, we're about to head into our next match, but I want to remind you guys once again to get your votes in of your favorite teams or who you think is going to win here over in the YouTube chat because we love to see who you are supporting. I think there's a lot of A7 and Hyper supporters going on right now. But you know what? एन हाइप ओनली एन हाइप उस्ताद एन हाइप Bring us our 4th match. We have 3 left to go. We're heading back to Miramar for the last time of this event. telling you loops need to target A7 yes Preach, Jason. Preach. I couldn't have said it better myself, right? If you want to get first place, you gotta stop Alpha 7. The gap is too thick right now. If you're Loops,
you could decide to leave it up to fate and see if Alpha 7's gonna choke, right? I have a लेट्स गो मेरे मार का नेक्स्ट मैच जो नहीं करो यार स्पैम अभी नहीं करो अभी गिव अवे क्लोज है जानी अभी गिव अवे क्लोज है you're gonna ये हमारे सैफुल्ला भाई जीते सुफियान उल्ला भाई what are you gonna do this game? That is my question. What do you think? 5883032424 मालिक गंदा है अगर ये इनके साथ अगर एक भी मैच आगे पीछे हुआ it's gonna be tough man. Alpha 7. So it's not like you cut off the head of the giant and that's it. There's another one in the midst, right? In Hyper. And in Hyper. सुफियान भाई यहाँ पे आपकी आईडी आ गई है अपनी मेल में जाओ यहाँ पे रिडीम आपकी मेल में जाओ मेल से जाके अपनी जो 600 यूसी है वो कलेक्ट कर लेना प्लीज Falling a little ways behind. You see right there on the points. 170 right here. So Op, Sadiq Kai Bhai subscribe to the channel. ओपी सादिक भाई लास्ट मैच कौन जीता लास्ट मैच एन हाइप तो सामू भाई आप चले गए एन हाइप जीती है Intense game is probably the only squad. पक्के पक्के तो नहीं चले गए लेट तो नहीं गए जाके बेड पे Subscribe to the channel. Dinner right now. Like, okay, that's fine. एन हाइप किधर उतर रही एन हाइप ओ ये ऊपर वाले एरिया में उतर रही है Oh, I see what you're circling here, Zute. yeah, the top two teams in Hyper and Alpha 7 is going to go towards El Pozo. So I'm going to leave these circles up here for now. And we're going to see on the first circle that pops up what teams they have to watch out for on their rotation in. Particularly, can loops cause some trouble for them? Can ओ for them? And with this, ए सेवन सर्कल में आ रही oh man. गंदा सीन हो जाएगा और इनको जल्दी पुश करना पड़ेगा इन सर्कल It really is. It really is. Especially for Alpha 7. They're going to be able to get all the loot they want and more. So they're going to be pretty set up for this game. And once they take El Pozo, they're going to be tough to even deal with. Because they're going to be so set up. I see you're circling over here by loops. Yeah. Hacienda. Intense game as well. So these are the two teams that need to take out, either Alpha 7 or N Hyper. And both teams, have one of those beasts. सुलाने अच्छा सुलाने गए थे मैंने वो इधर डीसी से भी चले गए ना मैं इस वजह से कह रहा हूँ 7 will be coming in on intense game side. अबे 600 में दे रहे हैं रियली नुमान भाई आई डोंट नो दैट Where champions are made. दे रहे हैं ट्राई करना फिर नेक्स्ट में आई होप कि आप विन कर जाए Here towards the ए सेवन उस्ताद सीधा जाके ये तो सीधा लूट पे proven that they can get it done regardless of the situation. And they're super fortunate, right? They got some really blessed zones these past couple of matches, and they मालिक लक चल रही है इनकी इस टाइम पे फुल टाइम stats not too hot compared to their other maps, okay? But with the lead that they've given themselves, they only have a 2-point lead on N-Hyper, where I think N-Hyper has had a lot more success here. अबे ये गंदी लोकेशन है यार एन हाइप को निकलना पड़ेगा इधर से जल्दी से लूट करके Very good zone here, playing path. Oposo all to themselves, so they're going to be looted out to the T. Yeah, you can see that N-Hyper definitely has a nice bump in stats. Average elimination 5 compared to them. Yeah, Alpha 7, they stick to their play style, coming in from the outside of the zone and fighting their way in. Miramar, definitely the hardest map to do that in, right? Sandhawk, easy. Skirmishes, you got to be टूटा हुआ साज WSB has a 26 vote beautiful not beautiful those are not the real votes man how are you talking about the people are doing the vote like suddenly yesterday they was like 2 to 3,000 and today they are 26,000 how that's what I'm talking about like how All right, well, who's going to get that high ground first? Intense game, already centering up in the zone, getting ready for this one. And man, they were really just in a solid वही तो कह रहा हूँ yesterday. कल कम थे और आज यकदम इतने ज्यादा मालिक ये कैसे हो सकता है Plop out a good performance right here, right now, at least in my eyes. I need Royals of War. material for M4 That's the team that has I hope Zen next में इस मैच के बाद हम गिव अवे करते हैं 600 यूसी का I hope you win It could be this one, but at the same time, they कल उनके 7 वही तो मैं कह रहा हूँ कल लेस देन 1000 थे और आज 26,000 यकदम very unpredictable as well. हम इधर भैंस के स्टोरिया लगा के मर गए सबको बोल बोल के यूसी गिव अवे कर करके वो यकदम ऐसे थोड़ा होता है यार Any traps being set up just yet? Of course, the circle being so big, have to get, set up at least before taking some engagements. I'm looking at the mini map, Jukes. Looks like everyone else just taking their time. No real fast rotations.
Inko coming in from Picado ever so slowly. We got teams looting up on the edges of the map still. Let me see. Somebody did send me something. As well, not really somebody we need to be focusing on right now. Focus definitely on these top squads because BGMI की अपडेट है किसी के पास चैट के अंदर बताना जरा. all about. And you see intense game right there on the mini map. Everybody, Inko Gaming. I think it's toast or Inko at this point. Zoo, what do you think? Nail in the coffin? Yeah, I think so. They're 137 versus 191 out of the first place team. So Inko's, for me, the contentions are for first place in hyper intense game, loops, and influence. If influence pull off something big, they got a chance still. Well, only this one and 2 more matches left to go. So with 3 games, you can still put up some good points. But क्या सीन मालिक एनहाइप वाले पिछला मैच जीते हैं. I want them to win this one also. अरे A7 वाले को यहाँ पे शुरू में मरना चाहिए. मर गए तो रुक जाएंगे उनके पॉइंट, वरना तो वो तो रुक ही नहीं रहे शाने. एनहाइप रिच आ गई. मारेगा इसको. कुड बी. नो, उसको पता चल गया इधर बंदा है कोई. I think so. It's quite obvious the Brazilian teams. It's first enough Buddy? for them based on that last match, right? They went for Alpha 7's head when they got a chance to. आज कुछ आया गेम के अंदर. Last game, you might see a team just hot drop Alpha 7 even potentially to try and deny the points and then get a huge game themselves. I didn't see anything today. First place away. That is if Alpha 7 is in first place coming into the last match. And Hyper, quick question for you. They're only 2 points away from first place. Do you want them to get first place, or do you want them to stay in second going into the last game? Oh, I don't know. Oh man, go ahead. Oh, that's right. QZZ driving right into. I was looking at the mini map for a second, and Ed Hyper driving right into loops. This is dangerous. बच गया शाना बच गया. क्या कह रहे हो उस्ताद? हसन मना, थैंक यू सो मच मेरी जान. वेलकम टू द टीम. मैंने रोने लग जाना है, अब नहीं करना, मैंने बता रही हूँ. क्या नहीं करना? हसन तुम तो अपनी बातें लगे हुए हैं रामू से. रामेश शाने कैसा है? A7 चला जावे. अभी तुझे मोड से हटाता हूँ, सबर कर जरा. हटाऊं तुझे मोड से? NHP only bro. A7 वाले I don't know. बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो. I hope it doesn't center up. I want to see something interesting because you do have 7 on the left side and Hyper on the right side. उस्ताद वो देखो उसको, IG वाले को, और टॉप पे चढ़ के बैठ गया. 191 पॉइंट मैन, 190 freaking पॉइंट. उस्ताद ये टीम 16वीं टीम को भी चेक करो, 47 पॉइंट. इनकी भी तो क्या लाइफ होगी. A7 वाले बिल्कुल साइड पे है मालिक. 87 वालों को देखो उस्ताद, लूट करके आएगा बाहर से, टेंशन नहीं लेनी. नहीं जीतेगे भाई A7. अब बताओ. सी DSP वाले पीछे से तंग करेंगे इनको, या तो A7 को तंग कर सकते हैं, या रो वालों को कर सकते हैं, या फिर N-Hype को. अबे N-Hype का बहुत गंदा सीन हो रहा है. N-Hype का भी स्प्लिट करके खेल रहे हैं. अबे N-Hype का why bro? They get a good one. Intense game sitting right in front. Why in the 7 as well right there. And it looks like Alpha first into intense game. First one knock finish bhai. 7 cannot afford to go out early, and intense game. We talked about it, right? I think intense game need to take him out. They have to finish him out early here if they want to go. And the Panthers versus Influence Kevin. Influence Kevin need to have a monster game right now and cannot afford to go out to the Panthers here. No, they cannot. Nade's going back and forth.
No openings just yet. I did catch Hyper knocking a player just now. So maybe Hyper's already set up in a decent spot. This fight yet completely, fully blow out. Quan coming in hot, wrapping around the backside. Kawiski, though, on the outside looking in. Let's see what Quan's looking to do. Can he go ahead and get this initial knock on a Federal? He's starting to pre-fire. Oh, that DBS ever so deadly. Gotta watch out for that. Quan's gonna has a nade locked and loaded for him. And that knock from Federal is gonna open things up. We might start seeing Influence really start pressing this. Yeah, the Quan gets Panthers thirsted. looking trapped right now with this side of Influence. Not able to do much. Not much room to move around because they have a player on the outside covering all the angles. Lil Boy taking a shot now. ऐप सीन हो गए यार एन हाइप के लिए. A lot of pre-fire catches the edge. That's huge. Blows the arm off of Lil Boy there, and now Nate looking to take चारों मर advantage गए of that knock. नहीं एक मरा है. Some more work for his squad. Can he clutch this up for his team? He needs to. यार सेपरेट खेल रहे थे यार, बहुत सेपरेट खेल रहे थे. Trying to keep his team वो जो एक मरा है ना वही सेपरेट खेल रहा था. there on a Zuko. And I believe it's only one player up left for the Panthers. Here's Chronix with the jump down. Chronix making his return today. No shots hitting. Switches to the M4. 1v2 Oh, he's gonna situation. secure this point though. He's gonna secure this point. Yep. Oh, Definitely. Oh, and Law with a beautiful shot takes out Chronix, but Influence Gavin lose 2 in the process. that's too much of a loss. That Too is much of a loss. एन हाइप का एक और नॉक हुआ, 2 नॉक हुए. Before early game, we could talk about how 4 points. Fuck, man. It's not here. Like they are too far down the leaderboards. They want first place. They need 20. Loops taking a fight now with Royals of War. Loops, the 4th place team. They need to clean this one out without Can't lose losing anybody. a single player. Yeah. That circle has Please already- don't dead यार. 7 on that southern side, and Hyperhard already made it onto that high ground. Intense game on that northwest edge. They just need to scooch in a little bit. Let's see what Loops is gonna do here. They get naded, Mythic. That is such a tough nade, Dreamsy. Oh, and a huge off-angle knock, Loops. Devastated. It's just Cardosen left up. बचा लिया हाइप वाले ने अपने बंदे को बचा लिया. In the last game, Zute, this man all by himself was able to secure a 2nd place finish. But can he bust out a 20 elimination chicken dinner? No. He can't do it by himself. The Royals Loops गई. call them the Titans. A7 का एक बंदा नॉक है. They wiped out One knock finish. Hold on, Alpha 7. What happened here? Why 7 down to 2? डाउन टू 2 हो गए हैं. अल्फा 7 भाग रहे हैं. Knocking on the door of the great Alpha 7, and they are in big trouble now. क्या कह रहे हो उस्ताद? Huge play from YKG, and look at this. Ooh, Really, it was a tense game. Diego. that was a good knock. I mean, I showed it on the map feed earlier. No matter which way Alpha 7 goes, it is high ground. This was the toughest rotation for them to make. I'm not surprised they ended up losing 1 to 2 players. That was the worst circle shift for Alpha 7 possible. No matter how many plans they had, it is just high ground that they have to just bum rush into. Goodness gracious here. Oh, Alpha 7 cut at the knees. And Hyper, they did lose a player early on too. So, and Hyper, this is their chance, right? Really their chance to put a monster game on the board and extend their lead into glory. Okay. Oh, man. Fears. They'll get first place. They'll end up in first. place. I don't know about that, Jukes. Give it to them. Give it to them. Why They're not? gonna choke it. They're gonna They're end up not. choking They're it. not. They're not. In Hyper, you gotta believe. You gotta believe. Okay, right? okay. Let's see if they can do it here. Fears. क्या कह रहे हो उस्ताद? 2 teams super low on the leaderboards. YKG. You can do as much as you can, man. You can do as much as you can. The maximum vote is a better. That is. Let's see. YKG with a Nice molly. Nice molly यार, लेकिन बच गया वो. I was trying to see if they can even. Ooh. But hey, you never know. DPS वाले गए. Look like DPS वाले गए. Also, you never know what kind of statistics they have. Oh, third party from intense game. Ooh. This huge- Knock onto Joey. YKG DSP के गए. They need these points. They want these points. And I'm pretty sure Third party. And they know Alpha 7 is hurt here. Here comes intense game. These are the beasts you need to worry about. उस्ताद क्या कह रहे हो? थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी चल रही है यहाँ पे. Total.
Intense game, circling around like sharks. Ooh. Looking, they smell that blood in the water, and it's opened up. Actually, as Adrian gets finished too. That's really tough. Chico with the DBS. Man, it's so hard to push these players with these DBSs. Oh my god. Oh my goodness, man. The man, the myth, the legend, shutting down the Whoa. dreams. Oh, bad animation. 24K. Animation cancel. That's new. Whoa. Animation cancel fake. It is so close. It's so tight. Joey goes down. 24. Both are reloading. Bop, bop. Here goes. M4. Oh, jump shot. 24K. Ooh. Wow. Chette tar ustad situation full time. Yes, Oh, it's not done yet. दोनों दो हैं दोनों Hope it's still here. ले गया वो. Pump shotgun. नाइस बे. इंटेंस ने क्या प्यारा निकाला है इधर. Eliminations. Where are they at? सेवन एलिमिनेशन भैंस की आके पीछे से आके 2 बंदे लूज कर दे लेकिन 7 निकाल गए. 7 crippled like this, they're going to have the same amount of players, but a 7-point elimination advantage. If Hyper goes Ooh. here, My goodness. intense games in the mix. The problem is, Jukes and Hyper got a really good zone shift. Yes, they did. Yes, And they Hyper did. got another really good zone shift, and they still have 3 up. Oh man, and Hyper is getting. ओ भाई लव यू जनी. वैसे लाफ्टर मना है लेकिन क्या मतलब. I mean, if it hard shifts अच्छा हंसना मना है. मैं कुछ और समझ रहा था. ये 7 वाले शाने किधर बैठे हो 2. as far as the position in the circle goes. एनएचपी डेड है क्या Oh, baby. नहीं चुप कर गए उस्ताद. चुप करके होल्ड करके 3 बंदे बैठे हैं. एक ही लूज किया अभी. This match at 2 more. They're holding. We're crowning our America's champion right here. हाँ अपने वाले कैंप थोड़ी हाँ. नहीं करेंगे वो भी करेंगे भाई. I mean, there's technically 5 squads, right? What's another team here that could possibly get it done? Loops is done for. That's gotta hurt. Flamengo, if they get a win here and another good game, they could be still in the fight. What? इसको क्या हुआ है. Uh-oh. Diego. I don't think he has time to go for that revive. Oh no. Diego. That's gotta hurt. That has got to hurt. Intense game. आईजी का लास्ट बचा है. क्या बच जाएगा कि नहीं बचेगा. I was about to say, if there's any team you do not want to feed. आईजी नॉक डेड. ये लास्ट बचा 7 किल. CLO makes it. पोजीशन के लिए खेलेगा आई गेस. He's not going to get the next circle though. Alpha 7 still with 2, but in a terrible position. गंदी पोजीशन पे अल्फा 7 वाले भी बैठे हैं. एक आधा किल और निकाल जाएंगे सुकून से. Here comes that circle shift. We'll see where it goes. एन हाइप वाले बैक क्लियर है इनका. लेफ्ट और राइट पे बंदे हैं. बहुत प्यारी पोजीशन पे इस टाइम है एन हाइप. लेट्स गो. Right of the D. And they got that huge compound to work with too, so even if it hard shifts to the west, that compound might be in zone. Let's see where it decides to pop on over to. Is he going to send it up? Either a pretty... rock solid onto N Hyper. This is their chance, right? Hey, you know what? Now, Alpha 7, they have gotten that luck early game. And Hyper finally getting a bone thrown their direction here, this one. But can they finish Sute? That's the question, right? ये वाला मजे का था उस्ताद. They cannot make any complaints at all. It's their game to win. Oh, here's that quick replay, man. This was Ooh, that was a nice one. the back-to-back 1v1. Ooh, ये जो जंप मार के मारा है इससे ये मजे का था. I don't think I've seen one player going left win a fight like that at this level. Like really, the right side lean peak is just so critical. Yeah. Inko rotating in. Inko's still with 4, but yeah, they're pretty far down on that leaderboard now. And by the way, for everybody hearing, when it comes to these TBP advantages, right? All the characters in this game, right? They're all right-handed. You can see everyone's holding that M4. So if you're sweeping to the right side and against another player that's sweeping to the left, खुदा का खौफ करे इतनी पीछे से जाके चैट पड़ रही हो तुम. ahead of that person sweeping left. So you're Yeah. gonna have a little bit of a advantage. You can just see players just using that big time to get these dubs. Yeah, right-hand peak advantage for sure. Every little advantage, you got to take it into account. Inco Gaming taking out Royals of War here. Nice. I mean, they do have one player on the flank for Royals of War that could cause some issues. उस्ताद गए. इनको वाले गए. मार बे. Or M2M. ये मार नहीं रहे. Make something happen. Loses sight, loses vision. And Alpha 7
Uh-oh. Down Rebel down. Nexa. Okay. वो अल्फा 7 ऑलमोस्ट एक गया, दूसरा बचा। क्या अपने बंदे को बचा पाएगा अल्फा 7? लेट्स सी। Utilize some of that mafioso magic we saw. Can he save his teammate? I don't think so. America's champion. I don't think so. It's gonna be tough. I thought esports flying a little. I don't think so. 0 points so far, and I think if they go out here, it is. उठा लिया बे उस्ताद, क्या कह रहे हो? बचा लिया, भरोसा रख जा। नहीं बचाऊंगा। Crawl his way to a nice res. That's gonna help his team out so much here. भरोसा रख जानी, उठा लूंगा। टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आज के लिए टफ हो जाएगा जोन में जाना। I think it's a little too late. If they could bust out a 20-point chicken dinner and then repeat it in the next game, then we could see them fight for that top spot, but it's gonna be tough. Yeah. पढ़ सकती हैं। Can't see a team getting back. ये क्या बोल रहे उस्ताद भरोसा रख जानी, उठाऊंगा। टेंशन नहीं लेनी, सही है ना? It is so difficult at this point. Like I think. अबे यार क्या उठाया कसम से उसने। Level right now. So tough task. Yet 2 chickens in a row. क्या हुआ है? क्या बात हो रही है खाने की? And hyper still just chilling. No elimination points. अभी रूम से निकला क्या मैं बाहर? अबे जाओ बे। अबे मेरा जिस चीज पे दिल करता वो मैं खा लेता हूँ। जाहिर तो नहीं कोई चीज ना पड़ी हो तो सीरियल खाने। हद होती है कसम से। इशारे कैसे तुम्हारी? सब कुछ पड़ा हुआ है। Dead center circle. ओ भाई साहब। You picked All Glory Gaming, Zute. All right. Yeah. First of all, as an NA resident, how dare you? I'm kidding. Second of all, right? What did you decide to pick All Glory Gaming compared to N-Hyper? Everyone else has picked N-Hyper. निकाल देंगे हम ये लोग पोजीशन इनके पास हाइट है। They can hold a good defense. They're in a good spot. They have 4 up, and Hyper only has 3. And with the way this circle shifted, it's going to create like a little buffer for them too. I don't think anyone's going to manage to full smash into their compound. ये 7 वाला उस्ताद क्या उसने अपने बंदे को उठाया? अबे उसके पास स्मोक कितने थे? उसने उससे पहले स्मोक किए और उसके बाद उसने 3 से 4 स्मोक किए। I'm believing कि 10 के अराउंड उसके पास होंगे स्मोक। जो 4 से 5 ऑलमोस्ट उसने पहले किए, उसके बाद फिर किए। निकाल जाएगा पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ये एक आधा किल निकाले। गंदा नेड था बे। अबे अभी तक स्मोक कर रहे हैं उस्ताद इनके पास, अब खत्म हुए। अभी इसके दूसरे के पास 5 स्मोक है। अच्छा अबे ओके वाले राइट से आए, ओके वालों को लेना पड़ेगा हाइप वालों को, वरना काम। अबे हाइप का एक बंदा नॉक हुआ इनको की तरफ से। इनको वाले की तरह, इनको वाले वो दूसरी तरफ से उन्होंने मारा है। ओके हो जाएगा रेज हो जाएगा। I mean, no, they're having to rotate every zone shift. I mean, they are, but I mean, I'm talking. गंदा पड़ी पीछे से। Right with the final circle. Okay. Yeah. So we'll see if that ends up happening as. उस्ताद गाड़ी के नीचे नॉक फिनिश। Shredded by Flamengo. This is the team right above them. This is a big fight here because these are 2 teams desperate to try and have a crazy game here and try to get in the run of that top 3. I mean, heck. बचाएगा अपने बंदे को। It's still big money here, Zute. Casualties going both ways though. Flamingo lost 1. GC got knocked. This should be. अबे किल निकालो बे हाइप वालों शानो। From another angle, that is Inko out. अबे ए 7 वाला। Did he get a knock? He did. Oh my gosh. Oh my god, 3 Oh, he goes down. 3 kill। He is for points. That's kindness. That was kindness from Hyper. That knocks Rebel there, but I do believe that he might have gotten that finish onto that player from Jaguar. Yes. No. Actually, I don't No, it's still 0 points. Yeah, it's still 0 points. Shit. From kindness saying, and Hyper. We're staying in second place for now, you know? एंड हाइपर का नॉक हुआ। Oh, GK first knock. GK first finished off. Oh, brutal. That's from Authority Sports. So Ed Hyper getting picked up. Shit. 2 players left. And with this zone, how many players are up? It's going to be tough. A lot of teams are pretty much beat up right now. Except for, Athon, All Glory Gaming, still rocking all 4. Next zone about to pop on over. Will it go to Alpha 7? Will we see a hard shift to the southwest? Is it possible? It centers up. Oh, I think Alpha 7's done.
there's not a dip that they could really use in the next zone. They're just going to be exposed here. And they realize it. That boulder not in the zone. Aton looking their way. It is done for Alpha 7. And Hyper's अरे ये लोग हाइट पे है ना एनएचपी वाले। हाँ हाइट पे है, लेकिन वो शाना पीछे से आके उसने नॉक फिनिश दे दिया है। इस बंदे ने, चोको ने। You have to get a chicken dinner and get a ton of eliminations as well. You have to fully maximize it because the times you वे बहुत प्यारा खेल रहे हैं बे इस सामन वाले। see Alpha 7 still hunting down, trying to make something happen, get some points. अबे अभी तक शाने के पास 2 स्मोक हैं भाई। Teams alive, Zute, and if my memory serves me correctly, I mean this is what 1 point. अब नहीं आते मतलब ये लोग जोन में मेरे जहाँ तक ये से। I almost want to see Alpha 7 just send one player for a huge spoiler role position, like keep them out even towards the blue. उस्ताद सर्कल के एज पे आ गए, पढ़ रही हैं इनको, लेकिन सर्कल के एज पे आ गए। The two-man push right out in the open. I mean, you're both just क्या 87 वाले ने एक नॉक फिनिश दिया है। to the likes of N Hyper, no less. And is that a rock that he found that Revo's behind? I think he did. Oh, is it in zone though? It's not in zone. It's not in zone though. Yeah, he's gone. He's gone. You can see him just hunting. This is desperation. You see that? Just left to right seeking. He's like a heat-seeking missile trying to find स्मोक तो सिर्फ बचे नहीं है मेरे ख्याल। हाँ सारे स्मोक कर दिए, हमारे 2 स्मोक थे जो इसने अभी किए हैं। 87 का एक किया, 87 वाले वो A7 अच्छा नो किल उठाया, चोरी किया है एन हाइप ने। उनका यही काम है मतलब ऊपर से दो किल उठा लिए। और वो A7 गई, कंपेटिटर जाए। ओके पॉइंट में नंबर 1 पे आ गए। अबे एंड्स वो हो गया, क्या उसका नाम है, अबे उनको 2 पॉइंट मिले अभी। अच्छा वो मिले है ना, प्लेसमेंट पॉइंट मिल गए उनको। अबे एनएचपी के लिए टफ हो जाएगा, पीछे से आ रहे हैं वो ओवरहॉल वाले, ओके वाले सॉरी। 87 और इनकी फाइट, और वो पीछे से आके जो है ना उठाना चाहिए उनको किल चिल। 99% victory chance, but is that apply when they only have जी मुझे नहीं लगता हम देख टीम से आगे पीछे जाएंगी क्योंकि दोनों पे हाइट जोन भी हाँ होल्ड करेंगी सारी ऊपर। Right now, if Ren gets this first knock, 80% chance of winning. There's one. Okay. खबर मिल रहा है नहीं। Reload. Gets caught. Oh, नाइस। Oh, kindness. The trade. Oh, I thought it was third party. A third party though is brutal overnight. नो यही मैं बात कर रहा था यार, थर्ड पार्टी की दोनों टीमें वो आ गई थी यार, उनके सारे नोक वो उठा गए, ये उठा गए पीछे से ओके वाले आके। उस्ताद उस पे कैसे कूद रहे, उस पे गरीब पे अकेले पे। Oh, F bro. What a game, man. Stage 9 after this. So, who's got more control of the center zone? I think Overnights have more positional power for sure. NHP is first now? Looks like NHP. Nahi. Yes. They really need to take every single point away. NHP first है मतलब 194 points। Okay. उनके 193 points हैं। 1 point से फर्स्ट पे आई है। Holy crap, man. ये मुझे 100% है पीछे से। बहुत गंदी फाइट हुई है भाई, थर्ड पार्टी जो पीछे से हुई है। ओह उस्ताद वो जोन में है तो फाइट क्यों नहीं कर रहे, वो फाइट क्यों कर रहे हैं, होल्ड करके खेल ले। नॉक फिनिश उस्ताद, नॉक फिनिश उस्ताद, पॉइंट्स है पॉइंट्स। डेड सर्कल 3v2 की फाइट उस्ताद। किसके पास ज्यादा है, एजी वाले जीते आएंगे ना ना, बहुत बहुत घमंड मारा इन्होंने।
लेकिन ग्राउंड पर बहुत ओपन वो टॉप है ना, टॉप रिज बहुत ओपन है, रिज कोई इस तरह पत्थर वगैरह नहीं है, एक दो पत्थर भी होते हैं ना ऊपर पे, बहुत प्यारी रिज थी ये टॉप थी। क्या कह रहे हो उस्ताद ओके वालों? ऑल गोरी गेमिंग, लेट्स गो। There is still 2 more games. Let's go, guys. किधर गया रामेश? ओ शाने, किधर है? इधर आ जरा। चौदह नाम चेंज करके आ गया थे A7 रामेश। हाँ देखा है भाई। 0 points. I think like maybe 1 to 2 placement points. And Hyper got more points than that, I believe. Does that put in Hyper in first? The choke position. Like you, Jukes, you said if they're in first place, you want them in first place by a mile. विकंडी नेक्स्ट विकंडी होगा और उसके बाद लास्ट रैंगल होगा, 2 मैचेस अभी पड़े हुए हैं। उसामा भाई आपके फैन आए हुए हैं चैट के अंदर तो। अबे होल्ड करके खेला है ना, एजीजी वालों ने होल्ड करके, फुल होल्ड करके खेला है। Why not? Give them confidence. Light that fire in them. And Hyper, please. Do it for North America. We'll be right back, guys. Who is in the top, bro? The last two maps. Last two map. Vikendi and then Arangal. अबे शॉटगन इतनी दूर से कैसे लगती है भाई? DBS वो भी। उस्ताद मैं इसके बाद गेम खेल रहा हूँ, मैं उठानी DBS। प्रैक्टिस करनी है DBS की। ये बहुत इंटेंस थी, ये बहुत इंटेंस फाइट थी ये वाली। यार A7 वाले को इधर फिनिश होना चाहिए था। शाह ने प्लेसमेंट के फिर 2 पॉइंट ले गए। ये देख उस पे किस तरह चढ़ गए थे, वो अकेला रह गया था, पता नहीं अकेला रह गया। बहुत प्यारा चिकन निकाला है यार एजी वालों ने, रन एंड गन के अंदर फाइट करके चिकन निकाला है। M249 उस्ताद। BGMI कब आएगा? आई थिंक BGMI स्टिल हैव एन आवर, 1 घंटे बाद। देखो कि मोटो छोटो किसी ने लाइव स्टार्ट की क्या? किसी ने लाइव स्टार्ट नहीं की। मोटल डायनामो कोई ना कोई तो लाइव करेगा। आई डिडंट इवन सी, लाइक किसी ने वो भी नहीं लगाया, स्ट्रीम का वो भी नहीं लगाया ना। It really was. I mean, N-Hyper had the perfect chance to take advantage of Alpha 7 getting eliminated early too. Yeah. You were able to mention this to me too, Cam. Alpha 7 ended up getting 0 LM, so that was like the perfect moment for N-Hyper. But they only exit with just 5 points. Yeah, but listen, you got 12 पॉइंट उस्ताद निकाले हैं ओके वाला ने। To be at the top of every single match is absolutely ridiculous. So, if 16 पॉइंट है चिकन निकाल के भी। आल ग्लोरी वाले माले, आल ग्लोरी वाले 6 एलिमिनेशन पॉइंट थे और 10 इनके प्लेसमेंट पॉइंट, 16 पॉइंट। लेकिन ओवरऑल सेकंड पे भी आके जो है वो ज्यादा पॉइंट 18 पॉइंट निकाल गई है। NHP कितने 5 पॉइंट, 3 अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट और 2 इनके वो हैं। A7 वाले किधर हैं? A7 अच्छा इनके वो पॉइंट प्लेसमेंट पॉइंट इनको सिर्फ मिले हैं। नाइस वे, बड़ी बात है, 2 पॉइंट उस्ताद निकाल गए अपनी टीम के लिए, बहुत बड़ी बात है। और पिछली टीम में जो निकाल गए that was more than enough for their team। 1000 पॉइंट, A7 600, A7 के साथ गंदी बहुत हुई है। जानी आपने मुझे टाइम आउट पे क्यों लगा दिया? मैंने नहीं लगाया, ऑटोमेटिक स्ट्रीम लैब की तरफ से होता है अगर आप 4 से ज्यादा इमोजी करो तो।
high ground once again. They were sort of peppering teams at range once again, but it wasn't quite so oppressive of a high ground. And you saw what happened when they got pushed by 2 teams at once, and that was even after they had. जिसको फरूक ने स्पोर्ट किया वो गया, ऐसी बात नहीं है। उस्ताद पहले नंबर पे बैठे हुए हैं अनहाइप वाले। लंबी नहीं करो, अभी आएगी आप लोगों के सामने यहाँ पे। Get on the high ground, get a bunch of eliminations if you can, but it just didn't, it just didn't work out for them. And for Alpha 7, I thought they were actually able to kind of make up really good points there when it came to just placement points, because they were able to survive for a very long time when they had a lot of teams hunting them down. I almost expected an intense game to be here in our top 5 just because of watching CLO. फुल ओवरऑल दिखा दो यार। नेक्स्ट मैप विकंडी होना चाहिए नेक्स्ट मैप। बहुत गंदा, अगर विकंडी मैप है तो नेक्स्ट बहुत गंदा मैप होने वाला है। To get those final eliminations, so didn't rack up those damage points for that chart. But it was when you have a definitely player, watch. you have a player just 30,000 backing off and then jumping and backing 5 HP. Engage points. I like the animation cancel, just didn't work out for them unfortunately in the end. But gentlemen, we know Alpha 7 was in the lead going into this match, and Hyper caught up a bit. Yeah. Will it be enough for them to actually overtake them into first place? Let's take a look at our overalls. And 1 point. They actually overtook. Ooh, let's go. Let's go. N-Hype with 194.1 point even though. Oh भाई साहब, नेक्स्ट 2 मैचेस पड़े हैं उस्ताद, क्या कह रहे हो? लेकिन थर्ड और फोर्थ की पोजीशन बहुत इनके लिए बहुत टफ है। लाइक ऑलमोस्ट इनको 25-26 पॉइंट्स चाहिए इंटेंस गेम को आउट टॉप पे आने के लिए, लेकिन हाइप और अल्फा 7 इनकी टसल है उस्ताद फुल टाइम। ये मैच अब डिसाइड करेगा। बहुत होल्ड करके आराम से खेलना पड़ेगा हाइप को A7 को पीछे करने के लिए। इंशाल्लाह NHP, let's go guys. Because of what we've seen previously, some teams being able to I'm just wanted to say that I subscribe and like and share the live stream I'm watching the YouTube channel, and the live stream was okay. Should be ahead in placement, so they would actually win out in that tiebreaker if it obviously does go to that. But as you take a look at the second page here, not really much movement. I mean, obviously our three eyes, our combined 6 eyes are all focused on the top at the moment, because again, it's the $25,000. It's the honor of being called the best team in Americas, and it's the honor of representing the region at PMWI as well. But 2 matches, man. I mean, if we compare, let's be blunt here, N-Hyper and Alpha 7, let's just focus on these 2 teams. Alpha 7 have way more experience in situations like this with the pressure being insurmountable than I would say N-Hyper has. Oh yeah, 100%. I mean, if I had to put all my UC on one team, it would definitely have to be Alpha 7, just because of what we're able to do. ये दे आ रही या उस्ताद, ये तो सारे UC अल्फा। क्या हुआ? क्या मैं इतनी देर से बोल रहा था डिस्कॉर्ड पे आवाज नहीं आ रही। Oh. Clutching out, and this is something you and I were actually talking about, right? We're not used to seeing N-Hyper being able to be that team that clutches it out, unless हम भी स्ट्रीम ज्वाइन करने चाहिए। एक मिनट चेक करने चाहिए। एक मिनट That you have YKG not performing this event, and Hyper got second place in दिखाओ। So what happened at Hyper from now till then, or from then till now, that they also start to rise up? And as you focus on Vikendi, are N-Hyper even going to be on the radar of teams? As you take a look at the stats here. Ooh, they are. Okay. We knew that Alpha 7 would be good on Vikendi, but this is not so far away for N-Hyper that we... What? ये कितने मीटर पे है बड़ा? 387 पे ज़ूम इन करो। But to answer your question though, सब छोड़ा, सुने तो सही बोल क्या रहा हूँ। एक मिनट, मैंने नहीं वो सुना। सुनाओ, तूने स्क्रीन शेयर दी हुई है, सॉफ्टवेयर शेयर दो ना। They did the same thing as well, right? But their fundamentals were so much stronger, and I expected that to translate ये क्या बात है? ये तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा था मैं। What is this behavior चारिक भाई? ये बढ़िया था उस्ताद। It's pretty much right around the corner, but it's time. Let's head into our penultimate match. I don't want to wait anymore. I don't want to keep you guys waiting. Go ahead. Hey, just take us into it. Let's go. Right around the corner. Okay, May, June, July, 2 months. Okay. जुलाई के अंदर है ना? 2 games left. All right. 2 months and 2 games. Let's go. Games left.
nice trip, right, with their teammates, meeting them, right, hugging them, and saying, "Hey, we're gonna make some more money today or not." And it all comes down to this, Zute. Is it gonna be Alpha 7? Vikandi, let's go, guys. I told you, next one is Vikandi and last one gonna be our angle. Below 'em. If it is gonna be one of those teams right below them, this is the match. The Candy, the Icy Tundra. You got ओए हाँ गिव अवे 1 मिनट वेट करो मैं करता हूँ स्टार्ट मैं करता हूँ मैं जेन में ही नहीं रहा उस साथ और ट्वीट कर रहा था इस वजह से यार एक काम करो पहले ट्विटर पे जाओ भाई का ये ट्वीट है इसके ऊपर जो है ना लाइक शेयर करो और बेस्ट ऑफ लक NHP लिखो सारे जाओ जाके लिखो बेस्ट ऑफ लक NHP एंड हाइपर गेमिंग टैग करोगे टैग आपका हो जाएगा उसके अंदर ना और ये मैं आप लोगों को ट्वीट दे रहा हूँ इसके पे जाके इस पे सारी डिटेल है आईफोन 14 Pro Max के गिव अवे की लेट्स गो गाइस मैं 1 मिनट फिर गिव अवे स्टार्ट कर in Trevno, so we could drop a circle right there. Let me make that a little bit bigger for you guys. Ooh, Yeah, let's make that really big. So Alpha 7 to the far northeast in Hyper, down towards Winery. First place and second place team, right there on your screens. Where is that zone going to go? That's going to be the big question, right? This Candy, we've seen it plenty of times where these zones like to do a nice shift into the water. If it goes to the north or to the south, it's going to be a huge advantage for one of these teams, and it's going to actually center up. All right, Zute. It's good for both teams, I'd say. I got to agree. What are you really looking at when it comes to this kind of rotation for them? As far as rotations, I know that, I think I've seen in Hyper just really favor Mount Kresnik, obviously, because it's center zone and it's the high ground. But from memory, I recall in Hyper being up on Mount Kresnik on a couple of Bikini games. So I think they have a rotational pathing there. As far as Alpha 7 is concerned, they have a lot of options, right? They like to take in from the edge side. They like to take those fights. They don't really go dead center. So I think it comes down to the future circles as far as what Alpha 7 is going to do. Alrighty. Well, Alpha 7, they thrive so many times, right? Playing that edge style. And can they continue it here, right? Are they going to be the team to choke? That's going to be the question. Because it's only this game and one more. If they have a rough one here and Hyper pops off, they're going to be behind the 8 ball. And we talked about it a little bit earlier, Zute. Last game, okay? How many आज क्या times have we seen the last मालिक क्या कह रहे हो आते ही कोई एक टीम अंदर बाहर भी हो गई है ये कौन सी टीम है Inko feeding off the chosen? व्हाट ये इन बेचारों के साथ क्या हुआ है Inko's in a little bit of a yeah, they're pretty tough. So They're going to need a lot more. Yeah. And they need to hope that these top two teams do nothing. टीसी वाले बाहर हो गए साल क्या कह रहे हो लेट्स गो गाइस नेक्स्ट गिव अवे स्टार्ट होगा FCIT आप लोगों ने चैट में लिखना है #FCIT इन द चैट गिव अवे स्टार्ट हो गया जो भी विनर होगा विल गिव देम 600 UC लेट्स गो यू गेट अ चांस टू विन 600 UC बट अब विनर हम पिक करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मैच आफ्टर लाइक 500 and 650 likes I would say 700 likes given or take तो सामू भाई कम बैक अभी तक सोया नहीं है सुलाने गए या खुद ही सो गए हो सामू भाई This is going to be an absolute battle right here between these teams. Intense game. How do you feel about intense games play so far going into this last couple? They haven't been bad. It's just Alpha 7 and Hyper. If it's not one or the other, pretty decent zone. Let's see. Right? We saw that Erangel game 2 games ago, both in Hyper and Alpha 7, even though they lost players early, made it all the way to the NHP क्या कर रहे हैं वाइनरी के ये वाइनरी नहीं वो दूसरी ऊपर वाली जगह ना I can't even blame intense game. They're playing pretty decent and it's just खुले उस्ताद यार NHP को अभी तक मैंने नहीं देखा ये लोग नहीं उठा रहे शॉटगन्स वगैरह आई थिंक इनसे चलती नहीं है शॉट डासिया उस्ताद ये क्या बात है भाई नेड उस्ताद इनके बहुत अच्छे हैं इतना ना खान जी के सामने लाओ आज टीम को पहले मैच देखो शारिक जाके
कौन से हम मेरी स्ट्रीम का पहला मैच, हाँ। अरे मैं हॉल में था, पता है मैंने कहा कि खेलते गेम, जब मैं आया तो ऑफलाइन में। अबे नहीं यार, इतना तुम मेरे गेम देखो, गेम में क्या हो रहा था। लास्ट गेम जो तुम देख रहे थे ना, उसमें इस तरह के इवेंट ही वो नहीं हो रहा, रेंडर नहीं हो रहा, बुलेट ही रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। ये 7 वाले शाने किधर हैं इस टाइम पे? टेस्ला, FLA का एक नॉक और उनका भी एक नॉक है, AGG वालों का। NHP जिंदा है भाई? जी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है उसामा भाई। उसके हाथ से हाथ निकालो ना, मतलब फिर उड़ जाता है वो। ये बढ़िया था। शाना है वो बहुत। यानी आप पे गया है, अब ये कहना चाह रहे हैं। सब्र करो उस्ताद, थोड़ी सी आपको 2x स्पीड में दिखाते हैं। ओ साथ मैंने 2x पे इस वजह से किया कि वो स्ट्रीम बहुत पीछे था। दस्ती मरवा दिया, दस्ती मरवा दिया उस्ताद। गया ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 100% कंफर्म। ये नेट तो इसका अपना इसी पे फटेगा लूप। उस्ताद क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? इनको को अंदर भाई कर दिया लूपर्स ने। 2 बचे हैं, रश हो गया इनके ऊपर, जैगवार ने रश कर दिया। गंदा नेड 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 मोली कहीं और से पड़ी है उसको। अबे रुक जा बे। अबे ये क्या किया इसने? ये क्या किया इसने? You have to split that jump versus launch yourself over. That's jump vault buttons. If they're not split, that's going to happen every time. अबे उसने देख लिया था। Circle shifted by the way, Jukes, and Hyper's not center, but I think that's because we don't know if it's going to the east side or the west side of 3 टीमें उस्ताद अंदर बाहर Alpha 7. गई, 3 टीमें। Hard to the edge, like they're all the way to the east, touching the blues still. They're really waiting to see where they need to strike. In Hyper, moving a little bit closer, deeper into the zone. Intense game. They're on top of Mount Kresnik, but it shifted a little bit to the east of Mount Kresnik as far as the center zone is concerned. अब वो A7 भी थोड़ा दस्ती मर जाए ना अभी। वो मरना चाहिए भाई, वो आराम से खेल रहे हैं वो इस टाइम। एंगेजमेंट वो कर नहीं रहे। अगर अहमद भाई आया ना A7 रख के, इसको मैंने टाइम आउट या हाइड मारना। वो आ गया, नहीं वापस आ गया, पैसे ड्रामेस पे आ गया, लाइन पे आ गया ना बस। उस्ताद आई नीड चल रहे हैं फुल टाइम तो। The Americas Championship. I mean, this is one heck of a lobby to go against. Definitely so. Panthers right now find themselves in front of Influence Kamen. Influence, the desk already has counted them out. You know, they had a huge comeback on day 3, a miracle run. They finished first in the first 3 games, and then they won the very last match of yesterday as well. ये प्रोडक्शन टीम को देखना चाहिए। अबे प्रोडक्शन टीम कितना टफ होता होगा प्रोडक्शन टीम पे, स्पेशली इस तरह में, किधर फाइट हो रही है किधर नहीं हो रही, किधर पे एकदम इधर से उधर, उधर से इधर, किधर ज्यादा इंटेंस हो रही है उस पे लेके जाओ। क्या कह रहे हो? NHP वाले तो नीचे बैठे हुए हैं, कैसल से बाहर निकल के एज पे बैठे हुए हैं। उस्ताद गए ये लोग, टाइगर वाले गए, टाइगर वाले गया। Leading the charge for his team. Oh, and it looks like Quan. Oh, actually, the Panthers getting a huge advantage. Shotgun, bro. From Kowalski shuts down Nate. Man, the DBS is just so brutal here. Yeah, he peeked out for less than half a second and just instantly went. गंदी पड़ी है उस्ताद, दोनों गए, बाकी दोनों भी गए, नेट से गया वे। Quan is still up. The Panthers 87 वाले गए।
pretty sure I saw 2 of Influence knocked, and the Panthers Look how still had 3 up. Both teams are trying to get that right side advantage. Influence got it onto Quan, and that's it. Influence coming, do lose 1 go. You want to keep all 4 up if you're one of the teams not in the top 2. शॉटगन से कोई मरता है ना मुझे बड़ी हंसी आती अबे अजीब है कसम से, मुंह पे चपेट भरती है ऐसे शॉटगन से पड़े तो। Trying to make something happen. They still have 4 up, 0 points though. 0. A7 वाले किधर है? A7 वाले पे कैमरा अभी तक एक दफा भी नहीं लेके गए। The manpower is to make something है। happen. 0 किले उनके छुपे बैठे हैं। Start doing it. कहाँ तक हम पहुंचे हैं? Let's go 600 likes पे विनर पिक कर लेते हैं ना यार। 600, let's go for the 600 like. We'll pick a winner on 600 like. To look in case they need cross to the east. 39 एलिमिनेशन है उस्ताद एनहाइप की तरफ से 3rd नंबर पे और फर्स्ट के 43 एलिमिनेशन। एच पे खेलें यार, एच पे खेले कर लेंगे लेकिन एच पे ये भी हो सकता है बाद में इतनी टीम्स होती है आपके हाथ में हलक में आ जाते, हाथ में भी नहीं आते हलक में आ जाते, समझ रहे हो ना? ओके हाइप वाले पूरा जो है रोटेशन। Risky. It's another Hail Mary rotation, but if any team's good at doing those, it is in Hyper. We've seen them do it time and time again, and bam! Touchdown right into center zone, and they have visuals on the eastern side in case of shifts, but it puts them in sight lines of Alpha 7. ये वाले घर अच्छे नहीं है यार, राइट साइड पे जो ऊपर पे एक घर है उधर ले लो, वो वाला अच्छा है। East versus west. That's right. One bridge. निकर रहे उस्ताद। An icy lake separating the two. And I really like how Hyper is being extra careful to secure these vehicles because they know if that zone hard shifts away, they're going to need them. So शेक भी है इनके पास। ओके beautifully. So man, this अच्छा ये A7 वाले, अच्छा ये जो A7 वाली लोकेशन ये मैं कह रहा था, ये वाली लोकेशन इनको लेनी चाहिए, बहुत प्यारी ये वाली लोकेशन है A7 वाली। इसमें से नीचे भी नजर आता है, लेफ्ट राइट से सिर्फ बैक आपकी बैक पे आपकी हिल है और बैक आपका कवर है ऑलमोस्ट, देख रहे हो? क्लियर तो देखें आगे पीछे इनके। हाँ वो वाला घर बहुत अच्छा है यार, वो वाला घर बहुत अच्छा है। बहुत हमारी उधर फाइट हुई है, शारी को याद है। गॉडी एक डैमेज करवा दिया इन्होंने। वो A7 वाले उधर देख रहे हैं। अबे ये अनहाइप वाला क्यों इधर लेफ्ट पे जाके अकेला लेट गया शाना? यार ब्रो नो, इसको वापस आना पड़ेगा। अबे नहीं, गाड़ी में बैठ रहा है फिर उतर गया। अच्छा बैठा हुआ है अभी। He's not even here running around. His car is parked and ready to jet right back to his teammates. Oh. Because foot is on the pedal right now. Like, yeah, it's just hovering. नहीं ये देखा ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये वाला घर ठीक नहीं है यार, वो सामने से बहुत उधर से पड़ती हैं। Straight down to the floor the second he hears a gunshot. And I don't think he really, yeah, I don't think he really has to worry about a bolt action hitting his head because no one's using them. This is just, it goes to show how much adjustments Hyper has made. You know, NA, they play huge 1-1-1 splits. Here, they condense it down, but they take it a step. Let's go guys, only 20 more likes के बाद विनर पिक कर लेते हैं हम। Right? All he needs to do is be there to use his third eye button and move it around. You don't even need to take a shot. And QZZ, he's moving around. निकल रहा है अपने टीममेट्स के पास वापस आ रहा है। Come on, no का। And it goes over to Alpha 7. Oh, okay, all right, but it's gonna lean more towards the north, so we could still even see a shift headed in that northern direction. If it does, it's gonna be a pretty interesting rotate from Hyper, but they're gonna have to watch out because Hyper is gonna have to deal with all these teams on the way in. Alpha 7, not really. And Hyper's rotating, by the way. QZZ is going across. My big question was like, are they gonna sit or rotate? It's pretty scary to rotate with Alpha 7 right in front of you. Let's go guys, only 50 more likes to go. उस्ताद क्या कह रहे हो? Can he get a second one? Oh, it looks like he was going to. And his teammate finds the second one. Royals of War getting cut down. Federal getting popped though from that side. Influence Kemen not trying to lose any players. Little boy, full setting it on in. Gonna go ahead and secure those points. Yep. Oh, actually, he's not gonna have a chance to. पीछे से पाड़ी। Oh, that's Overnight that stole the points away. I'm surprised the boy didn't try to get that confirmation.
पड़ी। And oh, ओ भैंस की आंख बे, थर्ड पार्टी। oh, that's it for influence. That's it. Third party, fourth party, all the parties are here. थर्ड फोर्थ सारी पार्टियां उस्ताद इधर ही चल रही हैं। Involved. Intense game, by the way. Still has Whoa! made a move. They still have 4 up. If they ये किधर से इसने मारा? उधर से होल थी ऊपर। be a lot of points for them, and it does look like they're coming this. Did he get it from the hole? There's still a lot of fighting to be had here. Overnights versus Jaguar now. Two teams, pretty relevant fights on the leaderboards. I am currently looking वो भाई साहब these rotations, trying to see क्या कह रहे हो? ओके वाले still up. Intense उस्ताद नेडो पे नेड। They're going to be pushing on to overnight here in the next few seconds. And then you have, of course, N Hyper and Alpha 7 just deadlocked, just waiting for anybody to push against them. Yeah. उस्ताद 3 नेड है, ये तो हल्के में नहीं आ रहा। नेडो पे नेड। Across the river, but then he decided to come right back. So they're locked in the same position as we saw previous. The big fight happened. Nice nade. It's more important to see if Intense Game will push depending on how this fight goes out. In Intense Game, they're a little bit away, I'd say. It doesn't look like they're poised to look for a third party, but more poised for a rotation in case the circle shifts to. उस्ताद लग गई आग। अपनी मोली किसको लगी है? See very soon where it goes to. This next zone is going to be intense. उस्ताद भाग 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 मोस्टली के भाग। Why did I jinx it? The zone ओह is up to Cosmodrome. एंड हाई रोटेशन। What do you think about this one? Make a move. And Hyper's got to make a move. Alpha 7, that puts him right on the edge. Eliminate. Jaguar is eliminated. On the edge of Let's go. Feels like overnights, intense game. Let's go guys। यहाँ पे अभी भी 12 लाइक्स रहते हैं यार। Let's go for 12 likes. They're in the sidelines of Alpha. Let's go for 12 likes. Teams looking to control that bridge now. Oh, goodness gracious. This zone has spiced this game up big time. This is the second to last game of this tournament, everybody. No, ऊपर से पंगा पड़ सकता है। No, 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 no. It's gonna be tough from the top. They got that. Come on, क्या हो रहा है यार? Big time. This is the second to last game of this tournament, everybody. अपनी वाली चलाएं जो पहले चला रहे थे। वही है। Their vehicles now super beat up. They're on foot. They got that thick tread, and they are full sending it, trying to find a good spot in this next zone. But they have to really watch for those oversights. यार इनकी बैक पे बंदे हैं और Oh man, and Hyper. What? I was gonna say they gave up the vehicles, so they can't rotate anywhere. They still try on foot. Kindness with some decent shots, but it's just brutal. Talk to me. This is what you get. come on. No, don't say it. That's a Don't choke say right it. there. Don't say it. It Intense is can save them though. intense Then you game. have to worry about Intense Game afterwards. The magic, intense game, helping out and Hyper big time, allowing them a little bit of breathing room. They have to get on the move here. This zone is just so brutal. And intense game, battling out with overnight. They need a whole bunch of points. You can see who's going to win this map. Alpha 7 all over the board. I'm going to go with YKG on this one. Let's see how intense game's going to take this fight. DBS shot. Got him. Oh, Not GK. good. Oh my God. Do not go out to overnight. And Hyper. Overnight. Not like this. Oh. Not like this. They're scared. You can just see it in an Hyper. You can see their movement, their rotation. It's nervous. Fuck bro. And Hyper in first place What have you done, versus N Zute? Hyper in second place. I told you, Jukes. If they're in first place, their mindset is like, oh my God, we can't mess up. We can't make any mistakes. And of course, with that kind of pressure, mistakes are made. Heal Ren हो trying गया। to salvage things. Never mind, he's not. बस दूसरा नेट भी मारा उसने। Yeah. Oh, the circle goes that way. It helps him. It helps Rin. It helps Rin big time. Alpha 7 are refusing to get एक ही बंदा बचा है ना NHP का। any engagement right now. They're just watching the feed and watching and Hyper go out. And they're like, you know what? Let's just chill, baby. Let's just try to get any points now at this point. Leave it to the last game. The problem is, Intense Game needs points, so they're hungry. अब दो। Oh, Rin is oh, He didn't see him? How did you not see him? Oh, I think he saw him. A Gremlin. Yes. And Hyper. No. Rin. Smoke कर अपने पे smoke कर hype. One more smoke. No, the nades are bouncing off perfectly. Rin survived. Rin. Running. Right into the shots of a Gremlin. There's no way. Oh, he found another rock. Nice adjustment. He found another rock. Oh, he's gonna throw a nade. इसको दूसरे मार नहीं रहे ऊपर वाले। ओके वाले क्यों नहीं मार रहे?
toes. All in due time. Sheikh No Samir one's gonna even subscribe to the contest channel. gaming No! hardship side. Yep, it's over. One point. 1 point. And now here comes Alpha 7. But Jukes, this will put in Hyper right where I need them. Right? They'll be second place. Fuck bro, ये रोटेशन गंदी है यार. टनल के अंदर कौन जाता है जब पता भी ऊपर से पड़ेगी. By how many points? अबे ये आपस में क्यों नहीं थे लड़े उस टाइम पे. Tense game. If they win this match, if they can take out Alpha 7, tense game all of a sudden could be a number one as well. You know, fighting for that first place in the very last game. So it's a three-way brawl. I'm glad I picked that YKG. They just got destroyed by Dope Slayers. So GG YKG. Oh, I didn't even notice that. Yeah. Oh, close giveaway करम boys. Pick a winner. PUBG Shorts अपनी ID लिखना चैट के अंदर. Fair though, Alpha 7 is who we got our eyes on. Intense game. अभी भी अगर A7 वाइप हो जाए ना Intense मतलब game, if they're able to अभी shut भी down Alpha 7 very तो भी early, इतना like, मामला honestly, खराब this नहीं is a होगा big ना. fight. They need to go against each other. Intense game needs to take out Alpha 7. Come on man, seriously. And then win the game. It's gonna be tough. 'Cause Big F bro, big F. players up. It depends on where this next circle goes. It'll be a huge ये 7 वाले तीनों के तीनों alive हैं बे. on the west side. चारों सॉरी चारों alive हैं. एक नॉक हुआ है 7 का. बस ये अभी नहीं ये 7 का नहीं है, ये 7 का नहीं है, वो FLA का है. Alpha 7's gonna have a much easier time dealing with intense game, and then they control pretty much the entire zone. Bray. Dope Slayers, 24K. Jump shot. Got him. Secure the point. Even though they went out completely to Dope Slayers. GG. On the pick. Dope Slayers. ओ भाई साहब. नेट से नॉक हुआ, DBS से फिनिश हुआ. Favor for intense game. PUBG Shard इन गेम आपकी आईडी क्या, इन गेम आईडी बताना आपने. 2 though. यार इतनी गंदी रोटेशन कैसे ले ली बे. Have to fully The push. reverse. ये तो क्लासिक में हम टनल में कभी नहीं घुसते. Like that? चारों तरफ पहाड़ियां और दोनों पे उस पर स्क्वाड खड़े हैं. हाँ. नीचे फंस गया बेचारा. So they should have all vehicles up for an execution of some sort. They're just looking for that opening right now. एक किल भी निकाली, ऊपर से पोजीशन भी है 1 2 3 4 5. अगर अभी भी फिनिश होता है 5वीं पोजीशन, 4 पॉइंट. Just barely in the edge of zone. And that might be where they're 2 पॉइंट. because they're just going to farm everyone on the east side. They're going to take all the points away from intense game here. Flamengo trying to नॉक get फिनिश भी something दे going, दिया. but- नॉक फिनिश उस्ताद दे ही नॉक फिनिश रहे हैं. That's 24K. Looking at, he smells something. Oh, nice little bounce. He didn't cook it at all though. मैच है ना इसके So बाद it एक doesn't और. matter. Yes. Not gonna hit the mark there. How about that one? Bray not coming up. ओ जोन से नॉक हुआ. Yeah. That's pretty fun. अबे क्या गंदी लक बे उसकी बेचारे की. And Bray, yeah, Bray ain't gonna make it out either. This zone is just chunky. He's gonna make the run quick. DBS shot. Oh, does he have it? No. He had to hit it. Nice revenge for 24K. All right. नाइस नेड है 7 पे. Flamingo saw us 3 up. Flamingo could do something as well. And Flamingo are in the zone, gatekeeping kind of. Alpha 7, intense game on the offense. क्या नॉक निकाला बे शाने ने IGM ने. G still has one that could. अबे उनसे फाइट लो यार दूसरों से. But intense game are so focused. ये They're सेवन picking से off ना. points. हाँ. They know they need the points. That is 2 knocked. Not 2 confirmed just yet. उनकी पोजीशन अच्छी है मतलब. इन गेम नेम बताओ आज PUBG Shorts अपने इन गेम नेम बताओ. They need to focus on. Oh, what a nade! Alpha 7. That's huge. Carrillo. फुल नेम बताओ अपना. That's it. They're gone. वो Intense नॉक game हुआ is नेट से. sweeping the entire lobby. All Ooh! one slow A7 के साथ क्या हुआ है. choke. A7 के साथ क्या हुआ है. And they're doing it. गई ना नेट से 2 नॉक हुए थे. I'll tell you एक what. वैसे नॉक हुआ. I knew YKG Last was gonna वाले का happen पता for नहीं. Alpha 7. That is why I want to see that replay man. I knew it was gonna happen. Ooh. What can I say? Too good. And there we go. Second place finish from सही है PUBG Short. 24K about to wipe the entire lobby by himself. Psych, it's intense games. Aim to Shit, win. फिर आ गया अहमद भाई. Elimination point. हाँ. And make that YKG. 10 with the chicken dinner. गंदा चिकन निकाला बे Intense game. इंटेंस गेम वालों ने. That's 30 points. ओके. ओ भाई किन्होंने पॉइंट निकाले. 20 points. 20 points 20 point. 10 points, 10 elimination 10 elimination point, 10 placement point. I don't know. It's definitely
It's definitely a three-way fight now. For first place. Holy shit. And is Hyper in second place or third place? This is getting intense. That was a huge game. That was a huge game for Intense Game. Oh man, Intense Game could have asked for a better time to really clutch it up. I mean, well, could have asked for it a little bit earlier, but getting a chicken dinner here with 10 eliminations is huge. Now they were able to shut down Alpha 7. Yeah, in a pretty perfect time, right? It's not like A7 got a ton of eliminations. Now, that's also going to hurt in Hyper. We know for a fact that Hyper didn't put enough points to really maintain that first place position. But that's what you want to do, right? You want to see them in second place until the last game. OMG. Right? Can you give A7 choked hard lol. Oh my god. No. It's like 4-1-1. if they were in first place coming into this game, they're gonna choke. And Ragnar Gaming subscribe to the channel. Ragnar Gaming? Nabil bhai, did you subscribe? Thank you so much, Nabil bhai. If you just subscribe my channel. They're not good under pressure. Thank you. Now, they're not in first place. One game left, Jukes. One game left. One game left. Don't go anywhere. We'll be right back. 515984. H. Five 505. Okay. PUBG शार्ट आपके यूसी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, अपनी मेल से जाकर रिडीम कर लो, ठीक है? आया बॉयज. IG will not go quietly into this night. They are living for another match here and trying to keep themselves in that running for first place for Alpha 7. And N-Hyper are trying to secure the wins, but N-Hyper getting caught on that rotate there out in the open. I think all three of us at the same time are like, what are they doing there? I agree with Zoo. That was a choke. I don't know what they were doing. I understand that they were in a very difficult position to have to cross that cavern, that ravine, whatever you call it. But thankfully for them, Alpha 7 also weren't able क्या कह रहे हो उस्ताद? 6 पॉइंट फिर भी निकाल गए A7 वाले. 20 points overall, potentially क्या लगता है? हो गया ना मतलब. गिवे हो गया. नहीं करो, अभी स्पैम नहीं करो उस्ताद, अभी स्पैम नहीं करो. Yeah, what was actually surprised at is the way Alpha 7 decided to play that Vikendi. They decided to be super. Why I'm looking like bro? They realized that they had the ये क्यों लगा लिया इन्हें काम? मैं बस मैंने कहा पड़ी हुई थी बाहर, मैंने कहा लगा के अंदर चलता हूँ उस्ताद. So I hope it wasn't Alpha 7 maybe switching things up because they were kind of. अजीब सा लग रहा है. मोबाइल स्नैचर लग रहा है मत भाई आप. हैं? हाँ, मोबाइल स्नैचर लग रहा है. कौन से वाला? जो यहाँ छीनते हैं कराची में. वो भी इतने चीसे होते हैं क्या? अच्छा सॉरी. नहीं अचानक लगा के कपड़ा बांध के आते हैं. ओ भाई, अब मसला ये है कि फाइनल पॉइंट्स कितने बनते हैं. फाइनल पॉइंट दिखाओ यार, लंबी कर देते हैं, फाइनल पॉइंट नहीं दिखाते यार. ये बजाओ बे 2x पे. यार गंदा सीन हुआ यार, बहुत गंदी रोटेशन थी. वो पीछे से ऊपर से भी नहीं, ऊपर रोटेशन ही कोई नहीं प्रॉपर बनती थी, क्योंकि फर्स्ट हैंड पे जो रोटेशन दी थी वही इन्होंने बहुत गंदी रोटेशन दे दी थी.
That's a lot of limbs. 10 coming through. पावर प्लांट वो उसके वो क्या सर रॉकेट वाली जगह पे चले जाते हैं ना फर्स्ट एंड पे ही देयर इज अ हाईली चांस कि ये लोग कर पाते हैं. If you're Alpha 7 and you don't get the start you want, if you lose a player early, खैर है सेकंड पे तो होने हैं अभी एक हाँ? मैच का चांस है ना. हाँ लास्ट मैच है ना मालिक अंडर पॉइंट वाला सीन है और फुल शटे टाट वाली सिचुएशन है इस वाले में. being so low. Not a single one of them received 100 points गलती of की damage. गुंजाइश That नहीं. shows बिल्कुल भी नहीं है गुंजाइश. आप कह रहे हो गलती की गलती है ही नहीं. execute on the eliminations to get. What's impressive too is just it's not Adrian anymore, right? Now we're seeing McGrellan as well. We saw Cielo what he's been able to do today. He's been able to clutch up big for his team, and that's what you want to be able to see out of this team, especially going into the last match. या हाँ उनके लिए प्रॉब्लमेटिक वो चीज होगी ना या इन डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगी थी. इस वजह से बेचारों ने वो सीन किया ही नहीं है ना. really screwed up in hyper, catching, I believe, 2 players as they were trying to transcend that hill. No. If you're running out in the open downhill like that, you don't put that on the person getting the easiest kills imaginable. Can someone explain how the WSB team doesn't even have a social media Why did they wait so long to presence? Nothing made sense about When for 700 voted 25 in 3 days within. But I'm surprised they weren't just hugging that wall, man. I'm surprised they weren't doing literally कोई कहाँ शिकायत आई भी है. और ट्विटर के ऊपर say, hey, you know what? Hey, you guys want to shoot me? Unknown did it though. He did. He very did. 25,000 उन्होंने वोट उठाए हैं. In the butt. But पता let's नहीं. see up against Alpha 7. नहीं ना 20 से 40 सेकंड 20 से 30 सेकंड में. ओ 20 से 30 सेकंड में और मिनट में 20 से 30 मिनट में. अब मतलब आधे घंटे में उठाया ना. यस But damages give you points. Limbs do, and it's more limbs for intense game. That's a bit of a shock. I guess it just must be from the previous round that really put intense game over the line. This makes me really. अबे यार इसका तरीकाकार ये है उस्ताद. यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से कुलट सारे करो. ये पकड़ो ये लो सारे पकड़ो उस्ताद इधर से. But the fact that the points are above Alpha 7, and we know that N-Hyper aren't gonna be too far away from Alpha 7's numbers either. Intense game. टाइटल वाइटल भी निकाल देता है सर. हाँ ना. 7 and Hyper that they haven't been able to put up a lot of numbers in Miramar and now in Vikendi as well. So they should have allowed Intense Game to push up and maybe catch up to one of them. Well, we can actually see that if you guys want to. Holy shit! A799, Intense 97, Hyper 95. Means that this final round is going Fuck man. a lot at stake. And with the gap from third to तीन टीमें मालिक. वाजिब हो गया चिकन अहमद भाई इसमें. मैं कह रहा हूँ वाजिब फर्ज सब कुछ हो गया उस्ताद. three of them, there's no excuse, there's no reason to go for a hot drop because like if N-Hyper, realistically they couldn't fall down to fourth. But even Come if they on, fall seriously. to Alpha 7, that just gives the game to intense game. So like चल क्या रहा है मालिक? None of them are going to be hot dropping. I think they're going to be trying to play their game, and I think they might actually be trying to mix things up because, as you can see here, everybody in the first page is super close in regards to being able to move up or catch up the person above them, except for third and fourth, obviously. I'm wondering what the other teams on the second page are going to be doing. We're already seeing YK. No, I don't want to go there. I don't want to go there yet. You did 7. Oh my goodness man. जगह पे Put a lot of damage and नहीं मालिक शॉट. we see overnight what they just did to N-Hyper as well. And मालिक सीन टफ है ना अभी सीन टफ है. somebody decides to chase one of the top teams. So there's something interesting happening here. मान भाई कैसे हैं? वेलकम टू द स्ट्रीम. Intense game, win in the tiebreaker right now with 4 chicken dinners. That's first thing I wanted to mention. Second thing is, if you're one of those bottom eight teams, you've seen this happen in the past. Why don't you just hot drop Alpha 7? Why don't you hot drop in Hyper? Depends what region you're from potentially. Maybe you want to support your countrymen. If you're one of those top 3 teams, you better have like a third drop spot to go to right now because I don't think you should feel safe. I don't think you should ever drop right now where you would normally drop because you know teams could hot drop because they have nothing to lose and you can ruin your entire chance. Yeah, I mean these players know each other, so they should know the sort of like vibe of the room. Like say you're N-Hyper, I'm overnights, like how I'm looking at you, right? Like you should be able to tell like if I'm about to hot drop you or not, or what, like, you know, so they communicate and stuff, right? Like it's a community, right? But you're right, they should absolutely have at least one backup, if not 2. Well, I mean, if I'm an NA team and I see N-Hyper in third place, I'd be like, you know what, I'm gonna try to help you out. I'm gonna try to hop drop Alpha 7.
It's NA. It's NA. They might actually end up dropping on N That's Hyper. actually a bad example of a region, to be fair. Yeah, you're completely right. Okay, if you're Alpha 7, you're like, okay, I'm going to support my Brazilian brothers. I'm going to go drop one of those teams. But yeah, this is going to be tough, though. But N Hyper have been the best performing team on Erangel. And remember, we've had 7 played so far. So this is the most data we have out of any of the other map performances. This is really good for N Hyper. But the fact that Alpha 7 and IG as well, still on the mix, they're still on the board. It is not assured. This is the closest we've seen any of these tournaments go, like, be in a long while. It is. Wait, finish. Final I match. know. All right, well, Hot Jukes, I'm going to throw it over to you and Zute with one final thing that you would say. Let's go! Let's go. Final game, guys. The final game of the day. Oh, baby! One final Start हो गया? match. Start होने वाला है. We go. Zute. Oh my goodness. Want to see in Hyper. मालिक full intense game है ये वाली. What about third place, bro? I don't know. Full intense game. Third place. I don't know. I'm not gonna say anything. I'm just not gonna say anything, Jukes. बहुत ज्यादा चांसेस हैं. तीनों टीमों. अगर मैं predict करूं, I would say N hype तो एक अगर न्यूट्रल रह के मैं करूं, I would say कि A7, N hype दूसरे पे, and उसके बाद हमारी तीसरे पे intense gaming. पूल बना दे अहमद भाई, मैं तो कह रहा हूँ इस मैच पूल बना दे. Let's go. हाँ पूल बना दे, 3 ऑप्शन डाल दे और चौथा भी एक अगर आपकी नजर में है कोई. नहीं. 3-way battle for first place. One ticket to the PUBG Mobile World Invitation. A7 और intense game है ना? IG. One HP. वो बस 3 बहुत हैं. क्योंकि वो बहुत नीचे हैं. Let's see. A7 के वोट हुआ है. I know. Oh, NHP पर. I want NHP, लेकिन जिस तरह उनको बहुत एहतियात से खेलना पड़ेगा मालिक. It's not that easy. It's not that easy. Early fights लेनी. यार NHP still उधर ही जा रहे हैं. They gotta have to move, man. वो सर्कल भी बना हुआ है बस. Down to military base. You see intense game. We see Alpha 7. No one's landing with them. Wow, I am so shocked. We're not seeing any hot drops from anybody. Nothing out of the norm, except for N Hyper and Loops being very close together. But look at this. It's Alpha 7 intense game. Alpha 7 अपनी ड्रॉप लोकेशन पे जा रही है. Loops might. We might see some. लेकिन गंदा सीन हो रहा है. जिधर वो जा रहे हैं उनके पास वो बंदे हैं. They can get the points. NHP के साथ गंदा सीन हो सकता है शुरू में ही. या तो किल उठा लेंगे या फिर दूसरा सीन हो जाएगा. दोनों में से एक ना एक काम करना होगा इनके साथ. No shenanigans. As far as this circle goes, I mean Alpha 7, easy rotation in. If they wanted to rotate, right, they always stay on the edge. Same for intense game. In Hyper, very close to center zone, but with the circle like this, 17, don't know what that prime 23. position is yet. If it goes to the east, whole separate playing field. Goes to west, whole separate playing field. So N Hyper, even though they're central, you gotta look to the second circle if they want to secure that, classic N Hyper rotation to the middle. फ्री हैं वो भाई. Wow. जी. And they do it. So N स्क्रीन शेयर Hyper देख सकते getting हैं. their दिखाओ. vehicle. ये मेरा देखें, ये इन्वेंटरी में आया. And they are इसमें आया. ये सारी चीजें इकट्ठी क्लिक करने वाला आ नहीं रहा मुझे. हाँ ठीक है ना. अब आ गया ना. अब वापस जाओ, लॉबी जाओ. NHP already moving. वो राइट पे कोने में वो देखो चाती मार रहा है. भाई ब्लैक ख्याल करो. चोमू है अहमद भाई ये. चाती मार रहा होता है. हाँ देख रहे. हाँ सुनाओ कैसे हो. इतना बड़ा चोमू है. बंदा ढूंढता रहता है. कल से ढूंढ रहा हूँ मैं. वो उधर कोने में छुपा हुआ है वाले. Quick bridge camp set up by Jaguar. There you go, Jaguar. Show him who's boss. Show him who's boss. That's right. That's what you guys get. What you get for not dropping in a different location. Why would you do that? It's the last game. Do something different. Instead, you just do the old predictable, and Jaguar takes it. ओ 2 किल उठा लिए मालिक जैगवार ने आते ही. Slow to rotate too, because they kind of landed really close next to N Hyper. Hold on, N Hyper
adjusted, by the way, Jukes. They moved even further to the west of farm, but that's in the pathing of YKG. There might be something happening there. NA versus NA. YKG just hunting him rotating down? by. No. I think YKG just rotating to Fairy Pier to do their loot, but they might run into some of the Hyper players here. We'll see in a second. Yeah, right on screen. YKG just trying to mind their own business, and Hyper definitely being very careful here. And yeah, I don't think anything's gonna happen, Jukes. False alarm. False alarm indeed. And oh my goodness, right? My lives are locked on the screen, locked on the mini map as well. And you can see QZZ heard something and he's just gonna let him sneak on by. समझ ये चक्कर है. Does not want to get caught doing engagement. टीम थोड़ी सी चाहे लैग हो, but ये चक्कर है. Dangerous. Yeah, take that loot, get in that buggy, get out of there. Yeah, I think this एक सेकंड दूसरी स्क्रीन पे लाने में. हाँ, खोलें. Like the second they finish Fairy Pier, that's the next compound they go to, right? To pick up some extra loot. But ये friend request आई. Very smart, realizes that, leaves the compound immediately, and I think Hyper's done looting. ये क्या बात हुई अहमद भाई? Why? सख्त लोड है. So they're not gonna have much loot to work with. That's very scrappy loot, but I think that's what Hyper. तो पूछेगा बताऊंगा गलती से हो गई थी उस्ताद. लंबी नहीं करो. एक्सेप्ट गलती से हो गई थी. अरे वो कल मैंने आपसे अहमद कुछ मांगा नहीं था स्ट्रीम के दौरान. हाँ. वो सिस्टम भी बोतल में किया ना. ना करो. हाँ जी. ये क्या बात है? था कौन वो जो मुझे तो याद भी नहीं है. Actually try and gatekeep their rotation into this next zone. It's so predictable. I mean, I even know where it would be if I was. उस्ताद एन हाइप क्यों पंगे ले रहे हैं यार? इनको चिकन वो निकालने, इनको पुचिंग की हिल पे आके बैठ गए उस्ताद. You know they're going to possibly head through that direction, but instead, teams opting to kind of just do what they've been doing, and I mean, to me, that just shows that का सर्वर आ रहा है. दुआ करो कभी ना जाए इंशाल्लाह. लव फ्रॉम इंडिया. लव यू टू मेरी जान. जरा डंडा चंडा दें, बोले यार ये क्यों ओपन में आके लेट रहे हैं यार? ब्रो एक कितना दूर है स्क्वाड हाउस पे, बाकी तीन उधर पहाड़ी पे. स्टार लास्ट मैच है, सबके हलक तक आए हुए हैं, समझ रहे हैं ना? Maybe we could start seeing them gain that, over time here, as there are some future tournaments coming up. Another season as well. You got intense game. अबे 4 गाड़ियां रख के अभी से बैठ गए हैं. उस्ताद सबने गाड़ियां अलग-अलग रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा. That clutch factor, right? They do. Can they continue here and see? जब ये गेम जाएगा अहमद भाई, लास्ट जोन फुल हैवी. Driving right by Bray being very careful, not to have his position known. Is he going to go for the shots or tire shots even? No. Just getting from some information. And that's really good because Dope Slayers should be playing very careful right now, right? Because it's very important for how they act on the leaderboards, right, Zute? Yeah, definitely. I mean, they have nothing to lose. But I will say he's passing that info to his teammates. Maybe they're setting a trap further down here. Yeah, some shots coming out finally, but not much. And intense game. Maybe they could tell it's a split up team. Turning around, maybe looking for a fight. No, they're gonna keep rotating here as we head into the second circle very soon. And Hyper, you see right next to the Chosen, that is dead center. ओ भाई साहब, मालिक मैं ज्यादा गौर नहीं दे रहा. मेरी गोता हालत टाइट हो रही है भैंस क्या, जो सिचुएशन चल रही है. भाई टेंशन में नींद आई. वही तो है. और ये चोमुक इतना ओपन में जो खेल रहे हैं, दैट्स बिग एफ ब्रो, बिग एल बल्कि एफ भी छोड़ो. Second circle, GK first smack dab in the center, sticking true to their play style. And we see intense game rotating to the east of Dope on that somewhat bottom left side, west of Hyper, Alpha 7. Sticking true to the edge, playing the option route. North wrap, south wrap, it's all in their playbook. एक मिनट मैं चेक करूं कितने लोगों ने जो है ना वो किया है
दो बंदों ने सिर्फ रीट्वीट किया है. What is this behavior, bro? और जो मैं मैसेज पिन किया हुआ कितने लोगों ने जरा सब्र करो पार्टिसिपेट किया. Only 112 people just reach here. Come on, bro. You can do much better than that. A7 वाले उस्ताद क्या कह रहे हो? ओ भाई साहब. Circle closing in 18 seconds. पैंथर की और यहाँ पे 87 वालों की फाइट. इनको पता है जीतना तो है नहीं है. खेलो भाई खुले भैंस गैंग जितना चढ़ के खेलो. ऐसा ही शारिक भाई. दूसरी टीमों को खराब करो भाई. मुझे मैंने ये चीज टूर्नामेंट में देखी है. मैंने टूर्नामेंट में ये चीज देखी है हमेशा कि जब आपकी टीम जो है एंड पे लास्ट पे होती है ना, आपकी जो फेवरेट टीम होती है, आप कोशिश करते हैं उसको किल जाएं. हाँ कोशिश करते हैं. बहुत इसमें प्लस पॉइंट होता है उस्ताद. पैसे भी मिलते हैं. समझ रहे हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है. मैं जरा बस बता रहा था कि पैसे पबजी की तरफ से मिलते हैं जो टीम टॉप पे आती है. समझ रहे हो ना? I did retweet with the code. Thank you so much, Numan bhai. Oh भाई. मेसी स्ट्राइक क्या लिख रहा है भाई बार-बार? कौन? मेसी स्ट्राइक क्या लिख रहा है? मालिक अगर NHP और A7 के दरमियान में सिर्फ 1 पॉइंट से हार जाते हैं तो जो होती है ना फर्स्ट पे, नो मैटर व्हाट, जो फर्स्ट पे आएगी वो PMWI में डायरेक्ट जाएगी. जो रनर अप में ये सेकंड पे आएगी या उसमें देखते हैं, वोटिंग में देखते हैं गेम के अंदर वोटिंग किसकी है. वोटिंग वाले फिर इनविटेशन पे जाते हैं. अब जो गेम के अंदर जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आईफोन का गिव वे ये वो रोटेटिंग वो क्या गंदी पड़ी बे पैंथर वाले को. वो क्या होता है फिर इनविटेशन पे वो चले जाते हैं ना वो टीमें. हर रीजन से एक टीम जाती है और एक टीम जो है वो हो जाती है, क्या उसका नाम, इनविटेशनल जाती है. डिफरेंट रीजन है ना. 10-12 उस तरह होंगे, 6-7 उस तरह हो जाएंगे. हाइप वाले नीचे आ गए. हाँ 16-18-20 टीमें तक चली जाती हैं PMWA PMCO वगैरह में. 18 गिलास में चम्मच चलने की आवाज आई है. बार कोई शांडवादी कर रहा है, पक्की बात है. IG वालों का क्या सीन है उस्ताद? 8वें नंबर पे कोई पॉइंट नहीं है भाई अभी. A7 वाला को भी कोई पॉइंट नहीं है, हाइप वाला को भी कोई पॉइंट नहीं है अभी तक. ओ भाई आया मैं पानी लेके. आ जाओ. You could just see, the indecision, just trying to figure out where do we want to go, where do we want to camp our own. I think QZZ is going to secure that spot right there, and that is where in hyper. गंदी लोकेशन है जिस जगह पे तुम लोग बगियां पार कर रहे हो. बल्कि वो टीम निकल गई है पीछे से. सेफ है. नेक्स्ट सर्कल. वो A7 का नो लो हुआ गया बे. एक 7 का एक गया. A7 का एक गया. अबे नेड मोली मारो ना इसके ऊपर. अच्छा A7 के रश कर दिया. ओ भाई साहब 2 पॉइंट. A7 के 2 पॉइंट. अच्छा खेलते हैं A7 वाले. क्या नोक बच गया बे. गंदा बचा है. अब नोक है. बच गया. अब भी बच गया. Like Jason mentioned a little bit earlier, intense game has 4 chicken dinners. So if it ends up being a tie break, वो दरवाजा टूट गया. अब ज्यादा चांसेस उसको नॉक होने के. PMPL America's champions. Alpha 7 knows this. They have to win with more points. Alpha 7 also very Dr. Groot subscribe to the channel. Dr. Groot, thank you so much, Jenny. Of this noise, so it is fine that they're taking their time and not finding a quick opening. You gotta be careful though, man. If छत पे चढ़ जा.
ओ ब्रो छत पे चढ़ना था यार. Be careful, I'm not gonna lie. You don't want to get a But player yeah. knocked and then thirsted. That would be the worst thing to happen for the Alpha 7 team. There's a lot of smokes down. They're gonna pre-fire this. No way they don't. The shots come out. Oh, Hayuya trying to pull off some magic here towards the end. Not gonna be able to do so. That is Dope's tournament, ladies and 2 gentlemen. points man, 2 points इस बंदे ने उठा लिए. Racked up 2 critical points, and Rebel's gonna pick up both of those right here. अच्छा खेल रही है वैसे अहमद भाई, देख बहुत अच्छा खेल रही है. To see गलती इन्होंने पहले क्या की है इन लड़कों ने. दस्ती जो दरख्त वाला था उसको नॉक करना था. मौली नेड उसके ऊपर फेंक देते जितनी थे. and Hyper with the goose egg so far, but they do have a really good position in the zone. सर्कल क्लोज हो रहा है मालिक. Right, and Hyper with no points. फरूक भाई हाउ आर यू? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाओ आप कैसे हो? True to their MO. We'll see where this next circle shifts. I mean, Alpha 7, they're not near center, but they have a lot of different entryways in, and that's a team specialized in fighting. Circle centers up once again. And Hyper in the zone. Alpha 7 in intense game. Not in this new circle shift. Both teams will have to find a way in, maybe fight their way in. And Hyper in their cars. Are they looking to center up once again? They are. That's They're gonna be make it risky. across the road. Yeah, across the road. Interesting Oh. decision for them. Oh my gosh. Oh my gosh. Yep, Inko on the drive over. Looking to pop some people out with the DBS loops. Full sending it on over to school. Getting knocked out. Beautifully done for them. So, but my eyes. लूपस वाले एलिमिनेटेड. लूपस की टेंशन खत्म थी. Major score. पॉइंट 2 पे जाके Leaving हाइप वालों को. their tournament life up to fate as this उस्ताद अब यही कह सकते हैं. for them. They're just trying to secure as many points as they can. Oh, अबे गया बे इनको वाला गया. Looking at intense game right now. They are wrapping a little bit to the south side and might run onto might Jala. run into Aton on top of the हाइपर वाले इस टाइम फुल सर्कल के अंदर हैं. लेट्स सी. Intense game isn't going to be too greedy though. They're not going to try and fight upwards. अभी तो सेव ही लग रहा है, आगे पीछे कोई है. फुल टाइम सेफ है मालिक. लेकिन खाली सेव नहीं ना चाहिए मालिक. सीन ये हमको किल भी पॉइंट भी चाहिए. किल पॉइंट ज्यादा चाहिए. starting to finally see that end game. वो A7 अभी मर जाए अहमद भाई, फिर किल ना भी हो, चिकन निकला, क्या टेंशन. लेकिन दूसरी भी टीम है ना आईजी इंटेंस गेमिंग. And because of that, that's going to reduce the amount of elimination points available. So it's really going to come down to who gets that chicken dinner here. If it's gonna इन्फ्लुएंसर गए. or Alpha 7. आईजी किधर है? मुझे हाँ एक किल है ना. आईजी का एक किल है ना. You know, with their map knowledge and knowing where teams are playing, एनएचपी 0 किल मालिक. see, they were ready for a third अपना party. पोल in की वोटिंग more क्या of चल रही? Aton. 54 एनएचपी चिकन ब्रो मालिक. अभी कुछ कह नहीं सकते. Such opening. वोटिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है. वोटिंग का आप तो एक दफा करने के बाद दोबारा चेंज कर सकते हो ना. They're playing it safe. Looking और to सम भाई see नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं। देते हैं यार. They मैं can ना reset. वीडियो रेंडर कर रहा हूँ. बहुत ज्यादा अच्छा This is अच्छा. definitely a ये stronger position. हो than गई both रहने teams देना. want. I'm really nervous for Ed Hyper right now. And Hyper has been extremely quiet. And we've seen when you add a whole bunch of nerves and a very slow first start of the game, when the fighting starts happening, you're usually your इसका body नाम is just not PMPL नहीं है primed and भाई, ready to DBS fight. L रखना And चाहिए. वो भी मैं भी यही सोच रहा हूँ मालिक. second late reaction to ना that. तो PMPL. DBS छोटा. Hope and Hyper, you know, still Oh my goodness. jingle peaks right now, warming up those thumbs and getting ready for that Oh, fight. wait. It's coming to them. It's definitely going to happen. Intense game, forced to back off of this position. Definitely playing very comfortable, I'd say. They're looking for opportunities. Gyro still, Gaming and they're in just as 666 much of a tight subscribe to position the as channel. Gyro Gaming, thank you so much मेरी जान for subscribing. Hands are loose. They're ready to fight. And A7 201 IG 198 hunker it down. Alpha NHP 195 points इस टाइम पे मालिक. up their 2 points. Yuvraj Densa Oh my subscribe to the channel. god. Come on. Next zone about to pop. Critical zone here. If it goes south, tense game is going to be smiling. If it goes pretty much anywhere else, and Hyper and Alpha 7 most likely going to be in a good spot here. All Glory Gaming starting to push up on. माले मुझे ज्यादा टेंशन हो रही है शेडेड आउट वाली सिचुएशन. पर भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. Next zone does pop and it does go south. That's going to help out intense game big time. Yeah, it helps out Alpha 7 as well because all they need to do is move from that dip into the compounds because N Hyper, you know, you can't hold that split 2-2 across the road. वो AG7 वाले क्या इन्होंने पुश कर दिए हाइप पे? There's a war in the distance, popping some shots. Waki नहीं getting cut. हाइप किधर है? Teams are going to be sitting pretty in
वही है सेव है थोड़ा सेव है, लेकिन हाइप वाले A7 और वो हाँ A7 पीछे शेक में कंपाउंड्स में, ये अच्छा रोड के क्रॉस इस तरफ आ गए हैं। ओके ओके हाँ जी हाँ जी। यार वो लेकिन A7 वाली जा रही है लोकेशन, मतलब close यार to A7 हाँ A7 वाली लोकेशन ज्यादा अच्छी थी यार। पर ये तो शुरू से इधर ही थे। नहीं नहीं नहीं, ये पहले उधर थे ना वेयर हाउस वाली साइड पे, अच्छा उसके बाद इधर आए हैं। Intense game. Gonna be able to move through this side and have a lot of real estate in order to do so. They gotta keep an eye out though. ओ If they start heading this way, yep, they are. So Athon is और starting to भाई make some गलती shots से down. अनसब्सक्राइब हो गया, 2 इयर्स का Intense game. आपका सब्सक्राइब किया है, कोई बात नहीं यार, फिर कर दो सब्सक्राइब, इसमें क्या है। मालिक गंदी सिचुएशन है, वो उन्होंने वो कंपाउंड होल्ड किए हुए हैं, इन्होंने ये कंपाउंड होल्ड किए हुए हैं। और इमेजिन करो कि सर्कल इधर ही एंड हो। पीछे भी टीम है वो ओ रॉ ROW टीम पीछे भी है। आईजी गए, नॉक हुआ एक 87 का, एक नॉक हुआ है Adrian forced to hit the laydown, and that nade's looking pretty. Probably. I think it just misses the mark. गया, दूसरा गया आईजी का, From across the field, it's YKG trying to shut down the. आईजी गए, आईजी एलिमिनेटेड। तीसरी भी गई है बस। It is a battle between Alpha वो 7 बहुत पीछे पोजीशन पे। and Hyper could not go out with the goose egg here. That is so tragic for Intense Game. They are kicking themselves right now because they 2 minutes ago they wanted to take that fight with Datan, but they backed off, and that just put them in a pickle. Now it's Hyper and Alpha 7, and they are staring each other down right now. I don't even think क्या इनको पता है, क्या इनको पता है, क्या इनको पता है कि they are the both teams? I think they are the both team. Like, did they know? फाइट शुरू एजी ने नॉक किया, लेकिन पीछे बंदा नॉक किया। and especially risk a third party happening. Rules of war are starting to creep up. आईजी गई ना, आईजी के चली गई है, एंड अल्बत सामन का एक नॉक किया। It's interesting. If they get a few knocks on them, who knows what Hyper decides to do? I doubt they're going to want to risk pushing it across that street. नो पुश नहीं बनता, पुश कभी गलती से भी पुश ना करना। Hop in their vehicle, get ready. पता चल गया तुम लोगों को। A7 के इस टाइम पे कितने किले हैं यार, काफी किले हैं A7 के। Very critical. Hyper with a slight advantage. Make it more intense, Ahmad bhai. ओ भाई Alpha 7 is a little bit sandwiched here. छड़ फाड़ दूं इंटेंस के चक्कर में। Royals of War. I mean, they could be looking to press into Alpha 7. What the hell bro, what you talking about? Hyper chilling right now. मालिक बहुत गंदी सिचुएशन है इस टाइम पे। अब दोनों को पता चल गया कि उधर एनहाइप है, इधर जो A7 है, दोनों अक्रॉस से एक दूसरे के जो है पॉइंटों में बैठे हैं। नहीं करेंगे फाइट उस्ताद, नहीं कर रहे दो, नहीं करेंगे। अवॉइड कर रहे हैं भाई। वो दे दूध से किल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाइट पे बहुत बंदे आ गए हाँ। NHP के सामने बहुत 2 स्पॉट चढ़े हैं। अबे A7 वाला वो दे निकाल रहा किल, अबे NHP वाले तुम निकालो ना किल, वो क्यों निकाल रहे हैं? हालांकि वो उनका पहले बनता है निकालना, उनके ऊपर हाइट में वो सुराख में से इधर से उधर मार रहा। दिख गया ओ भाई खान जी नहीं जो पुश करेंगे जो, ये क्या बात है यार बड़ी बेटा भाई। Bro 37 subscribe. अबे गंदी सिचुएशन, A7 वाले फंसने के चांसेस हैं। ओए यार एंड सर्कल इन्हीं घरों पे आता है वैसे, मोस्टली एंड सर्कल इन्हीं घरों पे आता है। ओ Hadith A Nabawi subscribe. नो 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 नो, किल लिया है NHP ने शायद। नहीं 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 नहीं, उन्होंने लिया, A7 वालों ने किल उठाया है, A7 वाले ने किल चोरी कर लिया। ARI subscribe to the channel. Hyper is falling behind in these elimination points. There's QZZ. There he goes. Gets a big one right there. Down. Here comes the push. QZZ is the only one pushing though. अबे इतने खुले में खड़े होके मॉली कर रहा है, पड़ जाएगी भाई इधर उधर। ये पुश इनको पॉइंट चाहिए ना, ये पॉइंट्स इनको चाहिए नो मैटर व्हाट। अबे किल उठा रहे हैं ये A7 वाले। नॉक, वो अपनी मॉली से नॉक हो गया है। अबे उठा सकते हो तुम, पुश मारो। ये क्यों पुश मारे, ये किधर पुश मारे? अबे ये उस पे तो नहीं जा रहे। शिट, NHP पे जा रहे हैं, NHP पे पुश मार दिया।
वो जैसे उनका नॉक हुआ इन्होंने पुश मार दिया. Fuck man. He's on a 1v2 defense. This could go either way. काइंडनेस पे चढ़ गए दोनों. Revo clearing the building with his DBS. Full send. Kindness forced to go back off into the building. And Hyper इधर से पीछे पड़े हुए हैं. team at a time. They have to take out Royals of War here and then focus on Alpha 7 behind them. पिन हो गई NHP दोनों तरफ से. GK first needs to get this done. एक नो किया. कवर 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 कवर. नाइस. Oh no! QZZ's gotta clutch this up. नाइस. Shots from the back save them. They're gonna go for the reses. Oh, it's too late. It's too late. Alpha 7 is so ready for this opportunity right now. They are pushing in. Kindness needs a double knock here. Come on. It's all up to Kindness. Please. It really is. Kindness has to be the hero for his squad. This is the difference between the ticket नहीं. to WI, the ticket to glory, or going down. He cannot afford to get naded here. You can see उठ जाएगा उस्ताद उठ जाएगा. कवर मिलेगा. Do not get knocked एक out. उठ गया. रिवाइव हो गया. Kindness. Alpha 7 clutching it up when they need it. अबे They गंदा realize ने. what this is, but now they know. नॉक फिनिश दे दिया बे. नॉक फिनिश दे दिया. They're gonna push him. Yep, How aggressive they are? the They second they already knew. realized. Yep. अबे पीछे बंदा. राइट पे बंदा पीछे. वो अपना बंदा छोड़ के आए हैं. Gonna have to make a play here. Carrillo, he just doesn't get it done. It's all up. It's up to Rin, and it's not looking good. It is not looking good. YKG trying to help out their North American brothers all the way down there. Can Rin do it? Can Rin pull out the hero play? Oh, no ammo. Jump shot. He gets him. That's one. He needs two more. The DP reload. He's got the info. Jump shot. Nice. Fuck. Out and Hyper. अबे. Right when they needed to. 9 elimination points, and here comes YKG. Fuck man. All too late for YKG to try and save the North American brethren. Alpha 7 यार पहले किधर थे यार YKG. taking things into their own hand. Alpha 7 did not need a third party that whatsoever. यार उनको थर्ड पर उधर नहीं था जाना चाहिए यार. YKG could still take out Alpha 7 down to Senna Texa, but I think Alpha 7 already knows this game, this tournament is in the bag for them. Yes, sir, indeed. Alpha 7, you know that they're cheering at the top of their lungs because they Nice. दो नेड. दो नॉक. They did it the hard way. That is how you put the crown of the PUBG Mobile एक बचा. North American Championships, the American Championships, the Brazilian Championships. You are crowned above all of them, and look at that. Now they're Come on man. Seriously. They might still win this match even, Jukes. They're still 4 up. They're still 4 up after all of that. Dabe. I mean, Alpha 7 is just on another level here. Ridiculous. I mean, मैं बोला था ना A7 on the top and NHP on the second. could not mount it up in time. Too many different decisions, right? They split themselves up between Royals of War and Alpha 7. यार गंदी की यार कसम से 2v2 की फाइट में खेलते इन पे पुश करने की जरूरत नहीं थी. किल के चक्कर में गए थे उन्होंने पीछे से पुश कर दिया. not at all. Not even one of N-Hyper was knocked. And बहुत बंदे अलाइव पड़े थे यार आराम से खेलते. party. So that is वो भी बहुत शाणे हैं. उन्होंने किल मैसेज पढ़ा ना. Score and दस्ती. दस्ती पुश. दो बंदों ने पुश मारा. Alpha 7, they don't need that knock to third party. They will just take the अब fight मुश्किल है. straight up. एल्सा चांस मुश्किल है अब. 7 and All Glory Gaming battling it out right here. 11 eliminations on the side of Alpha 7. Revo with 5 to himself. I mean, this squad is MVP. just on another level. Yeah, while we're here celebrating Alpha 7, for a quick reminder for everyone, this is the team that finished 3rd place in PMGC Grand Finals, and you see why. You see why this team is a force to be reckoned with. Oh man, Alpha 7. And this is a title that they've already had. They've already been crowned America's Championships before. So they're going to take this belt home, back to their home country of Brazil. Very, very excited. And you know that this is going to be one of those teams that's going to be a huge threat in PMWI. So all the PMWI squads now just looking at the ceiling because this is a monster team they're going to have to face against.
I'm sure this was a huge game for the other regions to look at too. Honestly, Jukes, they're probably hoping Alpha 7 doesn't make it through because they've probably felt 4v4 की फाइट उस्ताद, and now they're gonna have to deal with them once again in PMWI. 12 किले AGG के उस्ताद, क्या कह रहे हो? Punch it down. Alpha 7. ना करें 12 किल AG, अल्फा 7 वाले पुश मार रहे हैं। Full sending it. चिकन ना भी निकले ना तो भी इनको नहीं कोई फर्क पड़ता। Confidence here. Yeah. 6 सेकंड के पॉइंट और 12 उसके पॉइंट, 18 पॉइंट 18 सेकंड पे। AG का एक गया, AG का एक नॉक हुआ। Shut it down. But It's a 1-1 right now. 1-1 trade. But look at the real estate Alpha 7 has with Carrillo pushing up. They have All Glory Gaming pinned. Carrillo trying to take these shots. DBS should be banned, पर यार ये PUBG का अपना टूर्नामेंट है ना, उसमें वो अपनी कोई चीज बैन थोड़ी करेंगे। जितने भी वेपन्स हैं, चाहे वो जैसे भी हो। क्या लगता है नॉक फिनिश दिया इसने? पता चल गया उसको पता चल गया किधर है। Come on man, come on, what in the hell bro? What a tournament. Keep in mind, Alpha 7 at day 1 and at the end of day 2, so far behind, but look at them now. Wow, well, way to get it done, Alpha 7. Let's take it on over to the studio to crown your champions. What a way to finish things off as well here for Alpha 7. Taking down N-Hyper with the help of Royals of War. Able to close things out as Rin could not survive long enough. They started off horribly in day 1, but they improved every single day. Yep. That's how they brought it home to Brazil. And they should be proud. Not only have they won here at the America's Championship Spring 2023, Oh भाई साहब, at the moment through to the vote as well for All-Stars. So they're going to be played in the All-Stars and in the main event. YKG 190 पॉइंट। अच्छा पॉइंट इन्होंने नीचे से स्टार्ट की है। हाँ पीछे। Why go for the top 3? Come on man, go for the top 3. No top 3 दिखाया नहीं है। There we go. Alpha 7 223 points 24 matches में। Last time match 201 223। अबे दोस्त इन्होंने कितने पॉइंट लास्ट मैच में निकाले? फोर्थ पोजीशन पे फिनिश हुए हैं भाई। कौन? NHP फोर्थ पे नहीं करो, फोर्थ पे फिनिश हुआ ना ये। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, 80 मोड़ थी, लेकिन आए तो सेकंड पे है ना। हाँ वैसे ओवरऑल हाँ सेकंड पे 201 पॉइंट। उस्ताद क्या कह रहे हो, 21 पॉइंट एक्स्ट्रा उठाए इन्होंने। वही तो बहुत फर्क है। Good rounds and bad rounds for sure. They've committed Deserving victory, yeah. As we were just talking before we came back on air here. कह सकते हैं अच्छा खेली थी। बहुत अच्छा खेली है उस्ताद, बहुत अच्छा खेली है। तीसरे में मालिक यार उन्होंने होल्ड किया, इन्होंने गलती कर दी ना, पुश नहीं था करना। ये वापस आ जाते साथ वाले घर के अंदर, वो अपने घर के अंदर होल्ड कर लेते। Luckily, though, I felt like he gave a chance to some of the other players to start even outshining what they've done in the past. Senna, I mean, the performance that we saw out of him yesterday, and then Mafioso, what he was able to do earlier 100%. In the day as well, which, you know what, by the way, yeah. There you go. Been washed, by the way, still smells like him. It really does. But to that point, though, like, sure, Korea might not be putting up the numbers, but with the बस खत्म लास्ट मैच था। लास्ट मैच था, ये फाइनल है ना, फाइनल था, जीत गए ना A7 वाले। नहीं A7 वाले क्वालिफाई हो गए ना। A7 और उनका NHP नहीं 1v1 करवा दे। जो जीतेगा वो WPM में जाएगा। नहीं अब ये N-Hype पे है, लेट्स सी इफ दे कैन गेट लाइक इनविटेशन और नॉट। वो वोटिंग पे अब होगा। अब हमारी आती है बारी कि हम कितना अब इसको जो है ना वो वोटिंग करवा सकते हैं मैक्सिमम। मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ, लेट्स सी। I'd say the last year is that you can't have a team, you can't have a roster with 1-2 star players. Everyone has to be a star player. Carrillo can be that star player, but even when he's lacking, you have Revo, you have Mafiosa. Oh my goodness, मालिक जब उन्होंने पुश कर दिया था ना, उधर से देखा उन्होंने नॉक है, मैंने कहा गए मालिक। मैंने जो तभी पता चल गया था, क्योंकि वो सिचुएशन ही वो वाली थी कि ये सारे स्प्लिट थे और उन्होंने इकट्ठा एकदम पुश किया था।
the performance of all the other players and Revo. शारिक भाई गेम मूड I can't wait to see who's gonna end up being MVP. I don't know if it's या gonna नींद आ रही है be Alpha 7, but they're definitely favorites going into PMWI. What in the hell, bro? Really close on the फाइनल दिखाओ यार. was fifth going into the day, even though they were second place, because the team was so strong across the board. I don't know. The 20 point lead makes me think that it is still going to be someone from Alpha 7. Could be. I mean, it's like $1,000, but I mean, while we obviously are talking about Alpha 7, we got to give a little bit of credit to some other teams. So I'm going to actually jump straight into. Actually, I want to jump into both, but we'll start with N-Hyper, right? Like we talk about with the Knights leaving, who is going to pick up that crown for NA and be the kings? And N-Hyper, I know we discussed this. They didn't look that strong when it came to the PMPL America or North America's finals, but they've proven to be an extremely strong team here when it comes to more of the international play. Yeah, they really have it. I mean, I think you mentioned it perfect too. North America needed somebody to step up, especially in this America's event, since the Knights wasn't gonna be here. I feel like N-Hyper was able to fit in that slot right there, perfect with what they were able to showcase here. Oh, I hey. hope in the future, when we go back to PMPL and A, we start seeing a bit more of dominance. Yeah, they end up showing a nice dominance throughout the league stage in PMPL and A, but when it came to the finals, they kind of shine away. So I'm hoping we start seeing more of this N-Hyper because they definitely have the skill for it. It's something you've been mentioning, Cam. Yeah, well, actually, what they have more than the skill is the foundation, is the strategy, is the game plan. So if you're talking about teams that are yet at full power, ये गलती इनकी हुई थी, ये गलती इनकी थी. वो गेम प्लान की बात कर रहे हैं. आपकी सारी how you gonna position yourself and all strategy. So strategy के बारे में मेन थिंग ये थी कि उनको बहुत स्प्लिट होके इन्होंने खेला. जो एक एक बंदा लूज किया वो वाली इनकी जो चिकन इन्होंने लूज किए वो वाली इनकी गलती थी. अब देखा जितने भी A7 ने चिकन निकाले सब ने इकट्ठा रह के खेला. अब पिछली जो गेम थी उसमें ये लोग नेट से वो 2 लोग नॉक हुए, लेकिन इकट्ठे खेल रहे थे वो लोग. किल अच्छे निकाल गए थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने होल्ड करके जो निकाले हैं किल. Oh my goodness, man. Who's been able to perform on a really high level with having a new addition and GK first. Well, GG's, man. GG's. And he is here in NA now, and I'm just curious, like, what's the limit for N-Hyper? How much better can they get when we come back into? Well, GG. जो भी टीम प्ले की है यार, just because if you look at that match, अच्छा खेली है सारी टीम. बहुत अच्छा खेली है. जो पॉइंट्स देने आई थी. वाले उनका भी एक अपना रोल था. ये वाले ऊपर से आए हैं लेकिन बहुत लेट आए हैं यार, बहुत लेट आए हैं. ये अगर ऊपर से इनके ऊपर रश कर देते ना, देयर कुड बी अ चांस के A7 वाले एलिमिनेट हो जाते हैं एंड N-Hype को चांस मिल जाता थोड़ा सा. BGMI back 730. आप बैक होगी? एक मिनट, लेट मी चेक. Cross your fingers, just try and send it, right? There are a lot more things that you can do if you can keep calm and stay like focused on the round and like what's our actual win condition. And so yeah, I think that yeah, I actually totally forgot what was like. I mean, we said it best throughout the whole day, right? We didn't want N-Hyper to be going into the last match in first place because they had that choke factor that we had seen from there previously. And going back to what you said in regards to GK first, yeah, this is their first, I guess, main event being together as a team. And I felt like this event, especially after I believe it was day 3 yesterday, we saw him starting to perform to what we expected. I think I even told you, I think GK first is underperforming from everything I have. मैं चेक कर रहा हूँ. And to see how they're performing now, I can't wait to see. PUBG Mobile तो चल गई है. Global. Point onto N-Hyper. I think kindness is the absolute star of that team. I know that a lot of शारिक भाई आओ, एक आधी गेम खेलते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रीम बंद करते हैं. शारिक भाई गोन्स कम बंद करके. हैं, ये क्या बात हुई? दस्ती ऑफ. What is this behavior भाई? नहीं है ना. आबिद भाई की आईडी से कौन है? चेक करें. तो डिस्कॉर्ड से तो चले गए, वो ऑफ भी शो हो रहा है. डिस्कॉर्ड ऑफ भी शो हो रहे हैं, फिर नहीं होगा. प्लेयर ज्वाइन अनदर टीम. वाह. लेट्स सी. सुबह के 7 बज गए हैं, अब सोने लगा हूँ. रात गुजार दी है आपके साथ. थैंक यू सो मच नुमान अता. आ जाए करो यार भाई के पास रहो, और क्या करना होता है रात को तुम लोगों को. उस्ताद क्या कह रहे हो? ये देखें ना गेम उसे बैठे हुए हैं.
does it feel, man, to be crowned the champions and to get that slot into PMWI? Revo, felicitaciones. Oh, he speaks It's a really good sensation. What? It's a really good, como é que fala? Good sensation. Good sensation. And yeah, it's good. I just need to thank you, God, because that. And yeah, I'm so much happy. And let's go to PMWI. Man, I didn't even know you speak ये English. कौन सी Man, टीम का that's बंदा है? awesome. A7 का है ना? Revo, my अच्छा It's not too good, but I can talk. Oh man, it's लगता है लगाता ज्यादा है ये मैचेस वही बिल्कुल मैची की बात ही हम कर रहे हैं. going into day 2 to kind of not continue on with that slow start. And BGMI गेम. Yeah, we have so many problems, but अभी BGMI वो क्यों नहीं अपडेट का कह रहा है, लेकिन वो अपडेट and we can como é que fala? Coisas. Quero falar tipo mesmo com esses problemas. Even with these problems, we can get the championship. Right on. All right. And listen, I mean, you recovered from a bad day 1, but to talk about being at the very end, the final round especially, even these last few rounds to end up this 4th day, how close it was with you and Hyper, and then even intense game. प्लीज हेल्प. अबे यार Going into the final Erangel, it being अपडेट क्यों नहीं हो रही गेम? you guys played it out, it didn't look like there was any pressure at all. Yeah, I think the pressure we can. मुझे स्टोर में आया है अपडेट का? ऐप स्टोर से मुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि मसला ये है कि ऐप स्टोर का वो सीन हो रहा है. मुझे रीजन चेंज करना पड़ेगा. We have so much experience in PMGC, in PMWI. हाँ BGMI वरना शो नहीं होगी ना उसमें. And is that we don't feel that. I got one more. Going into PMWI, I think you guys are one of the favorites to end up pretty much winning a lot of the stuff going on over there, whether All-Star or just the main. How are you feeling going into? What are your expectations going into PMWI? Are you feeling like you can definitely go in there and win everything? We want to go to win, but everything can happen. But see that we're gonna go to win, and I hope to God help us. Right on. Okay, well Revo, I don't want to keep you too much. अबे रीजन कैसे चेंज करते हैं इसका? एंड्रॉइड के ऊपर रीजन कैसे चेंज करते हैं आपका? अगर किसी को पता मुझे बताना, एंड्रॉइड के ऊपर रीजन कैसे चेंज करते हैं? Alright, thank you. Bye bye guys. Oh man, that completely caught me off guard. I did not know he can speak English. And then when he's like answering back to me, I was like, yes, I'm going to translate. He starts speaking आ English. गया BGMI but only in Android. एंड्रॉइड में. लेकिन आप बताओ अपना, ताऊ भाई आप मुझे बताएंगे एंड्रॉइड पे आप कैसे कर सकते हैं अपना रीजन चेंज एंड्रॉइड ऐप स्टोर का? क्योंकि मेरा वो कह रहा है कि वो करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, वो अपडेट करनी पड़ेगी, लेकिन अपडेट मेरे उसमें आ नहीं रही. VPN लगा के खोलें. VPN लगा के खोला हुआ है. VPN ही लगा हुआ है. VPN ही लगा हुआ है. I think that's still the trophy that they're currently lacking in their trophy case. Yeah, and listen, if you're talking about how hard events get, I think the spike from this event from PUBG Mobile आ रहा है. the global event, whether it's PMWI, whether it's PMGC, is that much more dramatic. So even if, let's just say that they won this event by like 50 points, 100 points, nothing would be guaranteed प्ले going into स्टोर the का globals. फिर क्लियर कैशे क्लियर talk डेटा about करो. A7 still Uh-huh. hasn't been the best that we know. This वो कैसे करना आप? So if they can somehow like figure out how to have the stars align perfectly, how to peak at the right time, सबर करो जरा, maybe even use the बंद करो यार इसको अभी के लिए. ओह सबर करो जरा, मुझे मोबाइल अटैच करने दो. ओ भाई साहब, BGMI है आपके पास ओल्ड वाला? हाँ जी ओल्ड Yes. वाला तो है ना मतलब. यस ओल्ड वाला है, ये ओल्ड वाला है. वो नहीं चल रहा ना, वो कह रहा अपडेट करो. सबर करो, मैं कनेक्ट कर लूँ ना, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. ओ भाई साहब, आई एम ए डिस्कॉर्ड. ओके, B plays Madhumukhi. Subscribe to the channel. मधुमक्खी उसने बोला बी प्लेज मधुमक्खी सब्सक्राइब. थैंक यू बी प्लेज मधुमक्खी.
करो जरा। HDMI केबल इधर गई। क्या है यार फारूक भाई, क्या? आईफोन में खेल खेल के एंड्रॉइड भूल जाते हो। मैं एंड्रॉयड यूज ही नहीं करता मालिक, शुरू से मेरा वो है आईफोन है। डुओ में ड्रैग करना ड्रैग करें जरा ताऊ भाई को। नहीं होगा मुझसे भाई। इधर है, 1 मिनट सब्र करें। हेलो ताऊ भाई कैसे हैं? एंड लेट्स गो टू द फोन। ओए, तो सीधे ही फोन खुल गया उस्ताद। ओके। हेलो। हेलो हेलो ताऊ भाई कैसे हैं? में भी एक ग्लिच से चल रहा है एंड्रॉइड में भी। किस तरह? नेट ऑन करके लॉगिन नहीं, आपको नेट ऑफ करना पड़ेगा, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं एंड गेम ओपन आपको तभी करना है। लेकिन वो अपडेट का कह रहा है ना अभी। आप एक बार नेट ऑफ करके ट्राई करो ना, अपडेट का तो एक ग्लिच वो भी दिखा रहे हैं, कुछ लोगों का विदाउट अपडेट्स भी चल रहा है। नेट ऑफ करके गेम ओपन करो एंड लॉगिन करो। 1 मिनट, लेकिन वो फिर मेरा वो नहीं ना चलेगा, मुझे VPN यूज करना पड़ता है ना ताऊ भाई। ट्राई तो करो। हैं? ट्राई तो करो। ओके। क्योंकि नेट ऑफ हो रहा है फिर तो नेटवर्क से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। ओके लेट्स सी। स्टार्टिंग। Unable to connect the servers, please try a different network or Wi-Fi access. Okay, 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 okay. ये तो नेट का एरर है सीधा सीधा। इसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करना है उसके बाद सीधा। हाँ सीधा गेस्ट मोड में चले जाओ। अच्छा गेस्ट मोड में। गैस की ऑप्शन ही नहीं आ रही इधर, ऑप्शन ही गूगल प्ले की आ रही है, ट्विटर या फेसबुक की। कुछ भी कर लो फिर, आपके पास नहीं होगा, हमारे पास तो है। ओए मेरे पास 2.1 अपडेट है, 2.1 है वर्जन। आप लोगों का वर्जन कौन सा अभी? वही है अभी तक तो। सिस्टम एरर अकर्ड। 1 मिनट सब्र करो जरा। Come on. I don't know. Allow. Please wait 224 सेकंड। ये क्या बात हुई वे? What is this behavior? हाँ, किसने स्ट्रीम वगैरह स्टार्ट किया BGMI की? हाँ विली कर रहा है, विली गेमिंग सर्च करो। मोटे छोटे ये तो कल करेंगे ना, मोर्टल डायनामो। नहीं विली कर रहा है ना, सभी कर रहे हैं मोर्टल डायनामो आज ही। आज किस टाइम करेंगे? ऑनलाइन अभी कर रहा है, विली गेमिंग सर्च करो। अच्छा ओके। ये लेकिन ये वो वाली हाइप नहीं अभी क्रिएट होगी जो पहले हाइप थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह, वो वाली हाइप क्रिएट नहीं होगी ना जो पहले हाइप थी। वो नहीं होगी, वो उठ चुका है लोगों का। अभी भी 90 डेज के लिए अनबैन किया है। अच्छा 90 डेज के लिए। हाँ अगर 90 डेज में क्राफ्टन वाले कुछ और लफड़ा करते हैं दोबारा बैन दे देंगे। अब नहीं करते, लाइक कितना नहीं करेंगे। लफड़ा क्या करना उन्होंने? मतलब कि अभी बेल पे आया है सिर्फ। अबे यार, तो लफड़ा क्या होगा? अभी बेल मिली है सिर्फ इन लोगों को, केस रफा दफा नहीं हुआ। नहीं यार वो मसला वो नहीं है, मसला ये है कि ये तो फायदा नहीं है यार। वो मेरे BGMI में कल अकाउंट कौन सा था? स्विच टू अ डिफरेंट अकाउंट। इतने में आपका वो एंड्रॉयड वाला देखता हूँ, एंड्रॉयड यूज नहीं करते तो पता नहीं है क्या है कैसा है।
मैं भी नहीं यूज करता। नहीं करा वो। इसकी चल गई है गेम, क्या उसका नाम है, विली गेमिंग के। और भी लोग कर रहे हैं लाइव, तो मैंने लिखा अभी। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे करेंगे अभी। जिनको पता चला ना कि ऑफलाइन करके लॉगिन हो रही है चीजें, तो सिर्फ वही वो मैच में भी घुस गया भाई, विली में गेमी तो मैच में भी घुस गया। PGM is back. यार ये BGMI सर्च किया तो इसमें ये क्या, होटल में फड्डे पकड़े गए कपल, पुलिस इन होटल। छापा पड़ गया ना सिर्फ। मैं सीरियस, मैंने BGMI सर्च किया, BGMI लाइव, नीचे उस्ताद ये आ रहा है। लेकिन ये तो दोनों लड़की हैं यार। BGMI में यही इवेंट आएगा ना, आई थिंक सो। हाँ सेम, केडी वेडी वही हमारा जहाँ से बैन हुआ था, मैं वहीं से दे दिया रिटर्न। ओह अच्छा। सेम वही है, अभी तक आरपी का ऑप्शन नहीं दिया। Let me try. प्लीज अपडेट द न्यू वर्जन। नहीं हो रहा। अबे सर्च कर लो ना, कंट्री रीजन सर्च कर लो फिर। वो फिर आराम से करता हूँ, आराम से करता हूँ वो बैठ के, फिर यही होगा। क्या कह रहे हो? चलो मुझे 2 मिनट दें जरा, मैं आउटरो कर लूँ इसका। ओके उसाम भाई, ओके मैं ये स्ट्रीम बंद करता हूँ। ओके चलो यार बॉयज, थैंक यू सो मच एवरी सिंगल वन ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडे स्ट्रीम, और जितने भी PMPL की जो हमारी स्ट्रीम्स हुई, वॉच पार्टीज, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। BGMI की जैसे अगर मेरी गेम ऑन होती है तो आई विल डू द BGMI। why is he faking? What I'm faking? Wait a second, what I'm faking bro? नहीं होगा, सो जाओ, जो बात है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सलाह। मुझे ये भाई कुछ कह रहे हैं, इनकी तो सुनने दो ना यार। मेरा घस गया, अच्छा चलो कोई नहीं यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इसी तरह दुआओं में याद रखना, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम पे, जो भी हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम हुई। आई होप कि BGMI के हम जो स्ट्रीम करें इट गोना बी गुड गुड, बट इफ नॉट देन जो भी हम नोबडी इज फेकिंग। वो मैं किसी और की चैट खोली थी सामने, वो उसका कमेंट पड़ा तो वो उधर मैं गया, मैं कहा जब मैंने अपनी चैट में देखो कोई भी नहीं था, देन आई रियलाइज दैट वाज समबडी एल्स। एनीवे अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। Until then guys, take care and Allah Hafiz.